प्रदर्शन किया। ओपनिंग सेरेमनी कल हुई और उसके बाद औपचारिक रूप से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इन खेलों का ऐलान कर दिया और उसके बाद से हम देख रहे हैं आज बैडमिंटन में 12 गोल्ड मेडल आने हैं, एथलेटिक्स में आज 40 गोल्ड मेडलों का फैसला होना है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी मौजूद हैं, जो इसमें कंपटीशन मैनेजर तो हैं ही, लेकिन इस पूरे देश में पैरा के खेलों को बदलते हुए इन्होंने देखा है। ये खुद द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, इन्होंने कई सारे मेडलिस्ट पैरा खिलाड़ी देश को दिए हैं। सत्यपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। सबसे पहले एज अ कोच मैं आपको जानना चाहूँगा, ये जो मंजर है ये कैसा आपको नज़र आ रहा है? सर मैं तो कल मतलब मेरी आंखों में आंसू थे। 15 साल पहले जब मैंने इसी स्टेडियम में ट्रेनिंग स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक एथलीट आया जो हैंड से एम्प्यूटी था, जिसका हाथ नहीं था। मैंने उसको ट्रेनिंग कराना स्टार्ट किया तो यहाँ सब लोग मुझे बड़ी अजीब नज़र से देखते थे कि मैं पता नहीं क्या करना चाहता हूँ। फिर मेरे पास यहाँ ब्लाइंड स्कूल से 2-3 बच्चे ब्लाइंड एथलीट ट्रेनिंग करने आए तो सब कोचेस और सारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ यहाँ ऐसे मुझे अजीब नज़रों से देखता था कि मैं क्यों अपना टाइम इनके ऊपर ख़राब कर रहा हूँ। लेकिन आज 15 साल के बाद वही सब कोचेस, वही सब एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ इस खेलो इंडिया को एंजॉय कर रहे हैं और पैरा का खेलो इंडिया देख रहे हैं। जी, इस समय अगर हम बात करें तो हमारे खिलाड़ी अब उम्मीदें बढ़ गई हैं। रियो के बाद से आपने जो ट्रांजिशन देखा है, अब उम्मीदें बढ़ गई हैं। लोग सोच रहे हैं कि अगर हमारे एबल बॉडी के जो नॉर्मल बॉडी के एथलीट जा रहे हैं हमारे पैरा, हम उनसे ज़रूर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो इसके पीछे वजह क्या रही है कि इतना ज़बरदस्त उछाल हमारे खेलों में आया है? सर मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया 150 करोड़ का देश है, जिसमें से 3% दिव्यांग है। 3% मतलब 4 करोड़ 50 लाख। 4 करोड़ 50 लाख में से 60% यूथ हैंडीकैप हैं। 60% का मतलब 3 करोड़। 3 करोड़ में से भी अगर हम 1 करोड़ को भी स्पोर्ट्स ग्राउंड में ले पाए तो हम दुनिया में भारत की पहचान पैरा स्पोर्ट्स में अलग बना सकते हैं। यही मेन कारण है कि हम इस खेलो इंडिया से पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में दिव्यांग के भी खेल होते हैं। एथलेटिक्स की अगर हम बात करें, जो आपका फोटे है, और एथलेटिक्स हमारा पहले से 2004 में देवेंद्र झाझड़िया जी ने जो कमाल किया, और उसके बाद एथलेटिक्स का एक अलग योगदान मेडल टैली में हमेशा होता है। और इस बार भी अगर हम देखें 50% के लगभग जो मेडल्स हैं हमारे एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड से आए। तो ऐसी क्या वजह है कि भारत एथलेटिक्स में, जहाँ हम आज इस ट्रैक पर खड़े हैं और कई हमारे जो मेडल विनिंग एथलीट्स हैं वो इसी ट्रैक पर प्रैक्टिस करते हैं, क्या वजह है कि एथलेटिक्स में हमेशा हम अच्छा रहते हैं? सर एथलेटिक्स में सबसे पहली बात तो एथलेटिक्स करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट बेस्ड स्पोर्ट्स नहीं है। एथलेटिक्स को एक एथलीट जो एक दिव्यांग है वो अपने गांव में भी ट्रेनिंग कर सकता है। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत के दिव्यांग है वो एथलेटिक्स में परफॉर्मेंस करते हैं और एथलेटिक्स में स्पोर्ट्स को ट्रेनिंग करते हैं। इसीलिए हमारे जो इंडिया का प्रदर्शन इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा है। जो हमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बाकी सबसे फीडबैक मिल रहा है वो ये कह रहे हैं कि जब से इन खेलों का कॉन्सेप्चुलाइजेशन हुआ है, आप लगातार सरकार के साथ उन्हें टिप्स दे रहे हैं कि खेलों को कैसा किया जाए। तो ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पीछे मकसद जो है, आपको लग रहा है कि फ़िलहाल 2-3 दिनों में वो पूरा होता नज़र आ रहा है? सर मुझे लगता है कि 90% अभी तक 2 दिन में हमारा मकसद पूरा हो गया। 10% बचा है जो अगले 5 दिन में पूरा होने वाला है। क्योंकि इंडिया में, भारत में पैरा स्पोर्ट्स को, हर दिव्यांग को मेरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का हर दिव्यांग स्पोर्ट्स करेगा और हम स्पोर्ट्स में भारत में नहीं पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। जो स्टेट्स हैं अगर हम देखें, पहले बड़ा अच्छा लगता था कि ये सारे इंडियन की टीम की जा रहे हैं। अगर हम हाई जंप की बात करें तो मरियप्पन हैं, शैलेश हैं, आपके स्टूडेंट प्रवीण हैं, ये सारे जो हैं वो देश का नाम रोशन इकट्ठा करते हैं। लेकिन अब जब ये स्टेट से खेलते हैं तो क्या चुनौती रहती है? सर स्टेट जो पहले तो अपना घर ही होता है ना सर, घर से ही तो स्टार्ट होती है। जब घर से स्टार्ट होगी तभी तो बाहर जाएंगे। तो स्टेट्स की फीलिंग ही अलग से होती है। नेशनल में पार्टिसिपेट करना, नेशनल में अपनी टीम के साथ टीम का हिस्सा बन के और यहाँ प्रदर्शन करना अलग ही एक दुनिया होती है, अलग ही एक फीलिंग होती है। आपके देखते देखते, क्योंकि आपने कहा कि आपने 15 साल यहाँ पर गुजारे हैं, खेलो इंडिया का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ 2018 में, आज लगभग 5 साल हो गए हैं। तो जो आपने एक मूवमेंट देखी है वो, उसको आप ज़रा बयान करेंगे? सर जब इंडिया में खेलो इंडिया स्टार्ट हुआ तो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि क्यों ना पैरा का खेलो इंडिया होना चाहिए। और आज
मैं लगातार सरकार से, साई से, सबको अप्रोच करता रहा। मैं जब भी बैठता था सब लोगों को बोलता था कि स्पोर्ट्स का मेन मोटिव है हेल्दी वर्ल्ड एंड फ्रेंडली वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है दिव्यांगों को हेल्थ की ज़्यादा ज़रूरत है और दिव्यांगों के खेल ज़्यादा होने चाहिए, और सरकार ने वो हमारी रिक्वेस्ट सुनी और आज खेलो इंडिया का आयोजन नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इसके लिए। बिल्कुल, और वो पता चल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल जी हमसे बात करने के लिए और तमाम चीज़ों को एक पर्सपेक्टिव देने के लिए। तो हेल्दी वर्ड एक ज़रूरी है, और वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जो पहली बार हुए हैं, यकीन मानिए जो खिलाड़ियों के बीच उत्साह है वो गज़ब का है। तो फिलहाल यहाँ से इतना ही, अब खेल शुरू होने वाले हैं और हमारे खिलाड़ी इस पूरे तामझाम के जो हैं वो नायक हैं, उन्हीं के लिए ये सब कुछ हुआ है। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स पर, जहाँ पर गौरव शर्मा, रुपिंदर सिंह जी और वीरेंद्र कौशिक आपको तमाम जो खेल होंगे उनका आंखों देखा हाल बताएंगे। फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, जहां दूसरा दिन है आज। एथलेटिक्स के मुकाबले चल रहे हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। आज का पहला इवेंट होगा मेंस 5000 मीटर T11। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कौशिक और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ हैं साथी कमेंटेटर रुपिंदर सिंह। रुपिंदर, स्वागत है आपका। Welcome to the second day's events. After the great initiative of the Sports Ministry, there was a fabulous response from the athletes on the first day yesterday, and we hope it's going to continue. We are starting with a double gold medalist from the Asian Games. He's won the 1500 meters yesterday, Ankur Dhama, featuring as the prominent name in this first event, the men's 5000 meter run T11. जी हाँ, प्रेम सिंह, राज पुरोहित, भीमप्पा पुजारी, अंकुर धामा, रावल राम, गुरवीर सिंह और केशव मूर्ति खेल की बारीकियों पर नजर डालने के लिए हमारे साथ है एक्सपर्ट दीपक। दीपक, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। Thank you, Virender. Good morning, everyone. It's a festive atmosphere here in the capital and a really fresh start of the day at Jawaharlal Nehru Stadium, where we are absolutely excited to witness history in making with men's 500 meter run T11, and Ankur Dhama, all eyes on him. He is the person to watch out for. He won gold in T11 1500 meter yesterday, and at the same time a celebrated player. Rupinder. Yes, Ankur Dhama, double gold medalist from the recent Hangzhou Asian Games. Now looking forward to completing his double at the first Khelo India Para Games at the Nehru Stadium. He won his 1500 meters yesterday quite easily, and both his opponents who came second and third also featuring in this race today. 12 and a half laps off the ground, and this will be a greater test of his endurance as opposed to the 3 3/4 laps 1500 meter metric mile that he ran yesterday. जी हाँ, भीमप्पा पुजारी, कल इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था 1500 मीटर रन T11 में, और केशव मूर्ति वो दूसरे स्थान पर रहे थे, और आज ये 5000 मीटर में मुकाबला। So it is a T11 category. T basically means, and we explained this in quite some detail. So our audience who are connecting us today from yesterday, they would know that it's a track event. 11 is one of the severest visual impairment categories, and the players they run with the guides, and you can see that the guides are ready, the players are ready. It's going to be a gritty run. Rupinder. 12 and a half laps, so it will be slow and steady. That famous saying on the race between the hare and the tortoise winning at the end. But Ankur is the hare and will probably emerge as the winner, as we see the runners with the escorts running today. We don't see Gurveer here, or do we? Rupinder, I think it's an equal test for the guides as well. We don't consider the guides as the main participant, but they are equally important in this kind of a competition, and you can see that they are going to be completing the entire 5000 meter lap. Yes, it's an equal test. They have to train equally hard in order to keep up with the efficiency of an athlete like
Ankur Dhama, in the case of the boy who finished second yesterday, Keshav Murthy and Bhimappa Pujari. And yesterday we saw that in 100 meters, Simran Watts, 50% of the work was done by an escort runner, and that coordination is very, very important. And that's the beauty of this sport. It not only teaches us inclusiveness, it teaches us sharing of your abilities. And we saw in the medal ceremony yesterday, Rupinder, that that the guides, they were accompanying the main participant players, which is a testimony to the fact that they share in the success. Definitely they do. It is hard work not only for the athlete but also for his escort runner, and they train rigorously. So if, for example, Ankur has put in 10 years of hard work, so has his escort runner. जी हाँ, ये 5000 मीटर रन T11 का मुकाबला। लेन है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसका महत्व यहाँ नहीं है। स्लो स्टेडी विंस द रेस की पॉइंट यही है। बिब नंबर अगर हम देखें तो 489 प्रेम सिंह राजस्थान के, बिब नंबर 374 भीमप्पा पुजारी कर्नाटका के, बिब नंबर 263 अंकुर धामा हरियाणा के। जी हाँ, स्वर्णिम सफलता हासिल की थी कल। और बिब नंबर 495 रावल राम राजस्थान के हैं। गुरवीर सिंह 438 पंजाब के, बिब नंबर 438 और बिब नंबर 377 केशव अमूर्थी कर्नाटका के। गुरवीर सिंह के बारे में दीपक थोड़ा बताएंगे आप? सोशल मीडिया पर काफी धमाका इस खिलाड़ी ने मचाया हुआ है। Definitely, Virender. So the story goes that back in 2020 during the lockdown, when the players, they did not have this opportunity to go out in the field because of the COVID restrictions, there was a video that went viral of Gurveer Singh running on the terrace towards his children, standing on two ends, hearing their voice. And his wife Karanjit Kaur, she helped in performing it correctly. And when a player wins, it's not just the victory of the player, right? It's the victory of the entire family. It's the victory of the community, victory of a nation. Rupinder, although I know about this, but maybe would be good to make the players, to make the audience aware that if it's a visual impairment, then what's the need for a blindfold in T11? Well, it's visual impairment, and as you rightly pointed out, it is extreme visual impairment. But in order that there is no visibility, they ensure double or reconfirm by putting the blindfold on the athlete. So T11 is for runners with a near total visual impairment, but some can make out an object at 25 centimeter. So it's a mandate that they should be in completely the blacked out glasses or in blindfold and with a sighted guide runner. So just to ensure that it's an equitable competition for everyone, the players, they are supposed to wear a blindfold and a guided runner is given. जी हाँ, ये 263 अंकुर धामा, नजर बनाए रखिए इस खिलाड़ी पर। जीत की, गोल्ड मेडल की दावेदारी यहां अंकुर धामा की उन्होंने ठोक रखी है। देखना होगा, भीमप्पा पुजारी भी उनके साथ पीछे चल रहे हैं। क्या कोई उलटफेर देखने को मिलेगा रुपिंदर? As the way things stand, I think there is a clear gap between the first and second and the second and third. So more or less we can say who is going to win the gold, who's going to get the silver and the bronze. Ankur, fame favorite on your screens, won the 1500 meter yesterday and looking likely to win the gold barring exceptions. जी हाँ, केशव मूर्ति आपकी स्क्रीन पर, बिब नंबर 377 फिलहाल तीसरे स्थान पर चलते हुए। निश्चित तौर पर पहला, दूसरा और तीसरा, यहीं से आपके मेडल का रंग भी डिसाइड होता है।
ये अंकुर धामा, भेमप्पा पुजारी, पुजारी 374। अंकुर धामा सबसे आगे चलते हुए 5000 मीटर का ये रन है। 374 भीमप्पा। अब एक तरीके से देखा जाए तो पूरे एक लैप का अंतर ले लिया है अंकुर धामा ने। तीसरे नंबर पर है भीमप्पा पुजारी, दूसरे नंबर पर केशव मूर्ति और पहले नंबर पर फेवरेट अंकुर धामा, हरियाणा के अंकुर धामा। Nearly 2 kilometers of the 5 kilometers has been traversed by Ankur Dhama. Started slowly and got into his stride and has run a faster second kilometer as compared to his first kilometer, overtaking Bhimappa Pujari, giving him more than a lap's lead. Bhimappa was third yesterday and is lying third today, and Keshav Murthy is lying second, just as he was in the 1500 yesterday. जी हाँ, केशव मूर्ति लगभग अगर देखें हम ट्रैक की सर्कल को तो बिल्कुल ठीक आधा पीछे हैं। अगर ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से एकदम गाइड, और जो केमिस्ट्री रहती है ये गाइड की और एथलीट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दीपक, कितना महत्वपूर्ण रोल होता है गाइड जो होते हैं, बिल्कुल कदम से कदम मिला के उनको साथ दौड़ना पड़ता है। देखिए ये बात एकदम सही है कि गाइड is like the part of an athlete's body. The guide cannot run ahead of the main runner, and they will always be behind. And especially talking about Ankur Dhama, Arjun awardee in 2018, one of the most prestigious awards for any athlete. जब वो 6 साल के थे, then he became injured due to an infection due to holy colors. Subsequently, he lost his vision. He moved to Delhi. He studied in Delhi and passed out from St. Stephen's College, Rupinder. And in 2014 Asian Para Games, he won 1 silver, 2 bronze medals. And during 2016, during that Paralympics, he got injured. But in the 2022 Asian Para Games, he came back and he won 2 golds. जी हाँ रुपिंदर, कल भी हमने देखा था, जैसे एक कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन ये मिथ जो है यहाँ पर पैरा गेम्स में लगता है टूट गया है। कल हमने देखा था निधि शर्मा, आपने बताया बहुत बढ़िया उनका पढ़ाई का भी रिकॉर्ड रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर शहीद भगत सिंह कॉलेज में, और उसके बाद खेलों में भी बहुत बढ़िया काम उन्होंने करके दिखाया है, और आज ये एक नाम और जुड़ते हुए तो जी हाँ। और अब जो एक्शन है वो है शॉर्ट पट का। हमारा अगला इवेंट पूजा ढंका, कल भी इस खिलाड़ी ने प्रभावित किया था। दुर्गा गहलोत, भाग्यश्री, एम जाधव, मेधा जयंत, दीपिका रानी और गीता रानी। राजस्थान की पूजा ढंका और राजस्थान की ही उनकी साथी खिलाड़ी दुर्गा गहलोत। भाग्यश्री है महाराष्ट्र से, कर्नाटका से मेधा, उत्तर प्रदेश से दीपिका रानी और हरियाणा से गीता रानी। And Maharashtra's Bhagyashri Jadhav, right there in the center, had won the gold yesterday in the javelin event, and we'll be looking and watching her performance and whether she can come up with a second gold today. Bhagyashri M. Jadhav won a gold in javelin in the same category, F34, yesterday. That was a throwing event. And today as well, it's a throwing event, shot put, F32, 33 and F34. It's a field event, which is why it is F, and 32, 33 and 34. These are impairments in the trunk and lower limbs. जी आप पूजा ढंका आपकी स्क्रीन पर।
So this is shot put. It's a metal ball. You can see that it's approximately 3 kgs for men. For women, it is slightly lighter, approximately 2.5. And based on the impairment and the disability, the weight of the metal ball and the discus, that is decided. But here we are talking specifically about shot put, and it is the power of the shoulder and power of the upper limbs, and there is a slight impairment in the grip as well in this category, and which is why the players, you can see that the quality of the grip is not as good as what it could be in an able-bodied athlete. Rather, they would not be using these tools at all. जी हाँ, पूजा ढांका अपना जो पहला अटेम्प्ट था वो उनका फेल करार दिया गया है. इस बार ये सक्सेसफुल. व्हाइट फ्लैग अप मींस आपका जो थ्रो है वो बिल्कुल वैलिड है. और अब थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली होगी पूजा ढांका ने. कॉन्फिडेंस बढ़ता है खिलाड़ी का जब वो एक फेयर थ्रो करते हैं. रुपिंदर, निश्चित तौर पर पहला जो प्रयास होता है आपका फेल हो जाता है तो कॉन्फिडेंस को हल्का सा धक्का जरूर पहुंचता होगा. Exactly, definitely. And she will now start improving, as we have seen yesterday also in the throwing events. Some of them come to their best attempts at the 6th throw. Also, because of the difficulty in getting them onto that position, they are given 6 throws at one go. And after the first thrower finishes that, she will dismantle and the second thrower will get 6 throws. So she's done a 2.88 in her second attempt. Let's see what she does in the third. जी हाँ, ये भी सक्सेसफुल रहा है. अब इसकी डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा. डिसाइड होगा वहां से क्या मेडल की रेस में है या नहीं. ये मेडल मैच है, फाइनल है. शॉट पट F32, F33 और F34 कैटेगरी में. जब कैटेगरी ज्यादा होती है तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है. दीपक, जब आप एक कैटेगरी होती है F32, आपको सिर्फ उसी में compete करना होता है या उसके साथ फिर एक कैटेगरी और अटैच हो जाती है F33 और F34, तो क्या फर्क पड़ता है इससे? Meanwhile, she's improved to 2.42. F33 is for field athletes with a moderately affected movement. And all of these athletes, they have as a common impairment, balance, coordination issues that challenge their throwing consistency. That's something which is, the throwing consistency is the important term here. And the coordination across the whole body, puri body affected rehti hai. The movements affected due to a high degree in the legs and the trunk. So which is why all of these categories under F32, 33, 34, they have almost similar impairment with slight differentiation. But because the throw or the event that they are playing in, the outcome is expected to be the same. The muscle that is going to be used is expected to be the same, which is why all of them can be clubbed together. Essentially, what we are trying to say is that we are giving every person with this reduced strength the same competition from similar people who have similar problems. जी हाँ, पूजा ढांका लगातार इंप्रूव कर रही हैं अपने प्रदर्शन को. यहाँ पर 3.37 मीटर की डिस्टेंस को वो कवर कर चुकी हैं अपनी शॉटपट से. ये देखिए, बहुत बढ़िया बॉडी लैंग्वेज, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करते हुए पूजा ढांका, बहुत बढ़िया. और ये बिल्कुल फेयर थ्रो. जैसे ही वाइड फ्लैग अप होता है, खिलाड़ी की भी नजर रहती है आखिर मैंने किया क्या, उसे पता चल जाता है कितना बेहतरीन ये था. और अभी तक अटेम्प्ट रहे हैं पूजा के,
इंप्रूव लगातार उन्होंने किया है और इसी के साथ ये 6 अटेम्प्ट पूरे हो गए हैं। देखना होगा बेस्ट कितना रहा, फाइनल रिजल्ट का अभी इंतजार। जो बेस्ट होगा वही काउंट किया जाता है और हौसलों की उड़ान निश्चित तौर पर उसी को यहां पर चरितार्थ करते हुए पूजा ढांका। Absolutely. Great effort. See how she improved. This is the benefit of competitions. After the first throw where she could not even get a mark on the board, she improved from 2.2 right up to 3.37 towards the end. So great performance by Pooja Dhanka. And here we are again, back to 5,000-meter run. Ankur Dhama, it is slightly foggy out in the field because obviously Delhi ki sardi hai, you can't ignore that. The field is somehow wet with morning fog. You can see a lot of birds around. It's a beautiful morning. And we see that Ankur Dhama is still in the lead position. We have 3 contenders. Ankur Dhama in his final stretch, 150 meters to go. There he's coming towards his second gold. Men's 5,000 meters run, T11. Visually impaired Ankur Dhama, the great Indian middle and long distance runner who has dominated the Asian Games, winning 2 gold medals at the recent Hangzhou Asian Games in these similar events, which he's winning. And here comes his finish. He wins his second gold at the first Khelo India Para Games. And what a victory. He did not even break a sweat, Rupinder. And it is literally the performance he just repeated from his yesterday's performance and at the Asian. दो लैप की लीड ले चुके थे। ये देखिए भीमप्पा पुजारी, ये है वो प्राउड मोमेंट जहां अंकुर धामा ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। जी हां, बहुत बड़ी ये उपलब्धि पहले पैरा गेम्स राजधानी दिल्ली में और दूसरे ही दिन दूसरा गोल्ड अंकुर के लिए। रुपिंदर, निश्चित तौर पर सराहनीय प्रदर्शन इस खिलाड़ी का। Inspirational. Visually impaired, completes his MA history from St. Stephen's College, appointed as a director at the Sports Authority of India. Great performances in his academic life and now great performances on the sports field. In fact, as a teacher myself, I think sports helps the mind too. And it has been the realization of an eminent chess player from India, Vishwanathan Anand. He shifted base to Germany in order to get himself physically fit in order to tackle his chess opponents. And he ruled the world for so many years and inspired a new generation of world-class chess runners. इसी के साथ केशव मूर्ति ने इस रेस को कंप्लीट किया है 5000 मीटर की। ये देखिए केशव मूर्ति, जबरदस्त प्रदर्शन। जैसा कि पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि दूसरे स्थान पर रहेंगे और वही देखने को भी मिला। और नजर बनाए रखिए इस खिलाड़ी पर, भीमप्पा। ये एक लैप और कंप्लीट करेंगे और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करेंगे। अगर यहां हम देखें स्टेडियम में, स्क्रीन पर आप देखें तो अंकुर धामा हरियाणा के 17 मिनट 53 सेकेंड 53.85 सेकेंड खर्च किए हैं उन्होंने और 19 मिनट 39.58 सेकेंड खर्च किए हैं। केशव मूर्ति, कर्नाटका के इस खिलाड़ी ने दूसरे स्थान को हासिल करने के लिए, सिल्वर मेडल को हासिल करने के लिए। लेकिन सच्चाई रुपिंदर ये है कि इन खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है, बहुत पसीना बहाया है इस मोमेंट तक पहुंचने के लिए। Absolutely. Minimum they run 100 kilometers a week, and over the 10 years, sometimes in the off season going closer to 200 kilometers. And during the speed times, they come down to 60 or 70 kilometers.
well, we can see that Bhimappa is still on the track, and Ankur Dhama finished his run almost about a couple of minutes back, which will tell you the level of consistency that the player has shown, and at the same time a world-class performance. That would be Bhimappa, and there was almost a difference of 2 minutes between Ankur Dhama and Keshwa Murthy from Karnataka. चाचा जी होंगे मेरे, उनको दे दो 82 हाँ, एक सेकंड। हाँ जी। Bhimappa Pujari, the bronze medalist, on his last lap. It's a tough assignment. 12 and a half laps of this track. One half of it in the shadow, one half of it in the glowing sun. 606205. So you have to pass through that dark alleys to come out into the glowing sun. And we are back in the field outside the Jawaharlal Nehru Stadium, where men's discus throw F54. Men's discus throw F54. We had Sukhchan, who won gold in F54 category in shot put yesterday. And Sukhchan is going to be competing again today, along with Deepak Kumar from Bihar, Gajendra Pal from Uttar Pradesh, Ravinder Singh from UP, Katari Yadagiri from Andhra Pradesh, and Padai Thalaivan from Tamil Nadu. And there you see that और इसी के साथ भीमप्पा ने भी इस रेस को कंप्लीट कर लिया है। 5000 डिस्कस थ्रो F54 कैटेगरी शुरू होते हुए Sukhchan of Haryana starting proceedings. He had won the shot put F54 gold yesterday and looks a favorite to win this one. Sukhchan from Haryana, 205 looking to repeat his gold medal effort of yesterday and improve on his earlier marks. and because it is a F54 category, our athletes, they would remember from yesterday the performance. And the players, they are supposed to be tied down to a chair. They're strapped, and they are going to use only the shoulder and the back muscles. They cannot, move anything else. No other body part movement is allowed. Rupinder, what do you think about the physique? How does the the upper body? सुखचैन ने अपने 6 जो अटेम्प्ट है वो कंप्लीट किए हैं और बेस्ट है इनका 25.81 जो 5वें प्रयास में इन्होंने हासिल किया। छठे के लिए गए थे लेकिन बेहतर जो सबसे बढ़िया है वो है 5वां अटेम्प्ट सुखचैन। और अब चैन की सांस इन्होंने ली होगी कि इवेंट कंप्लीट हो गया, बढ़िया प्रदर्शन। क्या कहेंगे रुपिंदर? चैन की सांस तो जब लेंगे जब जीत जाएंगे। अभी कंपटीशन बाकी है
और सुखचैन कल से तो खुश होंगे, कल उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था F54 में, और अब चलते हैं ट्रैक पे। Men's 5000 meter run T13 और once again भावेश भट्ट जो कल उत्तराखंड के इस इवेंट को 1500 में जीते थे, 613 इसमें फर्म फेवरेट होंगे। जी हाँ, भावेश भट्ट उत्तराखंड के, वीरेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के, नंदिशा कर्नाटका के, रामकरण सिंह दिल्ली के, सौरभ हिमाचल प्रदेश के और शरद कर्नाटका के। 5000 मीटर का रन T13 कैटेगरी शुरुआत से बढ़त बनाते हुए। It's a long race, 12.5 laps. Different people have different tactics. Most of them tend to go very slow and conservative in the begin, and after they've settled in, they start to increase the pace. So the first runner, apparently, you can make out visual impairment going all over the track because his impairment is visual, and Saurabh Sharma running here in the lead, whereas the more fancied runners are going off at a conservative pace. It's 12.5 laps to go. They are just completing their first lap. Saurabh Sharma, valiant effort by him to run such a first lap, 72 seconds, which actually means 15 minutes for the 5000. And remember, Ankur Dhama won it in 17:53. So the pace seems to be very fast. Let's see how he goes on. So Saurabh Sharma yesterday won a bronze from Himachal Pradesh, this boy, T12 category, although T12 and T13 overarching categories. And that's Bhavesh Bhatt at the front. And Saurabh Sharma and Bhavesh Bhatt, they competed in the same event, 1500 meter T13 yesterday. Saurabh incidentally clocked 4 minutes 41.39, while Bhavesh, he clocked 4.20.70. So there was a distance of about 20 seconds in the competition yesterday. But yesterday also they were competing against each other, and we see that it's almost the same case today as well. But I must appreciate Saurabh. The boy has the guts to try and go close to Bhavesh, but he's only about 10 meters. We know for a fact that he will probably be 200 meters at the end of it all, but the guts to give it all till he tires is something worth appreciating. And this is how we recognize talent. And let's not forget Sharat MS competing in the same event, and yesterday he won silver. So Bhavesh, Sharat and Saurabh, we see them, that's 613. Bhavesh Bhatt, Sharat is around, Saurabh is around. Sharat silver medalist yesterday in 1500 meter, and today they are clashing in an expanded version, 5000 meters. And Saurabh is really giving it his all. He doesn't want to be third today. He wanted to be first in the first lap, and now in the third lap, he is running very gallantly behind Bhavesh Bhatt. Wonderful inspiration this boy is giving. While the other runner who beat him yesterday is running at a very conservative pace, Sharad is giving it his all. Rupinder, as a coach, what would be your advice? Someone transitioning from 1500 meter to 5000, what tips would you give? Well, 1500 to 5000 is a easy transition in the sense that all you have to do is increase your volume of training so that you have done enough miles in your leg before you get onto a competition. Basically, that's the difference. And then you also build on your speed endurance. In 1500, you need more speed and let's say 60 speed and 40 endurance. In this, you have 75 endurance and 25 speed. And just another call out for the audience here, that T13 is for runners with a visual impairment. So we saw
Ankur Dhama, T11, wearing a blindfold with a possibility of looking at up to 25 centimeters. But here, their vision for T13 category, the vision is constricted to a radius of less than 20 degrees, and they can very easily recognize a tennis ball sized object at a maximum of 5 meters, and which is why you see that there is no blindfold, there is no guide runner. It's a slightly better version in the same category, which is track event visual impairment, and that's why you see no guides there. Exactly, lesser impairment. And look at the freedom with which they are running, both Bhavesh and Saurabh. I'm really impressed with Saurabh. He's giving it to Bhavesh, but it is quite evident that Bhavesh is a superior trained athlete, but the guts that Saurabh is showing is really gladdening my hearts. It's more important to be gutsy once you get into the competition and not be conservative. Almost like a Rohit Sharma approach in a 50 overs match as opposed to the KL Rahuls and the Virat Kohlis. And Ankur Dhama, I mentioned that unfortunately a loss of vision due to an infection at the age of 6, and it is no different for Bhavesh Bhatt as well. At a tender age of 5, while playing with his friends, the children were playing with broomsticks, and accidentally it got stuck and pierced into Bhavesh's eyes, which resulted into visual impairment. From a family perspective, despite financial constraints, his father Kishan Bhatt took him to the doctors, the best of them, but they could only manage to save partial vision in Bhavesh's right eye. So that's his story, a tragic incident, but at the same time, that grit and that courage and that hope to participate, he refused to give up. He not only continued his studies, forayed into sports, make a name for himself. And with his stride, you can make out he's a well-trained athlete. He's running well within himself, as opposed to Saurabh behind him, who's not trained, I guess, from the way he's running, but still giving it his all. And again, in terms of the visual impairment, he seems to be running all over first, second, third lane. But Bhavesh, with his consistency and his practice, is going in a straight line in that first track, which you should be doing. And another thing that we must know, the audience should know, that many of the para-athletes, they have this courage to participate and compete in able-bodied events. And that's how they test themselves. So Bhavesh, he did the same. He participated in able-bodied events, although he came last. But that practice, that courage, that grit to go on, that follow through, that stuck with him. And probably that's what we see here in terms of his performance across various events. That's a direct result of that. Absolutely. It's how much commitment, how much focus, ability to take on everyone, irrespective of your reduced vision, is a very good trait. In fact, one of the high jumpers who won a silver, Praveen, who trains in Delhi, also went to the normal-bodied interstate competition and won a silver medal. As Bhavesh continues to lap all the other runners, Saurabh gallantly behind him, now only 100 meters behind him, while the other two runners have been lapped. जी हाँ रुपिंदर, अक्सर देखा जाता है कि जो बिल्कुल नॉर्मल खिलाड़ी होते हैं वो भी कई बार जब ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो वो टच हो जाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कितनी खूबसूरती से भावेश ने ओवरटेक किया है अपने साथी खिलाड़ी को. निश्चित तौर पर एक अच्छा अनुभव, अच्छी प्रैक्टिस और गुड जजमेंट हम इसे कहेंगे. Absolutely. These are all the learnings in sport, aside of the winning of medals, that the boy or the girl making an effort will gain from. And the way Saurabh is running today, he'll gain oodles of confidence and he'll be a very different person from tomorrow onwards. This is what
competition is all about. Learning more about yourself and being a better self today as opposed to what you were yesterday. जी हाँ, निश्चित तौर पर। और ये देखिए यहाँ पर ये मुकाबला लॉन्ग जंप का। And the stadium is getting up for men's long jump T63. We have again a remarkable lineup today, including Sukhnandan Nishad, won a gold in 100 meter T63. And Rupinder, I will come back to you. जी हाँ, राम सिंह भाई पढ़ियार। और ये है आपकी स्क्रीन पर जगदीश सिंह शाही उत्तराखंड के। बहुत बढ़िया स्टार्ट लिया है, 4.5 मीटर के आसपास की दूरी तय की है। बिब नंबर 615 जगदीश सिंह शाही उत्तर प्रदेश के। हाँ, उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं जगदीश सिंह शाही, बिब नंबर 615 उत्तराखंड। So Rupinder, 1500, माफ कीजिएगा, the long jump T63. Sukhnandan Nishad, he won a gold in 100 meter. He's a sprinter in T63. How do you see the transition from 100 meter sprint to long jump? और अब ये वीरेंद्र सिंह अपने अटेम्प्ट के लिए जाते हुए बहुत बढ़िया प्रयास, 4.5 मीटर के आसपास का डिस्टेंस इन्होंने भी कवर किया है। रुपिंदर, निश्चित तौर पर ये जो कैटेगरी है T63, इसमें जैसे कल हम देख रहे थे 6 मीटर के आसपास भी जा रहे थे, 5 समथिंग, 5 19, 5 59, 99, यहाँ पर क्या मैक्सिमम रहने की संभावना है? From what we're seeing here, I hope they get close to 5 meters, which should be an incredible achievement for a T63 athlete. And as my co-commentator was saying, Nishad, who has done well in the 100 meters, I think 100 meters and long jump are correlated events, because one part of long jump is generating the speed up to the takeoff pit. The second part is the technique that he has to learn. दीपक, आपसे जानना चाहेंगे जो ये कैटेगरी है T63, इसमें क्या चैलेंजेस रहते हैं लॉन्ग जंप के लिए? Virender, iske andar, this is T63. So T is obviously it's a track event. 63, it means that the movement is affected in one leg or the absence of limbs above the knee. So it is above the knee or it's a complete absence of the limb. जी, ये है सुखनंदन निषाद छत्तीसगढ़ के। नजर बनाए रखिए इस खिलाड़ी पर, बहुत बढ़िया स्टार्ट था। And you will see that the players competing in this category, they have to generate balance and propulsion from 4.67 की दूरी इन्होंने तय की। So the players, they have to generate balance and propulsion from only one leg. And that's an important differentiator, because if you see that the players are running, they will generate the propulsion from one leg. So they're jumping from one leg, and that's a big achievement. That takes effort. जी हाँ, राम सिंह पढ़ियार गुजरात के, बहुत बढ़िया ये स्टार्ट था। So 5.04 मीटर की दूरी इन्होंने तय की है। जैसा आपने कहा था कि ये लगभग 5 से पास पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया प्रदर्शन कहेंगे रुपिंदर। Absolutely, and this is just the beginning, so great effort. And as my co-commentator was pointing out, that
reduced mobility in one leg, almost nil, creates the problem. And despite all that, they have jumped close to 5 meters, which I was dreaming of. So we've got a dream performance already from the long jump in T63. और अब जगदीश सिंह शाही उत्तराखंड का यह खिलाड़ी, देखना होगा क्या अपना इंप्रूव कर पाएंगे। पहले का जो रिकॉर्ड था जो बनाया था इन्होंने अभी स्कोर में, डिस्टेंस में, देखिए क्या जबरदस्त अपनी शक्ति को समेटा है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, कोशिश यही। ये पहला अटेम्प्ट में जो डिस्टेंस कवर किया था वो था 4.22 मीटर का, और अब दूसरे में किया है इन्होंने 4.47 का। ये सुधार देखने को मिल रहा है। और अब ये वापस चलते हैं मेंस 5000 मीटर रन T13। ये लास्ट लैप है, और जैसा कि पहले ही अंदाजा हो गया था, भावेश गोल्ड मेडल के लिए फिनिश करेंगे। क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या कॉन्फिडेंस है। और ये बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एथलेटिक्स के मुकाबले दूसरा दिन आज है, और ये मेडल मैच 5000 मीटर T13 कैटेगरी। भावेश और इसी के साथ भावेश ने इस रेस को कंप्लीट किया, पहला स्थान हासिल किया है। बहुत बढ़िया। निश्चित तौर पर अब समय है अपने प्रदर्शन को एनालाइज करने का। जी हां, चाहेंगे कि भविष्य में भी यही प्रदर्शन करते रहें। 16 मिनट 45.41 सेकंड के साथ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस खिलाड़ी ने 5000 मीटर रन T13 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। कोच भी खुश होंगे अपने प्रदर्शन से, खुद भी भावेश निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगे। क्यों ना हो, मौका है। और इसी के साथ सौरभ शर्मा, इन्होंने भी रेस को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, ये वो विनिंग मोमेंट है। बहुत जबरदस्त तरीके से स्टार्टिंग से ही लीड बनाकर रखी थी और लगातार उसको मेंटेन किया। एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि कोई टक्कर मिलने वाली होगी। और सौरभ की बात करें तो 17 मिनट 34.22 सेकंड के साथ उन्होंने इस रेस को कंप्लीट किया है। इवेंट क्या है ये? T13 अरे इवेंट नंबर है 29। So Bhavesh Bhatt, 2 goals overall in this Khelo India Para Games. And that's Saurabh Sharma, silver 17.34.22. And that is, looks like he's Sharat, but that's Ram Karan Singh from Delhi. Trailing behind. जी हाँ, इसी के साथ रामकरण ने इस रेस को कंप्लीट किया है और तीसरा स्थान हासिल किया है। रामकरण सिंह दिल्ली के लोकल बॉय हैं। होम ग्राउंड का फायदा
मिलता है खिलाड़ी को, और निश्चित तौर पर यहाँ पर अपने प्रदर्शन अपने ही लोगों के बीच में, अपने ही स्टेट में, अपने राज्य में खिलाड़ी ये चाहता है कि मेडल मुझे मिले। और यहाँ ये परफॉर्मेंस देखिए, कितने आसानी से अपने ब्रोंज मेडल के लिए जो दावेदारी थी उसको पुख्ता किया, हासिल किया। खर्च किए हैं 19 मिनट 15.30 सेकंड। So already today we've seen two double gold medalists, Ankur Dhama in the T11, 15 and 5, and a double for Bhavesh Bhatt in T13, 15 and 5. यह खूबसूरत नज़ारा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का। ये ड्रोन शॉट, पहले इस समय अब देख रहे हैं इन शॉट्स को, पहले इन शॉट्स के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती थी, लेकिन आधुनिक तकनीक का यह फायदा रुपिंदर कि यह खूबसूरत नज़ारा हम देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर सीधे। हल्की हल्की धूप, हल्का हल्का कोहरा और हल्की हल्की खुनक हवा में अब विमेंस शॉट पट F32, F33 और F34 फाइनल। So we are back outside the Jawaharlal Nehru Stadium, and that's Bhagyashri. She won a gold yesterday in javelin, same category, F34. Can she repeat her performance? From Maharashtra, not happy with her performance, but she's going to give it another go. And we see that the players in any particular event, they try to use the same force, the same body part. So yesterday, she won a gold in javelin, which is a throw event, power of the shoulder and the back. And again, today, Bhagyashri is going to, go for another medal. We just saw Bhavesh Bhatt repeat a gold today. Can Bhagyashri repeat a gold today? And become the first female to be a double gold medalist at the first Khelo Para Games. We've seen two men achieve that on the track today, and Bhagyashri looking to do a double in throwing events in the women's section. And let's not forget Simran Vats. She got a gold yesterday in 100, and today it's going to be 200 meters final. She's a very, very strong contender in the women's sprint, T11 category, 200 meters. जी हाँ, भाग्यश्री निश्चित तौर पर जो तैयारी दिख रही है, जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, और ये जो लगातार थ्रो है वन के बाद वन, बेहतरीन 7 मीटर के लगभग 7 मीटर को कवर करते हुए ये डिस्टेंस कवर कर रही हैं भाग्यश्री। महाराष्ट्र की ये खिलाड़ी हैं, दमदार परफॉर्मेंस यहाँ पर। उससे पहले जो पूजा ढांका थी, उनका जो बेस्ट था वो था 3.37, और यहाँ देखिए भाग्यश्री ने 7.60। बहुत ही बढ़िया ये स्कोर इनका। और खास बात देखें रुपिंदर, एक भी प्रयास इनका ऐसा नहीं है जिस पर कांटा लगा हो। सभी प्रयास, सभी थ्रो इनके क्लियर रहे हैं। और फाइनल जो सबसे टॉप स्कोर, भाग्यश्री एम जाधव 7.60 मीटर, दीपिका रानी उत्तर प्रदेश की 4.87। ये देखा जाता है कि जो ट्रैक एंड फील्ड के मुकाबले होते हैं वो मेन स्टेडियम के अंदर ही होते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की परंपरा के जो बाहर अब विमेंस जेवलिन थ्रो F56 कैटेगरी में फातिमा खातून है, कुसुम है, पूनम शर्मा, मीनाक्षी एच जाधव, अरुण मौली ए, सौमिता साहा डे वेस्ट बंगाल की, तमिलनाडु की अरुण मोला, महाराष्ट्र की मीनाक्षी, हरियाणा की पूनम शर्मा और हरियाणा की है कुसुम, उत्तर प्रदेश के फातिमा खातून। विमेंस जेवलिन थ्रो F56। Six competitors in the javelin throw now for the women's F46 category.
F56. Women's javelin throw, F56. And that's Kusum from Haryana, F56 category, women's javelin throw. Looks really powerful, and that's a wonderful throw. F56, available movement is affected to an increased degree from the top of the legs down. And the players, they are typically strapped down to a chair to ensure that they don't hurt themselves, they don't fall off the chair. They have the support of a pole. The grip is also somehow affected. But they can, generate that power through a full range of arm movement, and they are, close to optimum sitting height when the shot is to be released. So, Rupinder, what's your assessment? We saw that in the other event, Bhagyashree Jadhav, gold medalist, again a shot put, a throwing event, although slightly different category. But this is F56, both the events where the player is tied down to a chair. And Fatima is 15.35. That's a huge difference. Kusum is 9.99 so far. Probably looks like her best attempt, and Fatima is way ahead on the top of the chart with 15.35. What a lovely shot from the drone from above of the field events throwing outside at the Nehru Stadium. The in-between track is where normally the people throw javelin, but in this case restricted mobilities on the chairs for throwing for the F56 category in the woman. Two competitors having completed. Khatun in the lead with 15 meters and above, and 4 more to follow. Yes, and that was a beautiful drone shot right from the top. And we could see, how the players are assembling, how the vehicles are getting assembled all around the stadium. The Khelo India Para Games come on the back of some stupendous international success by the Indian para-athletes. And onto the track, 200 meters run, T35 men's. Narayan Tilak of Delhi in lane 1. Ramkaran Gur of Rajasthan lane 2. Siddharth Gujarat lane 3. Jatan Singh Delhi lane 5. Lane 6 Abhishek Maharashtra. Ravi Kumar of Uttar Pradesh in lane 8. And Sahil of Haryana in lane 7. Men's 200 meter run T35. और इसी के साथ ये रेस शुरू होते हुए शुरुआती बढ़त बहुत महत्वपूर्ण होती है. ये देखिए ड्रोन से ये शॉट आपके लिए लिया जा रहा है. बहुत बढ़िया लैंड नंबर 7 में साहिल हरियाणा के, और इसी के साथ देख रहे हैं हम लैंड नंबर 6 में अभिषेक भी महाराष्ट्र के. और देखना होगा फाइनल रिजल्ट क्या आता है. ऐसा लग रहा है लैंड नंबर 6 में अभिषेक भी, जी हाँ. So Narayan Thakur from Delhi, he won a bronze in 100 meter in T35, T36 category yesterday. And today, the competition has doubled to 200 meters. He's already a winner, but looks like he's trailing somewhere behind. जी हाँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से फिनिश किया है लेन नंबर 6 में. 29.92 सेकंड के साथ अभिषेक ने, और जतिन सिंह दिल्ली के 30.53 सेकंड के साथ रहे हैं दूसरे स्थान पर. रवि कुमार उत्तर प्रदेश के 30.95 सेकंड के साथ इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है. और रामकरण गुजरात के राजस्थान के 56.89 सेकंड के साथ रहे हैं चौथे स्थान पर.
So another upset. Narayan Thakur, who has been winning medals at the Asian Games level, came back with a bronze this year from the Asian Games in Hangzhou, beaten in this 200-meter competition. So new discoveries of talent is happening as was anticipated. जयराम करन ने छठा स्थान हासिल किया है, चौथे पर है नारायण ठाक। थोड़ा सा जजेस को भी टाइम लगता है स्कोर अपडेट करने में। तो पहले स्थान पर क्लियर अभिषेक महाराष्ट्र के, दूसरे स्थान पर जतिन सिंह दिल्ली के और तीसरे स्थान पर रवि कुमार उत्तर प्रदेश के। मेंस 200 मीटर का ये रन था T35 कैटेगरी में। 29.92 सेकंड के साथ अभिषेक बी महाराष्ट्र के गोल्ड मेडल हासिल किया है उन्होंने, और जतिन सिंह दिल्ली के दूसरे स्थान पर रहे, सिल्वर हासिल किया है 30.53 सेकंड के साथ, और रवि कुमार उत्तर प्रदेश के इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है 30.95 सेकंड के साथ। फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 एथलेटिक्स के ये मुकाबले दूसरा दिन, और वेन्यू दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ये देखते हैं रिप्ले में खूबसूरती से तेजी से आगे निकले थे, जो शुरुआती बढ़त बनाई थी और उसी का लाभ भी मिला। तेजी से आगे बढ़ते हुए देखिए, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा था कि पहले लेन नंबर 7 अप है, लेकिन उसके बाद अभिषेक ने बढ़त ऐसे बनाई कि जिसको बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश किया। दूसरे स्थान पर जतिन सिंह और तीसरे पर रवि कुमार उत्तर प्रदेश के। यही 411 बिब नंबर अभिषेक महाराष्ट्र के। निश्चित तौर पर यहां पर गोल्ड मेडल जीतना इन खिलाड़ियों के करियर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा रुपिंदर। Absolutely, and the timing 29.92 for a T35 category classifies him probably in the top 6 at the Asian level. So a wonderful effort by this young lad Abhishek from Maharashtra to upset the more experienced Narayan Tilak of Delhi, and Jatan Singh, the youngster from Delhi, coming in second. And now we go to the women's 200 run, T11 and T20, and this features Simran Vats representing UP, although she trains in Delhi. She won the 100 yesterday. She's won 2 silvers in the recent Hangzhou Asian Games and is looking to be the first woman to get a double gold at the first Khelo Para Games. विमेंस 200 मीटर रन T11 एंड T12 कंबाइन किया गया है कैटेगरी को। दीपक, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। जो स्टार्ट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एक पोस्चर होता है। So women's 200 run, T11 and T12, it's a very, very interesting competition, and let me tell you why. We have Simran Vats, 100 meter gold medalist from her attempt yesterday. Again, T11 100 meter category. And today, we have her competing in the 200 meters in the same category. And interestingly, Tejal Damor won a silver yesterday in the same race, 100 meter. So Simran and Tejal, both of them are going to be competing for their repeated attempt, and probably Tejal's attempt would be to dethrone Simran Vats. But that is easier said than done, Rupinder, because we know that Simran Vats runs like a proper sprinter, runs like a deer. Absolutely, and Simran has proved herself at international competition, looking to be the first woman track athlete to probably give us a medal at the Paralympics in Paris. And she's not really worried about the kind of idiosyncrasies you develop. She won in a blue gear yesterday. She's changed to a yellow gear. So no problems with having to stick to the same gear to win your second event. And yesterday we saw her husband and coach, Gajendra, handing over medal to her. And I congratulated Gajendra yesterday. And he was elated and looking forward to a repeat of her victory today.
a celebrated player, of course, but let's not, ignore Tejal. Um, she will be hungry for the gold medal today. She won a silver. I'm sure she would not be satisfied with another silver today. जी हाँ, स्क्रीन पर देखिए कि जो गाइड है वो साथ में सेम मुद्रा अपनाते हुए जैसी एथलीट ने अपनाई हुई है, वही स्टार्ट का स्टाइल, बहुत बढ़िया स्टांस लेते हुए। और ये And you have Simran. You can see and hear the audience. Simran, just sprinted forward and she is way, way ahead. And the clock is running. No one can stop Simran. She is miles ahead. And you can see the audience in the stands getting elated. And there you go. Repeat of another stupendous performance by the guide and by Simran. जी हाँ, लेन नंबर 3 में सिमरन वत्स उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी, इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। समय 26.25 सेकंड के साथ। देखिए कितने खूबसूरती के साथ गाइड ने कदमों से कदम मिलाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल जबरदस्त। क्या मोमेंटम है ये, शानदार फिनिश सिमरन के लिए। और उसी के साथ कालिका ललित आंध्र प्रदेश की 30.95 सेकंड के साथ दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। और ज्योति हौसरा कर्नाटका की 33.17 सेकंड के साथ तीसरा स्थान। ये सिमरन वत्स आपकी स्क्रीन पर। प्राउड मोमेंट इस खिलाड़ी के लिए। उत्तर प्रदेश की ये खिलाड़ी हैं और यहां पहला स्थान इन्होंने हासिल किया है। लेन नंबर 3 से मेडल हासिल किया है, गोल्ड। What a great look at that expression, the finishing expression. And oh boy, what a girl. So the third double gold medalist of the day, Ankur, Bhavesh, and now Simran Watts. And Rupinder, I must tell you, the level of support that her husband and coach extended to her. He was also an athlete. And Gajendra actually left his training to support his wife. And that's a big feat. And that's the level of commitment, you need from the family to help you. And that support also came from the services. I remember in Bangalore when we went to his officer, and the officer was gracious enough to grant him leave to prepare Simran for the Asian Games in Hangzhou, where she won 2 silver medals. Onto the field. जी हाँ, जैवलिन के लिए तैयारी। So that's Meenakshi Jadhav from Maharashtra, bib number 406. Very powerful player. Very strong in stature. And very calm and composed. You can see her taking a deep breath. She's preparing for her next throw. Looks very, very, calm and serene at such a level of competition. And she's, she's just, waiting to make a mark. जो पोस्चर होता है बॉडी का, बहुत महत्वपूर्ण। ये देखिए पहला ही प्रयास था और इसी के साथ डिस्टेंस काउंट किया जाएगा। इन जनरल जो पॉइंट होता है स्पीयर का वो टच होना चाहिए। शायद जो तैयारी थी उस पे अपने इस अटेम्प्ट पर इतनी खुश नहीं नजर आ रही हैं। मीनाक्षी एच जाधव महाराष्ट्र की ये खिलाड़ी हैं। देखिए तीसरा प्रयास फेल हुआ था लेकिन चौथे प्रयास में सफल। और अब जाएंगी 5वें के लिए। 6 अटेम्प्ट टोटल होते हैं और नॉर्मल जो खेल होते हैं उसमें एक के बाद एक जो साथी खिलाड़ी होते हैं उनको ये मौका दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है। ये चेयर का तो
6 जो अटेम्प्ट हैं आपको वो कंटिन्यूअस करने होते हैं। और अब ये 6 कंप्लीट। टॉप किया है इन्होंने, स्कोर 12.35 मीटर का। छठा जो अटेम्प्ट रहा उनमें जो डिस्टेंस कवर किया 12.13, लेकिन जो टॉप है इनका 5वें अटेम्प्ट का 12.35 मीटर की दूरी तय की है। विमेंस जैवलिन थ्रो F56 कैटेगरी में मुकाबला खेला जा रहा है। और अब विमेंस जैवलिन थ्रो F56, ये देखिए स्कोर, फातिमा खातून 15.35 मीटर, मीनाक्षी जाधव 12.35, कुसुम 9.99। अभी पिक्चर बाकी है, बाकी खिलाड़ी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। जो मेहनत की है उन्होंने अभी तक, जो तैयारी की है, उसका परिणाम क्या होगा वो तो प्रदर्शन के बाद ही पता चलेगा। ये मेंस डिस्कस थ्रो F54/1, सुखचैन 25.81 मीटर, दीपक कुमार 23.16 मीटर, रविंद्र सिंह 20.07 मीटर, पदिथा लिवियन 19.91 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। रिजल्ट मेंस डिस्कस थ्रो F54, above 1, F54/1। सर ये 54/1 ही लिखा है इसने। अच्छा, मुझे लगा इसमें कुछ सुखचैनी लीड कर रहा है। 54 कैटेगरी में पहला इवेंट, पहला अटेम्प्ट। और ये हाथों पर पाउडर लगाया जाता है। गजेंद्र पाल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, बिब 588। नहीं डिस्कस डिस्कस सुखचैन का हो गया ना, ये गजेंद्र पाल है। इवेंट नंबर गुरु ये है जी गुरु जी 57। Gajendra Pal, F54 discus. We've already seen Sukhchhain, who won a gold in the shot put yesterday, completed his 6 throws and is currently in the lead. 3 more performers left: Gajendra Pal, Ravindra Singh and Katagiri Yadagiri. थम्स अप फेयर थ्रो। F55 है नहीं?
And that's Gajendra Pal going for his 6 attempts. And a very synchronized throw. You can see the quality of the throw by the way the disc moves. The lower is the disturbance in the discus, the higher is the chance of it not being obstructed by the air around, and thus covering slightly more distance. And that's all about technique. So as a player, you need to be very, very assured of the way you throw the disc. And you can see Gajendra Pal practicing the throw again. F54 category at an international level, we have some celebrated players like Vinod Malik, who participated in the Paralympics. We also have Devarshi Sachan, who also participates in discus throw, javelin. Yesterday he won a silver. And another beautiful attempt. We'll soon have the scores getting stacked. The weight of the discus is probably around 2.5-3 kgs. That's almost as heavy as any normal brick. So that's Gajendra Pal, 24.49 in his third attempt. That was his best attempt. Trying to cross that 25 milestone, 25 meters. And that's the mental barrier that some of the players they are trying to break by crossing the 25 meters of milestone. And that's one after the another 6 attempts. जी हाँ, डिस्कस का जो वेट होता है वो 1 किलो का रहता है इसमें, और जो अभी तक का बेस्ट है इनका 24.49 मीटर। ये पाउडर यूज किया जाता है ताकि आपकी ग्रिप जो है वो बेहतर बने। बहुत बढ़िया ये मोमेंटम, हाथों को लहराते हुए फेंक गया है डिस्कस को। देखना होगा क्या जो बेहतर स्कोर है उससे भी बेहतर कर पाते हैं गजेंद्र। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का ये खिलाड़ी चाहेगा यहां से खाली हाथ तो कोई नहीं लौटना चाहेगा। पहले पैरा गेम्स हैं, राजधानी में आयोजित किए गए हैं और तलाश मेडल्स की। बहुत बढ़िया ये थ्रो, और अब डिस्टेंस को चेक किया जाएगा। 588 बिब नंबर गजेंद्र, उत्तर प्रदेश का ये खिलाड़ी, और अपने 6 अटेम्प्ट कंप्लीट किए इसी के साथ गजेंद्र ने। और बेस्ट है इनका 25.32 मीटर। So he's come very close to Sukhchen. If he's not beaten him, we'll just check the results and confirm. Gajendra Pal really making it tough for Sukhchen. After Sukhchen won the gold easily in the shot put, it's a contest now. And Gajendra actually, he crossed that 25-meter mental mark
That should be a big achievement for him. But let's see if that's big enough to get him that podium finish, that podium spot. Rupinder, we have, when it comes to these throwing events, whether that's shot put or discus throw, we have some in the able-bodied. We have players like Tejinder Pal Singh Toor, who have been very very celebrated. जी हाँ, स्कोर की बात करें तो विमेंस जैवलिन थ्रो F56 कैटेगरी में फातिमा खातून 15.35 मीटर, पूनम शर्मा 14.61 मीटर, मीनाक्षी एच जाधव 12.35 मीटर, कुसुम 9.99 मीटर। अभी भी एक्शन कंटिन्यूज है। टू 47 पूनम शर्मा हरियाणा की। बहुत बढ़िया ये थ्रो, क्लियर थ्रो, और अब डिस्टेंस को चेक किया जाएगा। पूनम शर्मा पहले प्रयास में 14.61 मीटर, दूसरे में 13.83 मीटर, तीसरे में 14.06 और चौथे में 14.08। बेस्ट अभी आना बाकी। आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे खाना मिलेगा, इसलिए मैं पैक करवा ले लो सर एक मट्ठी दो। और इसी के साथ पूनम शर्मा का जो 6 अटेम्प्ट का सफर है वो भी पूरा होते हुए बेस्ट अभी तक का है 14.61 मीटर। छठे अटेम्प्ट का जो स्कोर है वो बेस्ट रहा है 14.73 मीटर। प्रोग्रेस कर रहे हैं खिलाड़ी। इन जनरल देखा जाता है कि दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में जो स्कोर होता है वो बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर रुपिंदर कल भी हमने देखा था कि खिलाड़ी कोशिश करते रहते हैं कि बेस्ट को बेस्ट किया जाए, बेटर से बेस्ट पे आया जाए, और छठे अटेम्प्ट में भी बेहतरीन कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन। जबरदस्त, पर मैं कहूँगा कि पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट से ही उनको अच्छा रीच करना चाहिए, वार्म अप करके आना चाहिए। वो जो 3 थ्रो शुरू के कर रहे हैं वो वार्म अप में कर लें तो वो स्टार्ट से एक हाई लेवल पे आएंगे और भी हाई लेवल पे फिनिश कर सकते हैं, जो मेरा अनुमान है। जी हाँ, धरती गोल है और गोल ही है ये स्टेडियम भी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। शानदार नजारा है, ड्रोन शॉट, लेकिन मंजिल गोल नहीं होती है। मंजिल का जो रास्ता होता है वो सीधा होता है, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े उसमें मोड़ आते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य जो होता है वो, आपकी दृष्टि जो होती है, दृष्टिकोण वो सीधा होना चाहिए, तभी सफलता आपके हक में खड़ी होती है, आपको मिलती है। और यहाँ ये जो जैवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो मुकाबले हैं वो बाहर खेले जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बाहर इसकी व्यवस्था है। अंदर ट्रैक एंड फील्ड में हम देख रहे हैं हाई जंप, लॉन्ग जंप और ट्रैक रनिंग के मुकाबले। और अब ये मेंस 400 मीटर रन T11 के लिए भी तैयारी होते हुए। लेन नंबर 1 में सुमित कुमार दिल्ली के, लेन नंबर 3 में विष्णु राजस्थान के, लेन नंबर 5 में रवि कुमार कर्नाटक के, और
गुरवीर सिंह पंजाब के लेन नंबर 7। So this is men's 400 meter T11 heat 1. We will have heat 2. From yesterday, again, we are going to see Gurveer Singh, Madan. These players participated yesterday. In heat 1, it's Sumit, Vishnu, Ravi, and Gurveer. 4 different states being represented. And Rupinder, we see that the Khelo India Youth Games traditionally, overall, so far, Maharashtra, when it comes to overall medal tally, Maharashtra is leading. And second is Haryana with 2 overall wins at Khelo India Youth Games. For Para Games, where do you see? Where is the fulcrum going to tilt? Well, I think Haryana has been one of the most progressive states as far as promoting para sports go, and I would assume that Haryana will be in the forefront, led of course by their able President Deepa Malik, who hails from Haryana, and a lot of support from the government towards giving them jobs as well as giving them monetary awards for their performances at the Khelo India Para Games, at the National Games, at the Asian Games, and at the Paralympics. In fact, Simran also, now Uttar Pradesh has come up with this lovely scheme. They have a para badminton player who won a gold, and he's the Secretary of Sports now, Yatish Suhas. He was the DM in Noida, and the Chief Minister, Honorable Chief Minister Yogi liked him so much, he's taken him to Lucknow, and he's the Secretary of Sports in UP now, and they grant massive awards. In fact, Simran won 3 crores for her 2 silver medals at the Asian Games recently. And that's right. And that's the kind of recognition, I guess, the para athletes, they deserve. This is men's 400 meter run T12, and we have there was Bhola Ram, bib number 473 in yellow jersey. Yeah. Sunkari Dinesh, bib number 123, Mohammad Arif 175, Munna Kumar Rajak 177, Khodaji Danaji Thakur, bib number 215, Arjun Batra 427, Bholaram 473, Ajay 524 और साहिब हुसैन 623। सुंकारी दिनेश आंध्र प्रदेश के, दिल्ली के मोहम्मद आरिफ और मुन्ना कुमार गुजरात के हैं, खोदाजी दानाजी ठाकुर और ओडिशा के अर्जुन भात्रा, भोलाराम राजस्थान के, अजय तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से हैं साहिब हुसैन। मेंस 400 मीटर रन T12। It's 400 meters run T12, and it's the heats preliminaries, and as expected they are leaving one lane because they are the visually impaired athletes, so they are running in lanes 1, 3, 5 and 7. So we have in total 8 players competing, but it's going to be heat number 1 because it is T12
for the benefit of the audience and the viewers. T12, that's a visual impairment category, slightly better than T11, but still, and which is why we will have about 4 players in the first heat out of total of 8 competitors in this event. दूसरा है ही नहीं दीपक भाई। T11 अरे वहाँ देखिए ना बोर्ड पे। वही तो गलती कर रहे हैं ना, देखिए जब ये T11 का नहीं है, T12 की। वही तो मैंने बोला है गुरु, वही तो है ना। तो नीरज ने तो रिस्पॉन्ड कर दिया, T12 कर दिया। वही हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं, T12 कर दिया। ये गांडू नहीं सुन रहे, आप बात नहीं समझ रहे हो। आपसे पूछा हमने इसको ठीक पढ़ दिया, डैडी ने ठीक कर दिया इसको। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड स्क्रीन इज इंपॉर्टेंट। लेन नंबर 8 में 177 मुन्ना कुमार रजाक। लेन नंबर 400 मीटर रन T12 की तैयारी यहां पर। और ये देखिए, जो अंदर की साइड होता है डिस्टेंस, जो बाहर की साइड होता है वो बढ़ जाता है। फिनिशिंग लाइन पर भी हम देखते हैं, तो इस तरीके से बॉक्सेस जो हैं जी। लेन नंबर 1 में अर्जुन बत्रा वेस्ट बंगाल, साहिब हुसैन 2 राजस्थान, भोलाराम। जी हाँ, लेन नंबर 8 में 177 नजर आ रहे हैं हमें, मुन्ना कुमार रजाक। 4 ही खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इस रेस में, और थोड़ा क्लोज से देखना होगा। गन फायर के साथ ही रेस शुरू हो जाती है। ये फाउल करार दिया गया है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहां फॉलो किया जाता है। अगर स्टार्ट आपका ठीक नहीं है, किसी खिलाड़ी ने पहले शुरुआत कर दी है, तो उसके बाद आप वापस लौटते हैं। अब और टेक्निकल ऑफिशियल्स पहुंचते हुए कि कहां हुआ, पेनल्टी भी दी जाती है, खिलाड़ी को चेतावनी भी दी जाती है। और इन जनरल देखते हैं हम रुपिंदर, अगर आप फाउल करते हैं तो आपको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता है। यहाँ देखना होगा क्या लिबरल एटीट्यूड अपनाया जाता है, अप्रोच, क्योंकि पैरा गेम्स हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ देखने को मिला है कल भी, और क्या आज भी। अभी भी और ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है वार्म अप के लिए गए हैं खिलाड़ी। जी हाँ, ग्रीन कार्ड क्लियर किया गया है, दिखाया गया है। रुपिंदर, ग्रीन कार्ड की क्या ये महत्व रहता है रेस में? वार्निंग, अगले फाउल स्टार्ट पे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। एज आपने एक्सप्लेन किया, लिबरल एटीट्यूड नॉर्मली इन द एबल बॉडीड ओलंपिक्स, one foul start and you're out, whether you're Usain Bolt or Linford Christie, doesn't matter. जहाँ लेन नंबर 5 में भोलाराम है। भोलाराम राजस्थान के खिलाड़ी हैं। और एक बार फिर रेस शुरू होने की पूरी तैयारी।
इसी के साथ रेस शुरू हो गई है। ये बहुत बढ़िया लेन नंबर 7 से शुरुआत, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये दूरी भी सिमटती चली जाएगी। भोलाराम आगे निकलते हुए, राजस्थान का ये खिलाड़ी जी नजर बनाए रखिए। बहुत बढ़िया लेन नंबर 6 से लेन नंबर 3 में कड़ी टक्कर देने की कोशिश। दोनों ही खिलाड़ियों की कोशिश है, और ये अपने आखिरी समय में क्या कुछ चमत्कार कर पाएंगे। लेन नंबर 1 और 6, और इसी के साथ ये मुकाबला लगभग बराबरी के आसपास थोड़ा सा, लेकिन 4-7-3 भोलाराम इस रेस को जीतने में कामयाब रहे हैं। तो भोलाराम का भोलापन रेस पे बहुत सुपर्ब। ये देखिए लेन नंबर 1 के साथ उनका मुकाबला कड़ा हो गया था, पर भोलाराम ने हार नहीं मानी, और यही क्षण होते हैं जो डिसाइड करते हैं इस क्लोज रेस को, और वो जीत गए 56.01 सेकंड में। गुड टाइमिंग। जी ये भोलाराम विनर, ये इस रेस के विनर हैं। So heat 1, T12, Bholaram in yellow, running in lane 5, in competition with the competitor in lane 1, edging him out, clocking 56.01 and looking like a bright prospect to win a gold in the final. We've got another heat coming up now following this one. जी हाँ, अर्जुन बत्रा कड़ी टक्कर दे रहे थे इसमें। ये प्रीलिम 400 मीटर रन T12 की रेस थी, और भोलाराम पहले स्थान पर रहे और दूसरे स्थान पर रहे अर्जुन भात्रा ओडिशा के। अब ये फाइनल के लिए जाएंगे। जब प्लेयर्स ज्यादा होते हैं तो हीट के जरिए फाइनल रेस का डिसीजन लिया जाता है, जो जो टॉपर होते हैं उस तरीके से। And that's T12 Heat 1 highlight. That's bib number 473, Bholaram from Rajasthan. What a miraculous finish. And you can see T12, its visual impairment, you can very clearly see there was a close-up in the video highlight that you just saw. Although it is not as severe as T11, where we previously saw Simran Watts taking an edge, clinching a second gold. But from a normal perspective, it is still a disability, and Bholaram leading in the Heat 1. And now let's see who is going to compete from Heat 2. And then we will have the final round for 400 meter T12. And this is the race, that sprint mode, Virendra, which
gets people excited. We are sitting in the commentary box. We can see that their supporters, the viewers, they're cheering them up. So 100 meter, 200 meter, 400, these are the typical adrenaline rush races. जी हाँ, मेंस 400 रन T12 हीट नंबर 2, अजय तमिलनाडु से, मोहम्मद आरिफ दिल्ली से, खोदाजी ददाद गुजरात से और सुंकारी आंध्र प्रदेश से। सुंकारी दिनेश आंध्र प्रदेश के हैं, मोहम्मद आरिफ दिल्ली के। लेन नंबर 1 में है अजय तमिलनाडु के, और सुंकारी डनाइज आंध्र प्रदेश के लेन नंबर 7 में। And in parallel, we have the field getting set up for men's long jump T64. These are, what is typically called the event of the Blade Runners. In a few minutes, we are going to, switch on to the men's long jump T64 event. We see that the players, they are practicing, they are participating right now, and we are waiting for the heat 2 lineup for men's 400 meter T12. That's Mohammad Arif, a local runner from Delhi, trains at the Nehru Stadium. And we've got 2 withdrawals, so we have only 2 people running in the second heat. Arif in lane number 3, and it's lane number 7, Surkari Dinas of Andhra Pradesh. And the crowd is roaring towards the players. The players are getting excited. You see that, and it's so heartening to see. It is so heartening to see. There is not even an iota of anxiety or anxiousness on the face of players like Mohammad Arif. He is absolutely excited and ready to start. Arif is a seasoned athlete. He represented India at the Hangzhou Asian Games, although he did not figure amongst the medals. Came up with a disappointing performance there, and he's looking to come back here today in this opportunity provided by the first Khelo India Para Games. And he is anxiously waiting for the air pistol to blow off so that he can start. The onlookers are standing by. Their friends and supporters are also watching very anxiously. I wish you could see in the camera the anxiety on the face of the volunteers who are there present in the Jawaharlal Nehru Stadium, eagerly waiting. And that's bib number 123, Sunkari Dinesh, right at the front. And a few meters back, you have Mohammad Arif. This looks really exciting. Arif versus Surkari. Delhi versus Andhra Pradesh. And Sunkari pacing ahead. Arif catching up. The distance is coming slower. I think that Arif is going to go for it. Yes, he is inching in closer. Coming in. He has moved ahead of Sunkari Dinesh very easily. The crowd is getting excited. Remember, the first heat was won in 56.09, and the way Arif went past 200 in 25 seconds, he looks to be beating that mark. It's just 50 meters left. He's clocking 49.50, and it looks like Arif has come back with a vengeance after his disappointment at the Hangzhou Asian Games. It's 56.40. So a great race set up for the final with Bholaram, who won in 56.01. So that's going to be Bholaram, Mohammad Arif, almost head to head. This is getting excited. जी हाँ, मोहम्मद आरिफ 56.43 का स्कोर, और सुंकारी
दिनेश आंध्र प्रदेश के 58.27 सेकंड के साथ इस 400 मीटर के रन को पूरा किया है। ये हम मोहम्मद आरिफ लोकल बॉय दिल्ली के, और इशारा किया है कि जी हाँ, जो एम था मेरा उसको मैंने भेज दिया है, जो मैं करने आया था मैंने कर लिया है अभी तक, लेकिन अभी फाइनल में असली परीक्षा रुपिंदर बाकी। Definitely. But what he's trying to point out is I ran 60 seconds at the Asian Games. It was a big disappointment, but that's in the past now. पास्ट इज पास्ट। खेलों में हमेशा नया दिन होता है और एक नई शुरुआत भी, और यही ये शुरुआत बहुत बढ़िया रही। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि सुंकारी दिनेश आंध्र प्रदेश के टक्कर देंगे, लेकिन जो स्टार्ट लिया और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं जब तक फिनिश नहीं हो गई रेस। और रिजल्ट सबके सामने, मोहम्मद आरिफ दिल्ली का ये खिलाड़ी 56.43 सेकंड के साथ इस हीट में पहले स्थान पर रहा। And Mohammad Arif, he has taken his shoes off, trying to cool off, going for a, and he's looking at, he's standing right in front of the scoreboard. Okay, switching to outside the stadium, we have men's discus throw. That's F55 category. We have a strong lineup of Manihas, Muthuraja, Sudhir from Delhi, Vedpal, Pappu Yadav, Neeraj Yadav, and that's Manihas from Haryana. Okay, switching on again. It's a long jump T64. That's Doga Dimardu Naidu. That's men's long jump T64 event. डोगा डिमोडू नायडू आंध्र प्रदेश का ये खिलाड़ी, और ये देखना होगा 4.42 मीटर। बहुत बढ़िया शुरुआत रुपिंदर। Second attempt. So we'll be looking once again, like I thought in the previous one, they'll be looking to come close to 5 meters by the time they come to their sixth jump. Let's see them progress. जी हाँ, मीत पटेल आए हैं गुजरात के हाई जंप के लिए। And this is T64 event. Let me explain. और ये ह्यूज समर्थन मिल रहा है यहाँ, जो प्रयास है खिलाड़ियों का, जो मेहनत है। दर्शक दीर्घा में एक शोर सा उठा जैसे ही जंप कंप्लीट की मीत पटेल ने। एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है। 6 मीटर के आसपास का स्कोर रुपिंदर रहना चाहिए। My dream of 5 meters looks to be achieved by this boy from Gujarat. We're just waiting, and it's 5.70. So my dream is going to be surpassed. We'll be looking for 6 meters. जी हाँ, लगा था ऐसा कि बिल्कुल 6 मीटर के आसपास, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। शुरुआत अच्छी है, निश्चित तौर पर जो आपका सपना है 6 मीटर का वो भी कंप्लीट होगा। और अब ये अमित शर्मा हरियाणा के अपने प्रयास के लिए गए हैं। इस बार ये सक्सेस नहीं कहा जाएगा, शायद कुछ चूक हुई है उनसे, समझ नहीं पाए हैं। हालांकि फेयर दिया गया है, लेकिन डिस्टेंस कुछ खास नहीं रहा। Watch out for Meet Patel, the one before this boy who jumped 5.70 in his second attempt. ये अमित शर्मा आपकी स्क्रीन पर निराश होंगे अपने इस अटेम्प्ट से। जी हाँ, मात्र 3.65 मीटर, जबकि इससे पहले 5 को कवर कर चुके हैं। और अब ये आपकी स्क्रीन पर हैं प्रदीप हरियाणा के। बुलंद इरादे, बुलंद हौसले और हौसलों की उड़ान। खेलो इंडिया पैरा गेम्स
2023। Yesterday we saw a similarly interesting long jump where 4 people jumped above 6 meters. Are we going to see another brilliant here? Already Meet Patel has surprised us with 5.70 meters. इस बार 5 से निश्चित तौर पर ये ज्यादा है, कितना देखना होगा। बहुत बढ़िया ये शुरुआत थी, स्टार्ट बेहतरीन, और देखा गया है अब से पहले के मुकाबलों में भी कि खिलाड़ी अपने जो प्रदर्शन है नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो जो पहला प्रयास था वो था 5.44 मीटर का, दूसरा उतना बेहतर नहीं, तीसरा फाउल हो गया है, और फाउल ऐसी स्थिति में तीसरे अटेम्प्ट में आना थोड़ा सा निराश करता है खिलाड़ी को, रुपिंदर। But he's already got a mark on, so obviously he was looking to improve on that. And when you try something like that, just like a pace bowler trying to improve his speed commits a no ball, this was a no jump. सोनाई राज तमिलनाडु के आपकी स्क्रीन पर तैयार, अपने ये ब्लेड एक जो लेग है इनकी ब्लेड के साथ ये क्या बेहतर होगा दीपक? So I was trying to explain that these are high jumpers with they have to work at maintaining at even stride in the run up, and they have either the absence of one limb, which we can very clearly see here, or they have an affected lower leg. And look at that courage. With the blade, you get the kind of acceleration that you are hoping for, the explosive power that we talked about yesterday, Rupinder. It is all about that explosion. Use the good foot for the takeoff. So it is not barring that which foot you use. You have to use your good foot, and that's how you compete in this. And he's got 634 and 632 That's in massive. this attempt. And again, I just have to dream, and the athletes are responding. This is really great pleasure for us to look at such talent at the first India Khelo Para Games. And that's Rajesh from Tamil Nadu, again a blade runner. Look at that confidence and that calm expression on the face. Oh, that's he's not very satisfied with that. चाहे देखिए शुरुआत सधे हुए कदमों से की थी, लेकिन जो फिनिश देने में वो थोड़ी सी चूक हल्की सी हुई है, लेकिन अभी मौके और हैं, 6 अटेम्प्ट मिलेंगे। तो आप जो एक गणति करते हैं, मात्र 4.98 मीटर की दूरी तय की है अपने दूसरे प्रयास में। और अब डोगा देमेंदु नायडू, आंध्र प्रदेश का ये खिलाड़ी, एक बार फिर अपने अटेम्प्ट के साथ तीसरे अटेम्प्ट में 6.22 था, और बेस्ट इनका है 6. ये डोगा देमेंदु नायडू आंध्र प्रदेश के। हर खिलाड़ी का अपना एक अंदाज होता है शुरुआत का, और ये डोगा का स्टाइल, और क्या जबरदस्त। लेकिन 5 मीटर का भी जो आंकड़ा है वो पूरा नहीं कर पाए, उसको निराश होंगे। शुरुआत थी सधे हुए कदमों से, लेकिन शायद कुछ चूक हुई समझने में, और फिनिश उतना बढ़िया नहीं। रुपिंदर, बहुत ध्यान रखना होगा अगर इन खिलाड़ियों को मेडल की दौड़ में बने रहना है, तो 4.42 मीटर की दूरी अभी तक तय की है आंध्र प्रदेश के इस खिलाड़ी ने। इस मुकाबले में आंध्र प्रदेश के 3 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मीत पटेल एक बार फिर अपने Meet Patel looks very confident, tall boy from Gujarat. Very accelerated pace. Oh, that's a really good jump, and that's a valid jump. And look at that acceleration from one foot. That's his good foot. And that was Rupinder, that was a very proper jump, I would say. Leg in the front,
just landing like typically like a helicopter or an aeroplane. Absolutely. And we wish he's gone over 6 because Solai Raj is up there at 634. And this one is 575 from Meet Patel. So 590 remains his best. An interesting competition brewing, although Solai Raj clearly in front as yet. And that's bib number 259, boy from Haryana, Amit Sharma. जी हाँ, इससे पहले 5.44 मीटर की दूरी ये तय कर चुके हैं। चाहेंगे इंप्रूव करें, देखना दिलचस्प होगा क्या अपना जो पहले का प्रदर्शन था उससे इस अटेम्प्ट में सुधार पाएंगे। जी नहीं, लग नहीं रहा है ऐसा। मात्र 3.65 मीटर अपने इस दूसरे प्रयास में सफलतापूर्वक इन्होंने छलांग लगाई है, जो अपने पहले प्रयास से बहुत पीछे रह गए हैं हरियाणा के अमित शर्मा। और अब ये आपकी स्क्रीन पर प्रदीप हरियाणा के। अपना समय ले रहे हैं, जानते हैं कोई जल्दबाजी नहीं, समय है तो उसका सदुपयोग किया जाए। हल्के वार्म अप के लिए जाते हुए, क्योंकि बॉडी को पहले हीट करना होता है थोड़ा सा, और बेहतर प्रदर्शन के लिए ज़रूरी है कि जो भी टेक्निक्स होती हैं खेल की उनको अपनाया जाए और उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए प्रदीप हरियाणा के। खिली हुई धूप और हौसलों की उड़ान, दिल्ली का खूबसूरत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 हाई जंप का ये इवेंट, लॉन्ग जंप का ये इवेंट आज हाई जंप का एक भी मुकाबला रुपिंदर देखने को हमें नहीं मिला है अभी तक। लॉन्ग जंप्स, डिस्कस, शॉर्ट पट और ट्रैक के मुकाबले, जैवलिन के मुकाबले देखे हैं हमने, लेकिन हाई जंप का आज कोई मुकाबला देखने को नहीं मिला है। और उसके बाद ये मेंस 400 मीटर रन T13 की तैयारी चलते हुए। So men's 400 meter run T13, the lineup is ready. We can see at least 6 players getting ready out of a line of 8, including Subodh, Vikas Gowda, Ashish Anvil, Prashant, Sunil Suthar. That's on your screen. That was player from Andhra Pradesh. That's bib 389, Vikas Gowda from Karnataka. You can see the players are, that's bib number 267, that's Ashish from Haryana. And T13 category, they can see up to a distance. It is not as severe as T11 or T12. That's bib number 346, Anvil Kumar from Himachal Pradesh. As you rightly said, T13, the impairment is slightly reduced in the sense as comparison to T11, which had to run with an escort runner, and we could have only 4 runners. We have directly now more than about 6-7 runners here in this race because there is no fear of an accident. So that's the lineup. Subodh, जी हाँ, लेन नंबर 1 में है सुबोध भाट हरियाणा के, लेन नंबर 2 में नैलारामन आंध्र प्रदेश के, लेन नंबर 3 में विकास गौड़ा कर्नाटका के, आशीष लेन नंबर 4 में हरियाणा के हिमाचल प्रदेश के, अनिल कुमार लेन नंबर 5 में, लेन नंबर 6 में है
अहमद SK वेस्ट बंगाल के, और लेन नंबर 7 में के प्रशांत तमिलनाडु के। Avnil Kumar representing Himachal Pradesh is a local runner in the sense that he is based in Delhi, trains in Delhi here at the Nehru Stadium, and perhaps would fancy his chances in this race. So that's Avnil Kumar right at the front. You see the players sitting on the milestones on their respective seats, waiting for the A pistol to blow off. And because it is T13, you do not need a guide. You can have least obstruction, the players intruding into each other's lanes, and which is why we can have up to 8 athletes on the same track. And I think the more are the players, Rupinder, the more is the excitement in the audience as well, right? Definitely. And viewers watching the gun is linked to the electronic timing. So as soon as the gun goes, the timing starts. Earlier it used to be manual, and there is a difference of about 0.3 seconds between these two forms of timings. The one-lap race, where the problem with everyone is how fast should I go in that first 200? Will I tie up in knots in the last 200? We see Avnil in lane 5 getting into the lead at the early stages, but it's still half a lap to go for this one-lapper, which Milkha Singh made famous in 1960 at the Rome Olympics while finishing 4th for India. And that's Anvil Kumar pacing far ahead. Boy from Himachal Pradesh. Looks like, so far he's the clear winner in 400, T13. And other pacers are coming up. They are just, trying to close in an inch. It's a very close fight. And that's what I was mentioning. Subodh Bhatt from lane 1 had all the energy in him, but he didn't pace himself on in the first 200, left too big a gap to cover. Otherwise, I suspect he could have won this race. Watch him coming from nearly 7 meters behind and finishing just half a meter behind Avnil. जी हाँ, अवनील कुमार हिमाचल प्रदेश के पहला स्थान 56.76 सेकंड के साथ। सुबोध भट्ट हरियाणा के 57.04, आशीष हरियाणा के 59.18 सेकंड के साथ इस रेस को कंप्लीट किया है। मेंस 400 मीटर रन T13 का ये मुकाबला, और टॉप पर अवनील कुमार हिमाचल प्रदेश के। दो खिलाड़ी हरियाणा के दूसरा और तीसरा स्थान शेयर किया है हरियाणा ने। So Avnil Kumar quite elated from Himachal Pradesh, getting congratulated by his peer, and that's the kind of sportsmanship I think that we should witness. Getting congratulated by the other players. And here you see it was a very tough competition between Avnil and Subodh Bhatt from Haryana. And you see Subodh clinching his teeth. He knows that he could have got it, but he left too big a gap to be covered. And Avnil, oh my God, he's exhausted, but at the same time satisfied. One exhausted, the other one full of energy, not properly paced in his race. The other gets the advantage, and the exhausted man wins. जी हाँ, बिल्कुल जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, और यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है अनिल कुमार ने हिमाचल प्रदेश के 56.76 सेकंड के साथ कंप्लीट किया इस रेस को।
सुबोध भट्ट। और अब ये शॉर्ट पुट के मुकाबले F54 फाइनल है, ये मेडल का मुकाबला है। तो खिलाड़ी चाहेंगे कि जो दमखम है उसका प्रदर्शन किया जाए और बेहतरीन से बेहतरीन अटेम्प्ट। ये सुवर्णा राज हैं उत्तर प्रदेश की। बेस्ट अभी तक का 4.44 मीटर का स्कोर जो आया था तीसरे अटेम्प्ट में। अर्चना कुमारी बिहार की, सिंपी रानी गुजरात की। So that's Suvarna Raj, woman with 90% disability from Uttar Pradesh, and represented India in 3 Para-Asian Games in Hangzhou, China, in Jakarta in 2018, Indonesia, and in South Korea in 2014, born in Nagpur. And very interestingly, she has audited more than 500 government buildings and sites across the country as part of the Accessible India campaign. So she is not only an athlete, but she is also someone, who is actively participating towards inclusion in the society at large. 4.44, her best attempt, looking very confident. Member of World Assembly of Women with Disabilities in South Korea and CSO member, Election Commission of India. We have such a talent which is participating in the games. Good to see one athlete serving selflessly the cause of the entire group of para people, looking for accessibility, as you rightly pointed out, in so many government buildings where they face difficulties. जो बेस्ट रहा है वो है 4.44 मीटर। इसी के साथ 6 अटेम्प्ट भी पूरे किए सुवर्णा राज ने। और इनकी टक्कर है अर्चना कुमारी बिहार की और सिंपी रानी गुजरात की, पूजा हरियाणा की। 4 खिलाड़ी शॉर्टपट F54 कैटेगरी में मेडल के लिए अपने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ मौजूद। और अब ये एक बार फिर लॉन्ग जंप। राजेश कुमार तमिलनाडु के। ब्लेड एक पैर में जो निचला हिस्सा है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। अपने हाथों को खोलते हुए बॉडी मूवमेंट जो होता है, एक्शन जो होता है, वो आपके प्रदर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राजेश कुमार तमिलनाडु के। सोलाई राज डी भी तमिलनाडु के हैं, इसी मुकाबले में हैं और 6.34 मीटर के साथ बढ़िया प्रदर्शन अब तक कर चुके हैं। कोशिश रहेगी राजेश कुमार की कि अपने जो अभी तक इनका जो बेस्ट है वो है 4.98 मीटर। So that's T64 for high jumpers with available movement, moderately affected in one lower leg or the absence of one leg. And they need to use their good foot for the takeoff. So that's a good long jump.
और अब आपकी स्क्रीन पर प्रदीप हरियाणा के भी दो खिलाड़ी यहां पर भाग ले रहे हैं, अमित शर्मा और प्रदीप क्या कुछ हरियाणा के लिए कर पाएंगे देखना इंपॉर्टेंट। अमित शर्मा इससे पहले 5.44 के स्कोर के साथ थोड़ा सा खासा प्रभावित किया था, लेकिन 6 की रेस में जब तक आप नहीं आते हैं तो मेडल की जो संभावना है वो थोड़ी सी कम ही रहती है। अगर आपको मेडल चाहिए तो 6 का जो माइलस्टोन है वो आपको संभालना होगा, कंप्लीट उसे करना होगा। इस बार ये बढ़िया स्टार्ट है, लेकिन 6 तो किसी भी कीमत पर नहीं। 5 से आप कितना आगे निकले हैं सिर्फ यही देखना बाकी है। कोशिश अच्छी थी, मोमेंट बढ़िया था, कॉन्फिडेंस भी नजर आया, लेकिन प्रदर्शन इस काबिल नहीं कि आप 6 का जो मीटर का जो स्टैंडर्ड है उसको मीट करें। शायद सलाह मशवरा जी हाँ, 5.36 मीटर की दूरी तय की। मीत पटेल गुजरात के 5.90 अभी तक हमने देखा था उन्होंने पूरा किया था डिस्टेंस। इस बार बेहतरीन शुरुआत कही जाएगी, ये स्पीड अच्छी है, क्या कवर करेंगे 6, कंप्लीट करेंगे 6। ये फाउल करार दिया गया है। निश्चित तौर पर थोड़ा सा संभल कर खेलना होता है, यहां चूक हुई है हल्की सी, शायद पहले उन्होंने स्टार्ट ले लिया। I think it's the pressure of Solai Raj. He's jumped 6:32. And Meet Patel was second at 5.90. This was his last attempt. So he was trying his level best. And in that attempt, overstepped and could not get a mark and will have to be content with the silver medal. Solai Raj has been excellent with his blade leg. And yes, Rupinder, one thing to note is that, you know, with the Blade Runners, whether that's in the sprinting event or in a long jump, you definitely get somehow that acceleration, which is slightly different from the other athletes in the same category. Do you think that the acceleration or the explosion that you get from the blade, that's slightly different? Because according to the IPC regulations, it should not be. But what's your experience? Well, technically, there was a huge debate about this when that famous Blade Runner, the Paralympic gold medalist Oscar Pistorius, competed with the able-bodied and reached the semi-finals of the 400 meters individual and also won a medal for South Africa in the 4x400 relay. And many of the able-bodied athletes said he has an advantage because he's not gathering any lactic acid in his muscles as he runs towards the finish of the 400, while we are having to face that problem. So it's debatable, although I would think it is a very courageous effort on the part of these people with reduced mobility. And definitely, you know, there is, and that's Solai Raj. That's the final result. Solai Raj D. A big difference of 6.34 meter in long jump T64 men's event. Meet Patel 5.95, trailing behind, and then Pradeep of Haryana 5.44. And Rupinder, that twitch that you get from the hamstring versus the twitch that you get from the metal blade, it's debatable, but that's allowed in Absolutely. the it event. It is within his rights, and they can continue to debate and continue to participate in peace. As we see that Meet Patel came second with 5.95. We had a similar boy from Gujarat who was fourth yesterday in the long jump, Mohammad Anas. I found it outstanding. He jumped 6.04. So something Gujarat is doing right with their long jumping coach and coming up with these two fabulous performers that really impressed me.
And look at that. That school kids have been brought here to witness the fabulous event of the first ever Khelo India Para Games. And somehow, somewhere, some of these kids, they will grow up, they will have this memory of witnessing this first event in India. And maybe, some of them will get interested, will get encouraged by their parents, by their teachers to participate in sports. Definitely. Very pleasing sight to see these young children coming, watching, and hopefully getting inspired. As we switch to a field event in the men's category. And you see that, look at the volunteers, the way they are helping the para athletes. It's very encouraging. They are escorting them, bringing their tools and their gear, helping with their mobility. And that's men's discus throw, F55. That's Manihas, Muthuraja, Sudhir, Vedpal, Amit Kumar Singh, Neeraj Yadav and Pappu Yadav. And these are the highlights from the earlier sprint. T13 400 meter. And what a scene. And this is Anil Kumar from Himachal Pradesh. T13. And that's a classic finish. Avnil had the courage to go out fast. He's dying, but he's paced himself beautifully to win the gold. The boy in the first lane did not have the courage, went off slowly. In the last stretch, realized I might get a gold and just missed out. So that's a classic decision that a 400-meter runner has to make when he starts his race. जी हाँ, विमेंस शॉट पट F54 कैटेगरी में सिम्पी रानी गुजरात की तैयार हैं अपने अटेम्प्ट के लिए. Bib number 205, Simpi Rani from Gujarat. All the players in women's shot put F54. They're going to throw a metal ball weighing about 2 to 3 kgs. Because it is F54, it is for field athletes with movement affected to a high degree in the mid-trunk, below the chest and legs, and all through while seated, and generate power through a full range of arm. They can extend the arm, shoulder and chest movement, and you see they need to generate that explosive power. They can hold the pole to balance them out. And within the we were talking about it yesterday. Some players choose not to use the pole to balance them, and rather they bend backwards and use their back muscles as a fulcrum, which I think and I think from an injury and from a safety perspective, this is a better approach. And in her second attempt, she is slightly better than the first one. A total of 6 attempts. जी हाँ, अभी तक 3.86 मीटर की दूरी तय कर चुकी हैं सिम्पी रानी. उससे पहले स्वर्ण राज हमने देखा था क्या बेहतरीन प्रदर्शन. रुपिंदर 4
4 मीटर वो अचीव करने में सफल रही थी। 3 किलो के वेट को अपने एक बाजू से थ्रो करना आसान बिल्कुल नहीं होता है। टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है, प्रैक्टिस बहुत। और ये खूबसूरत ईगल। That's our airy guest who has come to witness this grand event that was inside the Jawaharlal Nehru Stadium, the field event. This women's shot put event is happening just right outside. And in the meantime, we have the men's 400 meter T20 run up getting ready. We'll take you inside that event shortly. That's also going to be another exciting event. We can already see about 5 players getting ready for their turn. Simpirani prepping up. Sometimes the audience, they get a little impatient that why isn't it getting started? But I think we should be conscious of the fact that it's not a simple event. It's the players, they need to take care of their safety, and which is why it takes a little bit of extra time to get them ready for the throw. That's a valid event. That's a valid attempt. And you see the calm and the serenness on her face. Taking breath in. Rupinder, if you could tell us the purpose behind, when it comes to shot put, there is this very typical gesture or typical action of keeping the metal ball right against your ear, your cheek, and then, throwing it. What's the ergonomics there, if you could guide the viewers? Basically, the closer you keep it towards your neck, you release it straight and you get the maximum distance. The moment it goes further away, then it makes it that much more difficult in terms of power imparted. So you might have to impart more power, yet get less distance. And that's absolutely right. This kind of analysis can only come from a coach, Rupinder. Yes, you are right. So it's all about, we have to keep in mind it's about 2 to 3 kgs. You can't just, fling it just like that. There has to be a completely synchronous movement between the wrist and the shoulder, and which is why the players, they are expected to punch it out. So Simpirani 3.92 in her last attempt. Her second attempt was 3.86. The last one is 3.92. जी हाँ, जैसा पहले भी हम देख चुके हैं कि पहले अटेम्प्ट के बाद लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। रुपिंदर, ऐसा लगता है स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 अटेम्प्ट हैं वो एज ए वार्म अप यूज़ कर रहे हैं प्लेयर। अगर इससे पहले ये वार्म अप का जो सिलसिला है शुरू हो जाए इवेंट में आने से पहले ही, तो प्रदर्शन निश्चित तौर पर यहाँ सुधर बेटर हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो 6th अटेम्प्ट है उसमें बेस्ट देखने को मिल रहा है खिलाड़ियों का, और यहाँ सिम्पिरानी का जो बेस्ट है वो है 3.92 मीटर। 4 खिलाड़ी इस मुकाबले में हैं। 95
for event women's shot put F54 category, अर्चना कुमारी बिहार की, सेम्पी रानी गुजरात की, पूजा हरियाणा की और सुवर्णा राज उत्तर प्रदेश की। इस शॉट पट का यह मुकाबला है। Men's discus throw F55, मुथुराजा 32.84 मीटर, मनिहास हरियाणा के। डिस्कस थ्रो, जैवलिन, शॉट पुट, ये जो स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेन, इससे बाहर जो फील्ड है यहाँ पर इनका आयोजन किया गया है। और ये डिस्कस थ्रो। And in the same event, we have an extremely celebrated player in the lineup, Neeraj Yadav, F55, men's discus throw. And just to refresh the memory, Neeraj Yadav participated in the recently concluded Asian Para Games. He claimed a India overall claimed a double podium finish in the men's javelin throw F55 and there Neeraj Yadav competed in the javelin event, but we have seen that it's a throw event, so players, they decide to go for the double or maybe, sometimes even triple events where they combine javelin with either shot put or javelin with something else. And Tekchand in the same category, he took home a bronze medal, 30.36 meter. But back on the field. ये बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत शानदार तरीके से इसको अब देखना होगा। देखिए कॉन्फिडेंस बताता है खिलाड़ी का कितना बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। निश्चित तौर पर अपने इस प्रयास से प्रसन्न होंगे। वेदपाल हरियाणा के 31.78 मीटर। और अब जाएंगे अपने अगले अटेम्प्ट के लिए। बहुत बढ़िया अभी तक, ये देखिए शानदार। टेक्निक अच्छी होती है तो रिजल्ट भी अच्छा होता है। और यहां टेक्निक और पावर दोनों का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा के वेदपाल। Vedpal, a very, very strong contender, powerful athlete. And you can see the kind of energy he's putting in the attempt. It's almost like a roar. So when I was there at the Paralympic trials back in 2021, I was witnessing the discus and the shot put events myself, standing right where adjacent to where this event is happening right now, and it is absolutely thrilling to see the athletes, make that mark, make that attempt. That roar and the passion comes out and gives you a different kind of an energy even as a bystander, Rupinder. And we could debate whether the roar actually helps them to push the discus further. Well, yes, that's a point. But you see the judo and the judo players, they make a lot of roar, especially I think roar and okay. So that's men's discus throw F55. The current standing is we have Vedpal trailing behind the first spot, which is currently Muthuraja 32.84, and three players, Amit Kumar Singh, Neeraj Yadav, they are not there. And back to Vedpal. So Rupinder, the importance of a roar.
especially in power-led games. I think it does play a major role. Well, it definitely has something to do with each one individually psyching themselves up. We see it in badminton, Carolina Marin of Spain, now Sindhu also following on the tennis court with Novak Djokovic. If he's won a very long rally, he just wants himself to roar as well as the spectators to roar. And um, and talking about Carolina Marin, she um, you know some players have actually complained that she roars too much. And I think there was some debate, some sort of an argument in one of these matches. Um, but that constant roaring is part of any power-led game, right? Whether that's a discus throw, whether that's a shot put, even javelin. Javelin has, I witnessed Sumit Antil and other players right here at the Jawaharlal Nehru Stadium, and let me tell you, if you are watching them on the ground for a moment, you will feel that you got to be there out in the field yourself. So I think it does play a very, very important role in these kind of explosive games. And there we have Vedpal going for it. So Vedpal trying to chase down that 32.84 mark of Muthu Raja, which has placed him in that gold medal winning position. He's roaring himself. Can he roar himself to a gold, or will he have to be satisfied with a silver? That's what we are waiting and watching. जी हाँ बिल्कुल, एक जैसे शेर दहाड़ता है ऐसे एक दहाड़ देता है खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को प्रेशर में लाने के लिए। अक्सर टेनिस कोर्ट में हमने देखा है, बैडमिंटन कोर्ट में हमने देखा है, वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं रुपिंदर। और निश्चित तौर पर यहाँ भी वही कि देखिए दमखम हमारे अंदर भी है और वही बेहतरीन प्रदर्शन वेदपाल का कंटिन्यू है। लेकिन क्या गोल्ड मेडल की जो दावेदारी है उसको कुछ हिला पाएंगे अभी तक? ये बढ़िया थ्रो 32 मीटर से ज्यादा का आपको स्कोर करना होगा, डिस्टेंस कवर करना होगा अगर आपको चाहिए गोल्ड मेडल। तो ये बढ़िया थ्रो है। ये देखिए एक बार बेहतरीन नजारा, अपनी शक्ति को समेटते हुए उसको दिशा देते हुए हरियाणा के वेदपाल। और अब इंतजार 32.08। Crossed the 32 barrier, but still missing the gold medal by 76 centimeters because Muthu Raja has 32.84. जी हाँ, मेडल महत्वपूर्ण होता है लेकिन उसके बाद भी अगर ये गोल्ड नहीं अचीव कर पाए हैं लेकिन 32 के मीटर के जो आंकड़े हैं उसको छू पाए हैं, निश्चित तौर पर संतुष्ट होंगे अपने प्रदर्शन से। जो अब तक प्रयास किए थे वो 31-30, लेकिन अब ये 32 फाइनली। और खिलाड़ी के अंदर आत्मविश्वास निश्चित तौर पर जगाता है उसका बेहतरीन प्रदर्शन, और वही किया है यहाँ हरियाणा के वेदपाल ने। शानदार प्रदर्शन, 32.08 मीटर की दूरी तय करने में यहाँ कामयाबी हासिल की है। पैरा गेम्स का अट्रैक्शन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज लोग इन खेलों को देखने के लिए यहाँ स्टेडियम में आए हैं रुपिंद्र। और जैसे जैसे पता चलेगा लोगों को कि हाँ इतना बड़ा इवेंट राजधानी दिल्ली में उनके घर के पास चल रहा है, तो निश्चित तौर पर और खिलाड़ी को भी मजा आता है जब वो दर्शकों के बीच में अपने प्रदर्शन को करता है। एक जोश मिलता है, एक मोमेंटम मिलता है। डेफिनेटली मोमेंटम मिलता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल में वो 1 लाख का मोमेंटम भी भारत को वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाया क्योंकि दूसरी टीम उससे ज़्यादा डिटर्मिन्ड और कैलकुलेटेड थी। फिलहाल यहाँ प्रेजेंटेशन सेरेमनी अंकुर धामा के 5000 मीटर्स की जो आज सुबह हुआ था,
अंकुर धामा ने ये दूसरा गोल्ड मेडल जीता था। जी हाँ, अंकुर धामा 17 मिनट 53.85। ये थर्ड जो है, ये पोजीशन थी केशव मूर्ति के पास। और ये दूसरा जो थर्ड पोजीशन थी केशव मूर्ति 19 मिनट 39.58 सेकंड के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था भीमप्पा पुजारी ने कर्नाटका के। दूसरा और तीसरा दोनों जो स्थान थे वो थे कर्नाटका के खिलाड़ियों के पास। भीमप्पा पुजारी दूसरे नंबर पर रहे थे, उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है 23 मिनट 34.13 सेकंड के साथ। और अब Recognition also being given to the escort runners. Both of them are presented with medals. जी हाँ बिल्कुल, और हमने देखा था ट्रैक पर बिब नंबर भी वही दिया गया था गाइड्स को, बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये प्रथम स्थान अंकुर धामा, बिल्कुल जो बीच में रहते हैं, सबसे पोडियम फिनिश अगर आपको करना होता है, सबसे ज्यादा हाइट पर अगर आपको खड़ा होना होता है तो आपको हासिल करना होता है पहला स्थान। और पहला स्थान 5000 मीटर रन T11 में हासिल किया है अंकुर धामा ने मात्र 17 मिनट 53.85 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और ये वो क्षण है जो यादगार बन जाते हैं। आपने गोल्ड जीता, मैंने सिल्वर, इन्होंने ब्रोंज, लेकिन ये जो इस याद है ये एक साथ खिलाड़ियों को खड़ा कर देती है। जी हाँ, हम एक ही फील्ड के खिलाड़ी हैं और हमारा एम एक है, और विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ अंकुर धामा का। भीमप्पा पुजारी, केशव मूर्ति, ये वो सक्सेसफुल खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल में परिणित किया अपने एफर्ट्स को, अपने प्रयास को, अपनी मेहनत को। और अब ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल गले की शोभा बनते हुए अंकुर धामा, भीमप्पा पुजारी और केशव मूर्ति के गले की। और खेलों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए स्थानीय स्कूलों के बच्चों को यहाँ लाया गया है रुपेंद्र, ताकि खेलों में दिलचस्पी बढ़े। और खेलो इंडिया का जो उद्देश्य था वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन यही कि देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को तलाश किया जाए, फिर उन्हें तराशा जाए और इस काबिल बनाया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की चुनौती को वो पेश कर सकें। और फिर ऐसे यंग चिल्ड्रन अगर आए एज स्पेक्टेटर्स, वो इंस्पायर हो जाएं अगले जनरेशन के लिए। जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कल इनॉग्रेशन सेरेमनी में कहा था, अभी तो हम 111 मेडल लेके आए हैं, पर 2030 में हम 200 चाहते हैं। So Khelo India Para Games, the first ever being organized at Jawaharlal Nehru Stadium. And now we see women's long jump, T20, T37, T38 category combined. And we have bib number 252, that's Sita from Haryana. Sita is from T37 category. We have one player, Pooja, from T20 category, but it's a mixed category in long jump.
37, 38, and 20. We have three players, Sita, Chiranjita, and Beena. Beena from Gujarat, Chiranjita from Assam, and Sita from Haryana, all in T37 category. We have Anismita of Assam, the solo player in T38 category. That's bib number 129, Anismita, the only one in this event with T38 category. And look at that, young player. And I think it's, Rupinder, I think it's really important, this early exposure. It's not about whether you win or you lose. It's about, getting that exposure. And it's really heartening to see that through this Khelo India, it's a movement which translates to Let's Play India. It was proposed by the Government of India in 2017 to revive India's sporting culture by engaging children at the grassroots level. That's Beena Mordia, 198 bib number, from Gujarat, going for it. Good attempt. Let's see whether that's legal. That's a legal attempt. One can make out its initial stages of their taking part in these events. The first girl jumped bare feet. This girl is also jumping in normal shoes. Normally you would use spikes. So it's a learning process, and they're going to come back with benefits from this exposure. जी हाँ, बीना मोरदिया ने कवर किया 3.08 मीटर की दूरी को। पहला ही ये प्रयास था, और जैसे जैसे प्रयास आगे बढ़ेंगे इसमें सुधार होता चला जाएगा। दीपक, one very important categorization point, that's Pooja 244. The T20 long jumpers, it's an intellectual impairment. It's different from visual impairment or any impairment in the limb. It's intellectual impairment. They have difficulty retaining competition information, which affects their ability to alter techniques or tactics. And even then, these players, they are competing. That's bib 244 Pooja. That's exactly T20 category. She has intellectual impairment, difficulty in retaining competition information, very, very minute details like where she needs to jump, how much, the techniques and the tactics. And we can appreciate, I think we as viewers, we should appreciate the effort that it takes for a T20 player to participate. And also the coach needs to know all these details before he tries to coach them, because it requires a huge amount of patience. It's not going to come overnight. It will have to be drilled in over and over again. Perhaps with a normal jumper, you tell them 5 times. With them, you have to probably say 50 times before they achieve it. But they achieve it. And it's quite interesting that T20 is an intellectual impairment, while for T37 and T38, that's an impairment of the lower trunk and legs down one side of the whole body. And in all the 3 cases, we see that the jumping, the coordination of the body, that is affected, and which is why T20, 37 and 38 by the IPC, they can be clubbed together. And that's bib 129, the only player, Anismita Konwar from T38 in long jump from Assam. And T38 is a competition class, as will be a competition class at the Paris 2024 Paralympics as well. So perfectly valid mixture of participants. Their ability to anticipate the takeoff can also be affected. So they don't know from where sometimes they need to jump off.
So Anusmita facing the problem of jumping from far behind. Just watch her take off well behind the board, which is technically permitted, and therefore not getting the jump. And we hope she's learning in each jump that she's doing and coming closer and closer to the board and getting a better mark for herself. And that's exactly what this impairment does. Specifically T38, which is what Anismita plays in. And you see, it is so heartening. All the players, sitting together, talking to each other. It doesn't look like a competition any longer. It looks like camaraderie, that teamwork, that we are together as one nation. And that's what these games teach us. That's bib number 198, Bina Mordia from Gujarat. जी हाँ, सधे हुए कदमों से शुरुआत की और ये स्टार्ट लिया। कोशिश यही कि अपने जो प्रदर्शन है उसमें सुधार किया जाए। बीना मोरदिया, गुजरात, पहले प्रयास में 3.08 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया था, जो बेस्ट है। वहीं अगर सीता की बात करें तो अब पूजा आपकी स्क्रीन पर हरियाणा की। कोशिश यही है खिलाड़ियों की कि यहाँ से जितना मैक्सिमम सीख सकते हैं सीखें, और ये पहले के मुकाबले बेहतर प्रयास कहा जाएगा। 4 मीटर की जो दूरी है वो अब सिमटते हुए लग रही है। देखना होगा फाइनल में। जी, ये डिस्क्वालीफाई किया गया है, मतलब इस अटेम्प्ट को, ये अटेम्प्ट फेल कर दिया गया है। ये शायद ठीक से कर नहीं पाई। अभी तक का बेस्ट जो पहले प्रयास में ही किया था वो 3.56 मीटर। ये जो 30 देखिए, ये पहले जो स्टार्ट था उस पर लाइन पे आप जब हिट कर देते हैं पैर को तो वो वैलिड करार नहीं दिया जाता। वो पाउडर इसीलिए डाला जाता है कि आप उस पर पैर करें तो पता चल जाए आपको। और ये अब सीता हरियाणा की अपने बेस्ट के लिए तलाश करती हुई, लगातार प्रयास करती हुई, ये अभी तक का बेस्ट आया है इनका दूसरे अटेम्प्ट में। 2.73 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है अभी तक। बहुत कुछ सीखना होगा रुपिंदर इन खिलाड़ियों को, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने जो टैलेंट है उसका प्रदर्शन अगर करना है तो बहुत सुधार की आवश्यकता यहाँ इस इवेंट में। खासकर अनिश्मिता कंवर असम की अपने तीसरे अटेम्प्ट के लिए तैयार। दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा सा इम्प्रूव किया था, क्या तीसरे में देखना होगा बेहतर करेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करते हुए असम की अनिश्मिता कंवर। लेकिन ये पाउडर पर पैर तो पड़ा है, देखना होगा वैलिड है या नहीं। अभी फ्लैग स्कोर में अभी भी थोड़ा, जी हाँ, ये बिल्कुल वैलिड था। 3.43 मीटर की दूरी तय करने में कामयाब रही अपने तीसरे प्रयास में। So Anismita learning. She was far behind in her first attempt, came closer to the board in the second, then came bang on the board, a perfect jump, and from 2.73 she again jumped to 3.45. जी हाँ, बिना मोरदिया 3.08 पहले पूरा कर चुकी हैं और अब इस प्रयास में देखना होगा कितने करीब पहुंची हैं अपने साथी जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी हैं उनके स्कोर के। 3.08 देख चुके हैं हम इससे पहले। जी हाँ, क्या उसको क्रॉस किया है पहले ही डिस्टेंस को, या
जी हाँ, पहला जो है वो बेस्ट है अभी तक इनका, अभी 2.96। दूसरे प्रयास में, तीसरा प्रयास इनका 2.87। पूजा आई है हरियाणा की, तीसरा प्रयास इनका फेल था। अभी तक का बेस्ट पहले प्रयास में इन्होंने हासिल किया है, 3.56। देख रही हैं, समय ले रही हैं, जानती हैं 6 प्रयास हैं, बेहतर के लिए कोशिश करेंगी हरियाणा की पूजा। हरियाणा की 2 खिलाड़ी इस मुकाबले में बनी हुई हैं। पूजा कैटेगरी है T20 और सीता T37। ये दोनों ही खिलाड़ी हरियाणा से हैं और ये सीता कॉन्फिडेंस धीरे धीरे चेहरे पर झलकता हुआ जैसे जैसे प्रयास आ रहे हैं। खिलाड़ी को लग रहा है कि हाँ, मैं बेहतर कर सकती हूँ इस बार। 2.22 मीटर की दूरी ये पहले तय कर चुकी हैं। यहाँ देखना दिलचस्प होगा। And she is jumping without shoes. Rupinder, what's your view on that as a coach? Well, definitely the next step is to put shoes, and the final step is to put spikes. So I guess that's how you identify a beginner, intermediate in terms of their career journey. Bina Mordia, T37. That's a valid attempt. And just a technical point here, Rupinder. Why is it a combination of white and red? White for legal and red for non-legal attempt. Why not simply green and red, like the way we see on a traffic signal? Well, that you can debate, but white probably signifies peace and everything is good, fair, and red, obviously, you have crossed the limits. So white is when it's a spotless attempt, and red is when you have some question, some hiccup. And that's why it's not a green and red, it's white and red flag. And we see Anismita. Oh, she fell on the back. Not looking very happy. And that was almost a sprint slide. There was absolutely very less or no attempt to jump. She just came running in and took a higher stride. And that's 3.43, a better one. Her best one so far, 3.56. जी हाँ, एक बार फिर डिस्कस थ्रो का एक्शन कंटिन्यूज है आपकी स्क्रीन पर। That's men's discus throw, F55, out in the field.
and we see that this competition has been going on. There are multiple players. It takes time to strap them up onto their chair. And there are almost, almost 5 players who are actively competing, although we have a list of 8 competitors, including Neeraj Yadav. We saw Vedpal a while back. And right now we see bib number 137. That's Amit Kumar Singh from Bihar. And Rupinder, you see when the discus is thrown in such a way that it goes without shaking or without getting disturbance, I think that creates a better chance for it to go farther, because obviously the aerodynamics play their part, and it's going to be a seamless tear up of the air pocket, which basically means less disturbance for the discus. But what do you say? Absolutely. That's the perfect throw that they look for, to get that seamless release and no motion before it lands. So the lesser is the commotion in the discus, the better it is. And that's an aerial view, almost a satellite view, I guess. We see the shot put arena. We see the players gathering in, and we see the field. The periphery of the shot put, it opens up into the limited space, the limited arena, the market space within which the discus needs to land. जी हाँ, ड्रोन से इस शॉट को लिया जा रहा है. जो ड्रोन पहले स्टेडियम के अंदर था वो बाहर आ गया है. मैन डिस्कस थ्रो F55 कैटेगरी, और ये खूबसूरत बेहतरीन मोथुराजा 32.84 मीटर का डिस्टेंस करके कवर अभी भी नंबर 1 पर बने हुए हैं. वेदपाल हरियाणा के 32.08 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर छलांग लगा चुके हैं, और मनी हास अब चले गए हैं तीसरे पर 30.88 मीटर के साथ. और देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि वेदपाल जो ट्राई करेंगे वो गोल्ड के लिए करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वो दूसरे स्थान पर नजर आते हुए रुपिंद्र. लेकिन मुकाबला अभी भी जारी है. क्या ये पिक्चर बदल भी सकती है? अभी दूसरा खिलाड़ी अगर कोई बेहतरीन प्रदर्शन कर दे तो वेदपाल, और जो चुनौती है फर्स्ट पोजीशन की, उसको भी अभी पक्का तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक आपका अटेम्प्ट और दूसरे खिलाड़ी के सपने चकनाचूर निश्चित तौर पर हो सकते हैं. Well, Muthuraja is a celebrated player. He got congratulated by the Honorable Prime Minister, Mr. Modi, for securing a bronze medal in the recently concluded Asian Para Games. So he is an international player, and he has that experience, and that experience actually counts somewhere. So he's trailing at 32 plus, and we have seen Vedpal at 32, and that millimeter, that centimeter level difference, that definitely counts somewhere. So let's not forget he is an international level player. Definitely that's going to count somewhere. But Vedpal is very strong, still 32. जी हाँ, बिल्कुल. 32.84 मीटर को कवर करना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट, और जब आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तभी आपको बेहतर परिणाम भी मिलते हैं, और परिणाम यहाँ फिलहाल मुथुराजा के पक्ष में पहले स्थान पर बने हुए हैं डिस्कस थ्रो F55 कैटेगरी के इस मुकाबले में. और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए जो
फीता यूज किया जाता है उसको अब फोल्ड करते हुए। Muthuraja hails from Tirupur, came to Tirupur in search of a job at the age of 17. He comes from a very, very humble family, dropped out of school in class 9 due to financial issues. His father is a daily wage laborer and he has 3 younger brothers. Worked in the printing section of a garment factory, you know, and at the same year he met with an accident and he ended up in a wheelchair. But look at the turn of events. He, after nearly 2 years of treatment, um, while he was getting treatment in the rehabilitation center, he identified his F55 category है. Silver 2023 Paris World Championship silver, 2019 दुबई वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज और अर्जुन अवार्डी 2020 के अंदर उनके सिल्वर मेडल की वजह से 2021 के अंदर उनको अर्जुन अवार्ड मिला. भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने उनको अवार्ड दिया. एंड his name is there in the list of participants in this category. जी हाँ, ये लगातार साके बाबू के प्रयास, अटेम्प्ट एक कंप्लीट, बहुत बढ़िया ये हाइट ली है. डिस्टेंस कितना कवर किया ये देखना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हाइट से नहीं, ये डिस्टेंस आप जितना कवर करते हो, जितना लंबा आप फेंकते हो, जितनी दूर आप फेंकते हो डिस्कस को, वहीं से डिसाइड होता है मेडल का कलर, या मेडल आपको मिलेगा भी या नहीं. अपनी बेल्ट में कुछ प्रॉब्लम आई थी, उसको ठीक करते हुए 2 प्रयास अभी तक. पहला प्रयास था वो था 28.14 मीटर का, और अब दूसरा, और ये तीसरे प्रयास के लिए अब तैयार. डिस्कस को अपने हाथों में, जैसे स्पिनर बॉल को अपने हाथों में मूव करता है, वैसे ही एक तरीके से ये अपनी केमिस्ट्री डेवलप करता है खिलाड़ी. और इस बार पहले से बेहतर ये होना चाहिए.
देख रहे हैं कि उत्सुकता खिलाड़ी के अंदर भी बनी रहती है कि मैंने जो किया है आखिर किया है तो क्या किया है, और वो जब पता चलता है कि इतने मीटर मैंने फेंका है तभी रिएक्शन भी आता है, देखने को मिलता है कि जी हाँ, ये जी हाँ, दूसरा जो प्रयास था वो ही अभी तक बेस्ट 28.14 मीटर, 3 प्रयास कर चुके हैं और अपने गले को तर किया एक घूंट पानी पी के। ये एक तरीके से थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन होती है उसको भी मेंटेन करने के लिए प्लेयर्स यूज करते हैं। कुछ लोग खिलाड़ी देखा है हमने चिंगम को च्यू करते हैं, कुछ सिप करते हैं, और वो कंसंट्रेशन को बरकरार रखने के लिए शायद बेल्ट थोड़ी सी ढीली हो गई है। और वॉलेंटियर यहाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं पैरा गेम्स हैं, वॉलेंटियर बहुत इम्पोर्टेंट रोल यहाँ अदा कर रहे हैं। गाइड्स की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। साके बाबू आंध्र प्रदेश के, मेंस डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी है ये। जो रिंग होता है डिस्कस थ्रो के लिए, ये उसके बीच में ही इसको प्लेस किया जाता है चेयर खिलाड़ी के लिए, ताकि वो जो फील बनी रहे कि हाँ जी हाँ, आप रिंग से ही इसको थ्रो कर रहे हैं डिस्कस थ्रो को। साके बाबू आंध्र प्रदेश का ये खिलाड़ी भापते हुए कि कैसे इस डिस्कस को मैं बेहतर तरीके से फेंकूं कि वो दूरी तय कर पाए। बहुत बढ़िया इस तरीके से अपने बॉडी वेट को ट्रांसफर किया है, पीछे की ओर गए, और निश्चित तौर पर ये जो थ्रो है पहले से तो बेहतर होना चाहिए। और घूमती हुई लैंड कर गई है, और माथे पर जो है वो पसीने की बूंदे, इससे पता चलता है कि कितनी शक्ति लगानी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है, तभी मिलती है सफलता आपको। 28.22 मीटर की दूरी तय करने में कामयाब रहा था ये। इस प्रयास में इस बार एक बार फिर बेहतरीन तरीके से थ्रो किया है। क्या 30 तक पहुंच पाएंगे, यही दिलचस्प जानना अभी। Yes. So Sake Babu. Sake Babu actually participates in discus throw, javelin throw, shot put. At least these 3 events, and he has been a state level Paralympic champ, winning gold and silver in discus, in javelin and shot put, various events. And we have seen that all of these are throw based events, so players they choose to show their expertise in any of these. And he was a constable on probation in CISF. Unfortunately, while returning home, he met with an accident and lost his leg above the knees. And which is why, since he was still on probation, he could not be supported. He was adopted by a foundation
counseled, got his training done in para athletics, and this is what adaptive sports is all about. In less than a year of training, he was, winning state level championships, and here we have him making a mark at a national level, 28.97, his best attempt. And I think, Rupinder, to an extensive level, these, and we discussed about this yesterday, how the Army Paralympic node is supporting his Army personnel, not letting them go, but keeping them included. And this is what sports does to you. Absolutely. It's the benefit, and the services are doing a great job. In fact, they got an MOU signed with the Paralympic Committee last year, and it's already showing results at the Asian levels. And we hope at the Paris Paralympics we get some medals from them, especially in canoeing and rowing events. And that's Santosh. Shot put, F56-57, final event. So that's women's shot put, F56-57. That's Santosh from Haryana. Current best of 6.03. We have three players, Santosh, Sharmila and Suman Bala, all three competing from Haryana, same category of F57. And you see the follow through of Santosh. You see that. It's really important to take care of your wrist, which is why wristbands are really important, Rupinder. That full gear like this, lower back belt, the wrist straps, the pole, everything needs to be there. So as a player, you are not supposed to go complacent on any of these things, because it's just one minor negligence, and that's it. So I guess you got to be very, very cautious. It's not a light metal ball. It's heavy, and you can see the expression on the athlete's face. Grown through her 6 throws, started from 5.98. Her fifth attempt was 6.27. Really immersed herself into that attempt, following through very well till the end. And that fifth throw, 6.27, her best throw as she completes her 6 throws. And that's now a different turn.
That's F56 and 57 category. Limb deficiency, either leg length difference, impaired muscle power, impaired range of movement. All of these impairments put together, they're classified under F56 and F57. F because it's a field event. Rupinder, just getting into a little bit of history of athletics. So we know that javelin throw, came from the war front. So did archery. But what about shot put? Well, I think that came from stone throwing, which was the crude form, went into a cricket ball throw, which existed for a long time in athletics, and finally landed up at the shot put. And it is made of iron, pure crude iron. Designed in such a way that it is held quite easily in the hand, positioned close to the neck, and then the power of the shoulders, of course, including the other parts of the body. In this case, they have the reduced strength, so the distances do not match. But it's a competition between similar abilities people. So Suman Bala starting with a 4.56. Yes, and we had Kiran Balian win India's first athletics medal in the Asian Games, and that's 24-year-old Kiran hurled the iron ball to a distance of 17.36. That was obviously in the able-bodied part, but that was the opening of India's medal account. And she became the first Indian woman to win an Asian Games medal in shot put event in 72 years, as she picked up a bronze on the opening day of the Asian Games. And what you see here on the screen is the para replica, the para version of the same game, although here the players are known for their fighting attitude, playing the same game with a bit of a change in strategy. And of course, Deepa Malik threw herself into fame at the 2016 Rio Olympics, getting a silver medal for India in this event. जी हाँ बिल्कुल। अब ये फेयर थ्रो है और 5 मीटर की जो दूरी है निश्चित तौर पर इस बार तय की है शॉट पट F56 F57 में। सुमन बाला F57 कैटेगरी में compete करते हुए 4.97 मीटर अब तक का बेस्ट हरियाणा की सुमन बाला, और संतोष और शर्मिला 2 खिलाड़ी और हरियाणा से हैं और तीनों ही 57 में यहाँ compete कर रही हैं। शॉट पट ताकत और टेक्निक दोनों का मिक्सचर यहाँ करना पड़ता है, तभी आपको परिणाम बेहतर मिलते हैं।
6 अटेम्प्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ सुमन बाला के बेस्ट अभी तक जो नज़र आ रहा है वो 5वें प्रयास में 5.03। अभी छठे जो प्रयास है उसको अपडेट किया जा रहा है, देखना होगा क्या इससे बेहतर है। फिलहाल जो अब तक का बेस्ट वो इनका आया है 5वें प्रयास में 5.03 मीटर की दूरी। लेकिन उससे पहले संतोष को हम देख चुके हैं 6.27 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर चुकी हैं। जी हाँ, छठे प्रयास में भी जो स्कोर है वो 5.03 मीटर। तो बेस्ट सुमन बाला का 5.03। डिस्कस थ्रो F56 डिस्कस थ्रो 545 प्रकाश वी तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं। F56 मेंस डिस्कस थ्रो प्रकाश वी 545 अब तक का बेस्ट 33.91 मीटर। बहुत बढ़िया, दूसरे प्रयास में आया है 33.91 मीटर का डिस्टेंस ये कवर कर चुके हैं मेंस डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी में। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। बहुत बढ़िया ये प्रयास। ये प्रकाश वी तमिलनाडु के खिलाड़ी।
देखिए कॉन्फिडेंस प्रकाश वी का। और आप 33.91। और ऑफिशियल मौजूद यहाँ पर दूरी को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ये एक अच्छी थ्रो कही जाएगी। जो एक्शन बिल्कुल पॉजिटिव, बहुत बढ़िया तरीके से इसको थ्रो किया। और इसी के साथ ये जो टोटल 6 अटेम्प्ट है वो भी पूरे होते हुए प्रकाश वी के। So Prakash V from Tamil Nadu, powerful player, and he has been best is 33.91 so far, over 6 attempts, one of which was invalid. And this is the ground. Lush green inside, and now we are looking at women's long jump. That's Amulya Ishwari, T47, women's long jump. विमेंस लॉन्ग जंप T47 भवानी ओवल सामग्री आंध्र प्रदेश की। And we will have Kirti Chauhan, Tripti Rajput from UP, Kirti Chauhan from Delhi, Amulya Ishwari from Tamil Nadu, we just saw. Now this is Bhavani from Andhra Pradesh. And we will also have Nimisha from Gujarat. ये तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट अमान्य करार दिए गए थे। भवानी And that's Kirti Chauhan, a local girl from Delhi, trains here at the Nehru Stadium under coach Amarjeet Singh. Looking forward to improve. She went to the Asian Games, did not medal there, but she's looking to improve upon her best performance here at the first Khelo India Para Games. जी हाँ, 4.11 मीटर की दूरी तय की है कीर्ति चौहान ने। और अब अमूल्या ईश्वरी तमिलनाडु की
अभी तक का बेस्ट 4.11। ये अमान्य करार दिया गया है। Quite evident, overstepping the board, so a foul jump. जी अब तक 3 कोशिश की हैं अमूल्या ईश्वरी ने और तीनों ही प्रयास जो है उनके वो फेल रहे हैं। ये तृप्ति राजपूत उत्तर प्रदेश की पहला प्रयास असफल रहा था, दूसरा सफल और अब तीसरे प्रयास के लिए तैयार। Tripti Rajput representing Uttar Pradesh trains here at the Nehru Stadium along with Kirti Chauhan. So this would be an interesting duel between these two youngsters. Kirti has just jumped 4.11 in a third attempt. Let's see what Tripti gets in hers. She could come closer to the board. And it looks like close to 4 meters. We'll wait and give you the distance. It's 3.87. So she's closing down on Kirti, who leads her with 4.11. और अब है भवानी वलसामगरी आंध्र प्रदेश की ने अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार। पूरी ताकत को इकट्ठा किया और बढ़िया ये लॉन्ग जंप, बिल्कुल क्लियर है ये जंप। डिस्टेंस के अभी भी डिसाइड किया जाएगा, देखना होगा। जी हाँ, 4.04 मीटर इस बार अपने इस तीसरे प्रयास में कवर करने में कामयाब रही हैं भवानी। और अब अमूल्या, पहले 3 प्रयास फेल रहे थे, अभी चौथे प्रयास के लिए लॉन्ग जंप के तैयार। तृप्ति राजपूत तैयार हैं। वन बाय वन मौका मिलता है खिलाड़ियों को। जी हाँ, अमूल्या ईश्वरी ईश्वरी ये प्रयास भी फेल, रेड फ्लैग अप। ये चौथे के लिए थी लेकिन इसको भी अमान्य करार दिया गया है। तकनीकी खामियां जब खिलाड़ी के साथ होती हैं तो निश्चित तौर पर प्रदर्शन आपका मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो वैलिड ही करार नहीं दिया जाएगा तो आप जितना मर्जी डिस्टेंस कवर करें वो मायने नहीं रखता है लॉन्ग जंप में या कोई भी गेम हो। तो अभी तक के सभी प्रयास अमूल्या के व्यर्थ। ये तृप्ति राजपूत अभी तक का बेस्ट तीसरे प्रयास में 3.87। पहला प्रयास इनका भी फ्लॉप रहा था। और अब
अपनी बॉडी बैलेंस को संभाल कर बढ़िया रनिंग। ये वैलिड जंप। अपनी खूबियों को पहचाना और बहुत बढ़िया ये जंप। चार 4.13 मीटर की दूरी तय की है और अब ये भवानी। So Tripti Rajput getting past Kirti Chauhan, 4.13 to Kirti's 4.11. That contest really developing as we are reaching the fourth round. And we've got Bhavani from Andhra Pradesh who has also jumped 4.04. So 3 jumpers above 4 meters battling it out for the podium finish. Here comes the Andhra Pradesh girl. It's recognized as a good jump. This is an interesting competition. 404, 411. Tripti then going into the lead with 4.13. What's the response from this girl from Andhra Pradesh? 4.12. So can you imagine a better competition than this? 4.13 first, 4.12 second, and 4.11 third. And the 4.11 girl gets her next chance. Kirti Chauhan, currently lying third in a very narrow contest in the long jump of the women's T47 category. जी हाँ, बिल्कुल फेयर ये जंप है। बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट लिया और फिनिश भी किया। फेयर जंप। ये चौथा अटेम्प्ट था और 4.19 मीटर की दूरी तय की है इस बार। So what a great response from each of those, making for a very interesting viewing. Kirti Chauhan, a local girl here, training at the Nehru Stadium, had a best of 4.11, was bettered by the Andhra girl and Tripti from Uttar Pradesh till 4.13. She responds with 4.19. जी अब तैयार हैं अमूल्या ईश्वरी। अभी तक के जितने भी अटेम्प्ट हैं वो सब फेल और इस बार क्या ये भी फेल अटेम्प्ट, इसको भी अमान्य करार दिया गया है। अपनी तकनीक पर काम करने की आवश्यकता है निश्चित तौर पर अमूल्या को। ये देखिए इस बार ध्यान बहुत रखा था लेकिन रेड फ्लैग अप। Next up is Tripti Rajput, and let's see what her response is. She's just seen Kirti go past her with 4.19. Can she come back into contention? Fifth jump for Tripti Rajput. She didn't get her footing right, so this doesn't look impressive. Tripti disappointed. जी हाँ, जंप बिल्कुल फेयर है लेकिन जो डिस्टेंस है वो बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। 5 देखना होगा क्या आपने पहले के स्कोर में कुछ सुधार किया है या नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज यही कह रही है जी नहीं। 3.79 मात्र। तो अभी तक भी जो बेस्ट है वो है 4.19 और ये भवानी वल सामग्री 4.12 के साथ लीड कर रही हैं, 4.12 के साथ। In third spot behind Tripti, who's second with 4.13, and Kirti first with 4.19. जी हाँ, दूसरे स्थान पर हैं, लीड कर रही हैं अभी इस टाइम कीर्ति चौहान 4.19 के साथ टॉप।
Strong girl from Andhra battling it out with the local two girls, Tripti and Kirti. Let's see a response. Has she got a good one in? It's a fair jump, but she's not too excited. Let's see what it reads. Up it comes, 3.96. और कीर्ति चौहान 4.19 के साथ अब तक बेहतरीन प्रदर्शन कर चुकी हैं। क्या और कुछ बेहतर देखने को मिलेगा? That seems another good jump. Kirti battling it out. She wanted to better her performance from the recent Asian Games where she couldn't get a medal, and looks in control of this competition, currently leading with 4.19. This is a fifth jump. Has she gone further? जी हाँ, बिल्कुल फेयर था ये, लेकिन जो डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 4.26 मात्र। So that's the top jump of today, and reflected in her smile. She improved from 4.11 to 4.13 to 4.19 and now 4.26, and she's got a jump still to go. अमूल्या ईश्वरी अपने छठे अटेम्प्ट के लिए जाएंगी और कोशिश यही रहेगी कि दूरी लॉन्ग जंप की जो भी रहे, लेकिन ये फेयर रहे कम से कम। देखना दिलचस्प होगा। जी, ये भी अमान्य करार दिया गया है, बट ए हार्ट ब्रेक फॉर द अमूल्या। Amulya tried her level best, but somehow just couldn't get her run up right. And the last 2-3 steps, look, she's just not concentrating on her running, just looking at the board, making herself more conscious, and so nervously getting into another foul jump. 6 foul jumps for Amulya today. Bhavani had a last chance to get into that second spot. She was just 1 centimeter behind Tripti. But now she has to be satisfied with the bronze at 4.12. Tripti's got 4.13 and Kirti has got the gold with 4.26, provided Tripti does not beat that mark. जी हाँ, ये देखना होगा जंप। तृप्ति राजपूत फेयर जंप है। स्कोर का अपडेट होने का इंतजार हम सभी को देखना होगा। क्या Starting with the men's 400 meter run T13 category,
the winner of the bronze medal at Khelo India Para Games representing Haryana. Please put your hands together for Ashish. I would request Dr. V.K. Dabas sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Now the winner of the silver medal at Khelo India Para Games representing Haryana. Please put your hands together for Subodh Bhatt. I would now request Sunita ma'am to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, ma'am. Finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games 2023 representing Himachal Pradesh. Please put your hands together for Avnil Kumar. I would again request Dr. V.K. Dabas sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Requesting the dignitaries and winners to gather in front of the podium for the official photograph. Many congratulations, achievers. We thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you so much. Women's long jump, T63, T64. Women's long jump, T63, 64. Looks like the athletes have some queries from the officials, getting something clarified. It's important to be aware of the rules. And it is better to ask than to regret later, especially because this is early part of their career. The foundation in terms of knowledge and understanding of the sport, it's just, getting built in. So for these youngsters, I think, Rupinder, it's really important to understand and ask. And that's the lineup, start list. We have one player from Haryana, Pooja, one from Rajasthan, Santosh, and one each from Delhi, Andamans, and Gujarat. And it seems only 2 have reported as of yet. And that's what the query would have been. If there will not be 3 people, will they hold the event or not? So the officials clarified they will hold the event, but in such a case the rules say
that if there are only two participants, then one will be awarded the medal. Yes. And we see that's Thakur Nisha from Gujarat, and the other player is M. Bhavani from Andaman and Nicobar. And both of them have this query from the officials. The officials are calibrating the pit and the start point. What do you, Virendraji, what do you think of the participation from far-flung areas of India? Like we saw even yesterday, we had participants from Andaman and Nicobar, even today. And that's what, that's what being inclusive is all about, because that is the real participation from the mainland and all the island regions of India. बिल्कुल दीपक, आयोजन सफल तभी होता है, खासकर नेशनल लेवल का कोई भी आयोजन, जब देश के कोने कोने से पार्टिसिपेंट हमें देखने को मिले, बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिले। अंडमान निकोबार भारत का अभिन्न अंग है और वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनका पार्टिसिपेशन, नॉर्थ ईस्ट का पार्टिसिपेशन, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व पश्चिम, मध्य भारत, और ये Now we are switching on to the event which is going outside of the main stadium arena, which is men's discus throw F56. We have talked about this. The players were prepping up, but now we are back again to F56. We saw Sake Babu participate. And this is a player from Tamil Nadu. We have seen Prakash V play, and this is Anthony KJ. So Anthony KJ from Tamil Nadu, senior player, working on the grip of the discus. It's all about the torso, this event. All about the torso, the potential energy that you can muster up to throw the discus in such a way that it attracts minimum distortion from the air. Okay, looks like the discus got stuck somewhere in the net. And the volunteers are there to help him. Help him with his posture, with his seat. And that Somveer that you see in black jacket, helping the athletes. He's been out there in the field since yesterday, very actively. And especially the volunteers as well. Okay, time to be out of the field, out of the purview of the discus throw. Anthony is ready. And sometimes I've seen Rupinder that
a few players rely on that jerk, that sudden jerk in the torso, and some players, they would do a proper follow through where the body is almost 360 degree, the torso is 360 degree complete. What do you have to say about this? Obviously, the well trained people do the correct technique, and the ones who have just taken to the sport probably rely too much on their strength, give it a jerk, hoping that it will go for a long distance. But once they are in the sport for long enough time, they will learn and graduate into a smooth motion which will give them a better distance. Anthony playing with the discus, getting up. And just for the information of the viewers, F56, it is related to the, it's for athletics, field athletes. Available movement affected to an increased degree from the top of the legs down to the feet. So from the top of the leg to the down of the feet, or the total absence of limbs. So what is permissible in this event is a full range arm movement close to optimum sitting height. And it could be either, so you will see that this category is there in javelin, discus, and here we are looking at the discus throw, but sometimes the players, you will see the same player playing in either javelin or in discus throw. So don't be surprised if you see Anthony tomorrow participating in javelin. And Anthony trying his level best, keeping the volunteers on their toes. And the aim here is to fling it as high up in the air as possible. And his first attempt was his best one, 25.90. Third attempt was an invalid attempt.
F56 is the category where we will see Yogesh Kathunia also play. He is one celebrated player in this event, hailing from Haryana. And we have an optimum participation from all these states in the discus throw F56 event. Andhra Pradesh, Uttarakhand, Tamil Nadu, Bihar, Haryana. Delhi. प्रकाश वी 33.91 मीटर के साथ टॉप पर बने हुए हैं। तमिलनाडु के उत्तराखंड के हेमचंद्र 33.59 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर। साके बाबू तीसरे स्थान पर हैं 28.97 मीटर के साथ। And we see that some of the elite players, them skipping the Khelo India Para Games, probably because they want to focus more on the upcoming Para Games in Paris. And I think, Rupinder, that from some perspective that could be a wise decision, because when you are competing in an active event, you also expose yourself to risks of injury. So if it's permissible for athletes, if it's not a mandatory participation, then they may skip, considering all the factors. Absolutely. It's a question of load management, and after having finished a long season, they're looking at an active rest period, rejuvenation with their family before they come back in a month's time to concentrate for the Paris Paralympics. Do you think, Rupinder, there is a season of athletics? Like, when you have this winter just coming over, the transition when it's neither too hot nor too cold, especially for almost tropical regions like India. Do you think that sometimes is there any particular time of the year where it is best suited for para-athletics or athletics as such? Well, you have to get yourself tuned to the international competitions. Now, the international competitions mainly happen in Europe, and the best time for competing in Europe, in which competitions are organized, is in our summer months. So our summer months are not conducive for our athletes, but we have to get used to it. So this has been a continuous process and has been done by the Indian Athletics Federation and the Paralympic Federation very successfully. Because I remember 50 years ago when I started athletics, athletics in India only existed from October to February, because after that it became too hot and everyone just sat at home. And that's a good observation. You have to align with the international events that are happening. But as you rightly pointed out, athletics in summer of India, especially the summer of the northern India, that's excruciating, and saying that with experience, because the Paralympics in 2020, they started here in India, as in the selection and the other activities, they started around the month of June, and in Delhi, June can be torturing because of the heat, and the players, they are exhausted out in the open. But you have to, follow the calendar of the
of the events internationally. And while the men discus throw F56, the players are changing. Inside the arena, we have the women's long jump event underway. And we have inside the stadium, we have two athletes in the high jump category. In the long jump category, apologies. And जी हाँ, ये लॉन्ग जंप right, so that's women's long jump. जी हाँ, निशा ठाकुर लॉन्ग जंप T63 and T64. फेयर जंप निशा ठाकुर T44. देखिए बहुत बढ़िया स्टार्ट लिया और ये सक्सेसफुल लॉन्ग जंप। जी हाँ, 2.75 मीटर की दूरी तय की है। और अब एम भवानी आंध्र प्रदेश अंडमान एंड निकोबार की। Only 2 women have reported. निशा ठाकुर और एम भवानी के बीच में टक्कर चल रही है और रूल्स के मुताबिक एक मेडल यहां डिसाइड किया जाएगा। फाइनल मुकाबला है ये। एम भवानी अंडमान एंड निकोबार की और निशा ठाकुर गुजरात की। लॉन्ग जंप का यह मुकाबला है। बहुत बढ़िया तीन 3.02 इस बार सक्सेसफुली डिस्टेंस कवर किया है लॉन्ग जंप में। So Bhavani becoming the first girl in this 2 women event T63-64 long jump to cross 3 meters. And let's see how Nisha Thakur of Gujarat responds to this. ये फेल अटेम्प्ट ठाकुर निशा गुजरात की। और अब एक बार ये देखिए, बिल्कुल अभी तक का बेस्ट इनका जो पहला प्रयास था वही है। 2.86 मीटर की दूरी। So this event is happening. This event is happening back to back, where we have only 2 players. M. Bhavani from Andamans. Good jump.
Now we have Thakur Nisha prepping up. M. Bhavani, 3.02 best so far. 207. Thakur Nisha from Gujarat. .86 best so far. तेज शुरुआत की है और बिल्कुल फेयर ये जंप है। चौथा अटेम्प्ट इन्होंने किया है। देखिए सधे हुए कदमों से बढ़िया फेयर जंप। चौथा प्रयास 2.78। So Bhavnani leading this race with 3.02 meters. We're in the fifth jump now. 2 jumps left for both the girls. Obviously, because it's 2, they are coming back for their next attempts very soon. So she's requested for a break, having a sip of water, calming herself down before a 5th attempt. Do you think, Rupinder, that having only 2 players in the competition gives you that comfort? Or does it intensify the anxiety? Both ways, I guess. Being 2, you feel that you only have to beat 1 to get a medal. And the other negative part of it is you have to be jumping soon after each of your jumps, because as soon as the other girl competes, it's time for you to get back for your next jump. So it's either gold or nothing. We can't say nothing. This exposure will hold them in good stead. So it's a learning curve, whether you win or lose. And If you win, you go back with a medal. If you lose, you go back with an experience. That's right. So the experience is anyway have to be there. And Thakur Nisha looks like that she's under a little bit of stress. She's going to pull herself back, be in that posture, accelerate, and there you go. I think she looks tired. She's staggering. जी हाँ, सधे हुए कदमों से शुरुआत की। एक फेयर जंप के लिए लॉन्ग जंप, और 5वां ये प्रयास था इनका। दो 2.63 मीटर, और ये एम भवानी 3.02 मीटर के साथ लीड ले चुकी हैं। बेब नंबर 103। 2 ही खिलाड़ी इस मुकाबले में हैं, एम भवानी और ठाकुर निशा, अंडमान एंड निकोबार वर्सेस गुजरात। एम भवानी छठा प्रयास अपना। फेयर जंप है ये। निश्चित तौर पर अपने प्रदर्शन से खुश होंगी यहां पर। देखना होगा छठे प्रयास का। ये देखिए बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत की थी, और 2.73 मीटर जो पहला इनका
स्कोर है 3.02। वो मेडल के लिए काफी है। अभी देखना होगा, एक प्रयास और बचा हुआ है ठाकुर। और ये अब डिस्कस थ्रो। So Yogesh Kathunia is here, silver medalist in Paralympics. And Rupendra, I had interviewed him before Paralympics just to check on his health, the preparation, the diet regime, workout that is to be followed. And he shared some tips for success, and one of them was to be cool-minded. And you can see that he's stretching it out. An international level player is still here. F56 men's discus throw. Born to a soldier with the Indian Army. At the age of 9, developed Guillain-Barré syndrome. Army public school, passed out, where his father was in the army. He served at the Chandi Mandir cantonment. And his mother actually learned physiotherapy to ensure that Yogesh is getting the kind of treatment that it deserves. And within 3 years, at the age of 12, he regained the muscle strength to walk again. He went to KMC in Delhi, and furthermore, he joined the Para Games. And he set a world record in F36 category, by the way, by throwing the disc to 45.18 meter. So he's already a world record holder once in 2018. And at the 2018 World Para Athletics European Championships, again he set up a world record. And the rest is the story that we know. Recently in Paris, in the World Championships, he won a silver medal. And here we see him perform. You can see the quality of the throw. It's gone up really, really high. And that's where, you can see Rupinder and Virender, the difference between an elite international player who has, gone through that training, that rigor, that international exposure. And you can see that it's 40.09. Still slightly below his world record performance back in 2018, but still good enough. And see the rotation of the disc is very synchronous, and that's what is expected of an elite player. जी हाँ, योगेश कथुनिया मेडल जीत चुके हैं पैरालंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और अब यहाँ पर भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने 6 अटेम्प्ट पूरे किए। और जो बेस्ट अभी तक नजर आया है वो है 40.09। और ये देखना दिलचस्प होगा, ये छठा इनका अटेम्प्ट था। तीसरे प्रयास में 40.09 मीटर की दूरी तय की थी डिस्कस थ्रो से। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में योगेश कथुनिया, हरियाणा का ये खिलाड़ी। शॉट पुट women,
पूनम शर्मा हरियाणा की। शॉट पुट के इस मुकाबले में इससे पहले संतोष को हमने देखा था 6.27 मीटर के साथ बढ़िया प्रदर्शन, और अब पूनम शर्मा हरियाणा की अपने 6 अटेम्प्ट लेते हुए ये 6 मीटर के 7 मीटर के आसपास ऐसा लगा है रिबन पे टच हुआ है, तो 7 देखना दिलचस्प, क्या 7 मीटर की जो दूरी है वो पूरी कंप्लीट की है। इसमें पावर के साथ साथ टेक्निक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। 6.99 लगभग 7, बहुत बढ़िया प्रदर्शन हरियाणा का। And Poonam Sharma, along with Sharmila, both players from Haryana, they have already represented India at the Commonwealth Games in 2022. And they, again, come with international experience. In this F56, 57 category, Poonam Sharma is F56, Sharmila is F57. Both of them have had international exposure, play for the same state, have traveled, for the Commonwealth Games. And let's see if and in shot put, Rupinda was talking this morning, India's famous player Tejinder Pal Singh Toor, who has been at the forefront of shot put, although he plays from the able-bodied side of athletics. But there are, some players who have brought fame to this event. And okay, so here we see Poonam Sharma is leading 6.99. And Sharmila on the opposite end, I think she did not attempt, or is yet to attempt. And Mir Sadika 6.89, Poonam Sharma leading from Haryana. एक बार फिर डिस्कस थ्रो का एक्शन। डिस्कस थ्रो में अभी जितने भी मुकाबले हमने देखे हैं उसमें पहले अटेम्प्ट के बाद लगातार जो अपना परफॉर्मेंस है उसको सुधार में करने का जो सिलसिला है वो क्या यहाँ भी कंटिन्यू रहेगा, वो देखना दिलचस्प होगा। That's Pappu Yadav. F55 discus throw. We saw Vedpal earlier. We also saw Anthony playing in the same category prior to this.
Muthuraja. And now see Pappu Yadav from Uttar Pradesh. He's waiting for his disc. Thus, the disc needs to be checked by the officials before it is handed over. And I think Rupinder, some of the participants they definitely bring their own disc, but I think it is either checked, recalibrated, or they are allowed to use only the officials given disc. Yes, the discs have to be submitted. Officials check it and they put it into a common pool of approved ones. And it is your luck if you get your own discus to throw with. But In this category, currently, I think Muthuraja of Tamil Nadu in the lead with 32.84 and Vedpal second with 32.08. Yes, Muthuraja is leading this. And I think what sort of a psychological effect having your own tool, it's like having something from your own arsenal in your hand, and you get used to the touch and feel of your own discus. But psychologically, what do you think? What kind of an impact having a different discus than yours has on the performance of a player? It's almost like the home and away matches. India playing on their turning tracks against playing in England when the ball is swinging. So obviously it's a benefit, and the coaches should ensure that their calibrated discuses will get checked and approved, and their ward will have the benefit of throwing with his own discus. So Pappu Yadav is keeping himself warm, using the chalk to have that grip. Okay, so his attempt, Pappu Yadav's attempt is done. Now there will be a switch over.
Kumar. Earlier we saw Yogesh Kathunia. Now we have Ramanuj Kumar from Bihar going for his 6 attempts. And as you can see, that's what F56 category is all about, where we have impaired limbs. The player needed some help, required some help in getting strapped onto the chair, and he's taken a grip. And what a powerful throw. That was really powerful. Young, strong player Ramanuj from Bihar. रामानुज कुमार बिहार के खिलाड़ी लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रयासरत। डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी का ये मुकाबला, फाइनल मुकाबला। योगेश कथोनिया 40.09 मीटर के साथ टॉप पर बने हुए हैं। अभी तक इनका बेस्ट जो आया है वो आया है दूसरे प्रयास में। 33.05 मीटर की दूरी तय की है, लेकिन उससे पहले हम देख चुके हैं प्रकाश वी को, तमिलनाडु के खिलाड़ी, 33.91 मीटर। इनके पास अभी भी मौका है, 3 प्रयास अभी बचे हुए हैं। अपनी बॉडी स्ट्रेच कर रहे हैं, खोल रहे हैं, जानते हैं जितना बढ़िया फ्लो होगा, मोमेंटम होगा, परिणाम भी उतना ही बेहतर होगा। रामानुज कुमार बिहार के इस मुकाबले में साके बाबू आंध्र प्रदेश, रामानुज कुमार बिहार, कुलदीप सिंह दिल्ली, योगेश कथुनिया हरियाणा, एंटनी केजे तमिलनाडु, प्रकाश वी तमिलनाडु, वीरभद्र सिंह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हेमचंद्र। And that's a really impressive feat of strength, Virender. And look at the quality of the throw, and it doesn't look like that we are looking at para athletics by any standard. Yes, the distance of the throw could be less, but the quality of the throw and the power which is being utilized here, that is nowhere less than any other sport that you see. जी हाँ दीपक, आजकल जो सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलती हैं, जो कोचिंग खिलाड़ियों को मिलती है, ये उसी का परिणाम है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मीट करने के लिए जो एफर्ट किए जाते हैं सरकार की ओर से, खिलाड़ी की ओर से, कोचिज की ओर से, उसी का ये परिणाम, बेहतरीन प्रदर्शन। चाहे वो डिस्कस थ्रो हो, जैवलिन थ्रो हो, शॉर्ट पट हो,
ट्रैक के इवेंट्स हों, जो प्रदर्शन देखा है यहाँ पैरा गेम्स में, आज दूसरा ही दिन है लेकिन खासा प्रभावित किया है खिलाड़ियों ने। और इस बार ये बहुत बढ़िया फॉलो थ्रू के साथ थ्रो किया है। जानते हैं रामानुज कुमार जो टक्कर है वो है योगेश कथुनिया से, तो अपना जितना बेहतर है वो करने की कोशिश, सारी ताकत झोंकते हुए, बढ़िया तकनीक देखने को मिल रही है। इसी के साथ ये 6 अटेम्प्ट लगभग पूरे हो चुके हैं, रिजल्ट आना बाकी। रामानुज कुमार F56 में कंपीट करते हुए डिस्कस थ्रो अपने 6 प्रयास कंप्लीट कर चुके हैं। तैतीस 33.48 जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही थी, छठा प्रयास, और यहीं से बेस्ट भी देखने को मिला है मोस्ट ऑफ द केसेस में 33.48। रामानुज कुमार बिहार के सबसे बेस्ट 33.48। और ये फाइनल रिजल्ट, योगेश कथुनिया 40.09 मीटर के साथ पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर प्रकाश वी 33.91 मीटर के साथ, और तीसरे स्थान पर हैं उत्तराखंड के हेमचंद्र 33.59 के साथ। तमिलनाडु के हैं प्रकाश वी, हरियाणा के योगेश कथुनिया और उत्तराखंड के हेमचंद्रा। रामानुज ने बहुत बढ़िया किया लेकिन चौथे स्थान पर ही हैं 33.48। जी हाँ, अपने छठे अटेम्प्ट में 33.48 रामानुज कुमार बिहार के चौथे स्थान पर रहे। दीपक, And there was the almost a final tally where you see a very clear distinction and difference between elite level players and those players, you know, who are just coming up the curve. You have someone like Yogesh Katunia achieved the 40-meter plus mark, and right below him you had someone with 33 meters. So that's Virendra, that's what I was talking about in terms of international exposure, having played in international events like Asian Paralympics, and that clearly, you can clearly see that in the final performance. जी हाँ, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जब तक सभी पार्टिसिपेंट अपना प्रदर्शन नहीं कर लेते तब तक ये कहना मुश्किल है कि ये फाइनल रिजल्ट है। फिलहाल जो स्टैंडिंग है वो यही है। पहले नंबर पर बने हुए हैं योगेश कथुनिया, और अब
अगले प्रतिभागी खास बात डिस्कस की यही, ये 6 प्रयास आपको मिलते हैं और वीरभद्र सिंह उत्तर प्रदेश के, क्या ये जो स्टैंडिंग है भी इसमें कुछ फेर बदल करने में कामयाब होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। Well, Virendra, since yesterday we have been seeing that the underdogs have been absolutely, snatching the podium away from some of the favorites. And I wouldn't be surprised if we see anyone from the players who are left to attend yet, they coming up and upsetting the favorites. We have seen that. But obviously, specifically talking about discus throw in this F56, 40 meters is a very high mark. But you can't say till the time you have seen it. और जो बॉडी लैंग्वेज है वो यही कह रही है वीरभद्र सिंह की कि जी हाँ, मैं सिर्फ यहाँ प्रदर्शन के लिए नहीं आया हूँ, मैं मेडल के लिए भी आया हूँ। बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस और अच्छी हाइट। अब डिस्टेंस एक बार चेक करना होगा। ये गए हैं चेक करने के लिए। जो थ्रो होता है उसके तुरंत बाद चेक करने के लिए पहुंच जाते हैं ऑफिशियली। देखिए बहुत बढ़िया थ्रो था ये भी। क्या थ्रो है, वाकई तारीफ करनी होगी। वीरभद्र सिंह उत्तर प्रदेश के पहले दोनों अटेम्प्ट जो हैं वो फाउल करा दिए गए हैं। तीसरे अटेम्प्ट का भी रिजल्ट आना बाकी। कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं और अगर आप उन पे खरे नहीं उतरते हैं तो आपका जो अटेम्प्ट होता है उसको फेल करार दिया जाता है। और यहाँ पर दोनों ही स्टार्टिंग में अभी हमने देखा था लॉन्ग जंप में भी अमूल्या अपने सभी प्रयास उनके अमान्य करार दिए गए थे। जी हाँ, अपने अगले प्रयास के लिए तैयार वीरभद्र। देख रहे हैं कि शायद एरिया होता है निश्चित, अगर उसके बीच में ही आपकी डिस्कस होगी तो ही आपको सही माना जाएगा आपके थ्रो को। और यहाँ देखना होगा इस थ्रो का क्या रिजल्ट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी में 36.02 अपने तीसरे अटेम्प्ट में। So, Veerbhadra Singh, 2 of his attempts nullified. And like you were mentioning, Virendra, some of the technical aspects are really critical because you are assigned a particular category because of a technical reason. And if that condition is not met, specifically in F56,
if any of the limbs, if the technical officers they observe any discrepancy in their movement, which should not be there according to the classification as determined by IPC, then you stand to be disqualified, or that particular attempt can be disqualified. And I've seen medals being revoked, to be honest. जी हाँ, लेकिन इस थ्रो के साथ ही वीरभद्र ने जो हलचल मचा दी है, चार्ट जो था अब तक टॉप कर रहे हैं योगेश कथुनिया, लेकिन दूसरे या तीसरे स्थान के लिए निश्चित तौर पर दावेदारी ठोक चुके हैं वीरभद्र सिंह। और अगर इम्प्रूव करते हैं तो क्या टक्कर दे पाएंगे योगेश कथुनिया को? बॉडी लैंग्वेज फिलहाल यही कह रही है कि जी हाँ। ये देखिए, वो स्टार्टिंग में 2 फाउल जरूर हुए हैं उनसे, लेकिन जो थ्रो है वो दोनों ही बहुत बेहतरीन थे और तीसरा थ्रो कामयाब रहा। 36 मीटर से ज़्यादा की दूरी तय की इनकी डिस्कस ने और अभी भी अपने बुलंद इरादों के साथ थ्रो कर रहे हैं। जब तक छठा प्रयास नहीं आ जाता, रिजल्ट नहीं आ जाता, कहना मुश्किल कि कहाँ स्टैंड करते हैं टेबल में। पॉइंट्स टेबल अभी फिलहाल जो टॉप है वो है योगेश कथुनिया पहले स्थान पर और प्रकाश वी तमिलनाडु के वो भी रेस में बने हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये 36 मीटर से ज़्यादा की जो दूरी तय की है तीसरे प्रयास में, वीरभद्र सिंह ने, निश्चित तौर पर दावेदारी तो मेडल के लिए इनकी बन ही गई है। Veerbhadra Singh from UP, 36.24, inching in closer to Yogesh Kathunia's performance, and looks solid. Very strong upper body, flaring muscles of the arm and the shoulder, because those are the muscles which are required. The traps are strong. Look at the quality of the disc. It's not disheveled, and his expression says that he could do better. Certainly not happy. जी हाँ, टोटल 6 अटेम्प्ट, पहले 2 अमान्य, छठा भी अमान्य, लेकिन ये जो 36.24 का स्कोर इन्होंने यहाँ किया है, निश्चित तौर पर मेडल की दौड़ में तो इनको खड़ा कर ही दिया है इस अटेम्प्ट ने। Yes, at least a podium finish. जी हाँ, बिल्कुल। अभी दूसरे स्थान पर आ गए हैं, प्रकाश वी को तीसरे स्थान पर धकेल दिया है और हेमचंद्र अब चले गए हैं चौथे स्थान पर। और जो इससे पहले रामानुज बिहार के थे चौथे पे, अब वो चले गए हैं 5वें पर। तो ये 8 खिलाड़ियों तो टॉप किया है योगेश कथुनिया ने 40.09 के साथ। So another outstanding discovery today. Veerbhadra Singh from Uttar Pradesh hurling the disc 36.24, ruffling some feathers with Yogesh Katunia, who has been an undisputed champion in India and also at the international levels. And now the competition will hot up, and we hope both of them will improve above 45 meters, which is the current record in the name of Yogesh Katunia. And I think that's the achievement of Khelo India Games, to pick up those players who can now be in the line of succession. Because to be fair, you want a healthy line of talent across all the disciplines, and Khelo Games actually provide that line of succession. So to my understanding, in that attempt, it has been absolutely successful. Definitely, we've seen brilliant talent all over. They may not have won medals,
but they have impressed with the kind of potential they possess in their forced exposure to such a prominent games like the Para Khelo India Games, and this holds very good stead for India in the future at the Paralympics, at the Para Asian Games, and like the Honorable Sports Minister said, he's looking for at least 200 medals in 2030. Remember, we got 111 medals at the recent Asian Games. So it's a possible projection which India can achieve with the kind of talent that the first Khelo India Para Games has thrown up. जी हाँ, कुलदीप सिंह दिल्ली के क्या ये खिलाड़ी भी वीरभद्र की तरह कुछ फेर बदल करने में कामयाब होगा? करंट स्टैंडिंग के हिसाब से गोल्ड है योगेश कथुनिया के लिए और वीरभद्र के लिए सिल्वर। क्या ये दूसरे स्थान पर फिनिश करने में कामयाब होंगे या फिर ब्रॉन्ज के लिए जाएंगे, या फिर जो मेडल टैली अभी तक डिसाइड हुई है वो स्टेटस कोई स्थिर रहेगी, जो कि त्यों बरकरार रहेगी, लेकिन जो मुस्कान है चेहरे पर वो यही बता रही है कि जी हाँ, बहुत बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा, अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकाबला है क्योंकि पैरालंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, खासकर वर्ल्ड चैम्पियनशिप और पैरालंपिक में मेडल हासिल करने वाले योगेश कथुनिया भी इस कंपटीशन में है, तो चाहेगा हर खिलाड़ी यहाँ पर कि आप चैंपियन को हराएं और नए चैंपियन के रूप में अपनी पहचान बनाएं। And that's right, because as I mentioned earlier, it's all about creating that pipeline of talent. And whether that's Yogesh Kathunia, whether that's Simran Vats, whether that's Devarshi Sachan, Varun Bhati, Pradeep Kumar, we have seen new faces, fresh talent coming up, all encouraged by their local state level authorities to come and participate. And I think participation of Paralympians and Asian Games participants in itself has provided that push to players to come in and participate at such a grand event, because unless they come in and show their talent, they would not be considered like a fit talent for the pipeline. So if we need to aim for that 200 medals by 2030, then I guess the amount of talent that we put through that pipeline, that also needs to be massive. जी हाँ, अपने होम ग्राउंड से दिल्ली के कुलदीप सिंह, और जो ये थ्रो है वो यही बता रहा है, कॉन्फिडेंस तो, कि हलचल निश्चित तौर पर हो सकती है। जो अभी टेबल है, स्टैंडिंग है प्लेयर्स की, देखना होगा कितने मीटर अचीव किया है अपने प्रयास में, पहले प्रयास में। जी 25.81 लग रहा है, ऐसा दीपक के चेंज देखने को मिलेगा, और बहुत बढ़िया एक के बाद जो एक डिस्कस थ्रोअर आए हैं उसी तरीके से क्रम से सुधार भी देखने को मिला है। Yes, absolutely. This event has not disappointed. Kuldeep Singh from Delhi, again one of the most powerful players that we have seen for this event. And look at that aggression on the face. I think that's really important. 28.83, not a bad start, I would say, because the first one was 25.81. Still got at least 4 more attempts. So if he does not make any non-legal
or any false attempt, then I think he has got a chance to at least be a little closer to 35, or maybe even exceed 36. 36 से अगर ये अब हो गए 36.24, तो जो वीरभद्र सिंह है करंट सिल्वर मेडल के दावेदार, ये उनके जो स्टैंडिंग है उस पर कब्जा करके उनको धकेल देंगे तीसरे स्थान पर। और यहाँ कॉन्फिडेंस यही कह रहा है कि रिलैक्स सिपिंग। जी हाँ, ये देखिए प्रोग्रेसिव है अभी तक 29.30 मीटर की दूरी तीसरे प्रयास में। क्या बढ़ा के इसको 36 से आगे पहुंच पाएंगे, देखना दिलचस्प। Let's see. I think he has got that in him. In fact, all the players have that. It's just about whether you can show that right there at the moment. Continuously tightening the belt, because the firmer it is down the limb and the trunk, the better is the throw. One thing definitely is there about this category of throws that we've seen, whatever may be their reduction in mobility in the lower body, they've done a wonderful job with the upper body development. All of them are looking such wonderful people. If we don't look at the lower limbs, they are much better than many of the able-bodied discus throwers. So the work has been put in, the technique needs to be polished a bit. ये भी थ्रो शानदार था, लेकिन कितना शानदार वो तो रिजल्ट देखकर ही पता चलेगा। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। 29 इसका अमान्य करार दिया गया है चौथे प्रयास को। अभी भी 2 बचे हुए हैं। वो जो एक लाइन होती है दोनों साइड, अगर आप उससे बाहर आपकी डिस्कस लैंड करती है तो वो प्रयास आपका फेल करार दिया जाता है। और यहाँ अपने 5वें प्रयास के लिए जाएंगे कुलदीप सिंह, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है। उत्साह में थोड़ा सा बैलेंस इस बार। ये बढ़िया थ्रो है, क्या वैलिड है देखना होगा। हाइट अच्छी थी, दूरी कितनी है, क्योंकि हाइट मैटर नहीं करती है, यहाँ डिस्टेंस मैटर करता है। हाउ लॉन्ग you travel with a discus, the better chances to get medal. .81 स्टिल प्रोग्रेसिव, लेकिन मेडल की दौड़ से बहुत दूर। But a very good competition this has been. Very high standards. 5 of them have gone above 30 meters, and of course Yogesh leading that with 40.09. और इसी के साथ कुलदीप सिंह के 6 अटेम्प्ट पूरे हो चुके हैं। बेस्ट इनका रहा है 31.00 मीटर।
So performances continue to be of the highest quality here at the first Khelo India Para Games, and many new faces have come to the fore. And that's what the result looks like at the end of the men's discus throw F56. Yogesh Khatunia, 40.09 gold. Veerbhadra Singh, Uttar Pradesh, 36.24 silver. Prakash V, Tamil Nadu, 33.91 the bronze, but worth mentioning even fourth, 33.59, fifth, 33.48, and sixth, 31 meters. Tremendous competition. जी हाँ, खासा प्रभावित किया था वीरभद्र सिंह ने। दूसरे स्थान पर स्थिति छलांग लगाई थी। उससे पहले जो लीड कर रहे थे योगेश कथुनिया, प्रकाश वी, हेमचंद्र, और दो खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए वीरभद्र ने सिल्वर मेडल की अपनी दावेदारी को पुख्ता किया, कंफर्म किया सिल्वर मेडल अपने लिए। डिस्कस थ्रो F56 कंप्लीट। मेंस 400 मीटर रन। लेन नंबर 1 में है मदन, लेन नंबर 3 में है तेमारा सैंतो आंध्र प्रदेश के, मदन है हरियाणा के, और लेन नंबर 5 में है रवि कुमार कर्नाटका के। 400 मीटर रन। गाइड की साथ दौड़ते हुए लेन नंबर 3 में तिमारा सैंत्रो आंध्र प्रदेश के, लेन नंबर 1 में मदन हरियाणा के, और लीड लेते हुए लेन नंबर 5 में रवि कुमार कर्नाटका के। जी हां, लेन नंबर 1 में कंप्लीट कर लिया है। 284 मदन हरियाणा के, 1 मिनट और 13 सेकंड के साथ, 0.013 सेकंड के साथ पहला स्थान। तेमारा सैंत्रो आंध्र प्रदेश के 1 मिनट 5.15 सेकंड के साथ दूसरा स्थान, और रवि कुमार लेन नंबर 3 से 1 मिनट 7.99 सेकंड के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। 284 बिब नंबर मदन हरियाणा के, पहला स्थान। Another athlete who trains at the Nehru Stadium, Madan, coached by Amarjeet Singh, gets a golden double. He won the 100 meters in the T11 category yesterday. Today he's completed a double by winning the 400 meters. So we've had 3 doubles since the morning. Ankur Dhama, 15.5. Bhavesh, T13, 15.5. And now Madan, 100, 400. And of course, Simran, 100, 200 in the women's T11, 12. And that's a beautiful aerial view of the Grand Jawaharlal Nehru Stadium right from the top. Looks like a blooming flower. And why not? The beauty of the events, the participation of the players, and community as such. So the day started with 200 meter event, 1500 and 5000 track events with long jump, discus throw, and many more such events going on.
Started in the morning with Ankur Dhama T11, repeating his goal performance from yesterday, translating it to another goal performance today in 5000 meter. Then again in 5000 meter T13, Bhavesh Bhatt clinching 2 goals, one from yesterday, another one from today. Women's 200 meter T11, T12, Simran Watts double gold, one yesterday, one today, and a participation from grassroots levels. Athletes from Andaman, from Assam, young players like Anismita Kotwar, participation of elite athletes Simran Watts, Yogesh, Pradeep, Devarshi, Monu Gangas, Nishad, Paralympians and Asian Game leads. It's all happening. And the talent is giving way to more such, Okay. Moving on to long jump, men's. That's a T12 men's long jump event. That's a T11 men's long jump, because you see that the players are blindfolded, although some of them can see up to 25 centimeter, which is why they have been blindfolded. You can see the guides telling them where to stand, which direction to run. And this is extremely tough and difficult, because one, the players have been blindfolded, and secondly, they need to run and jump at the optimum height, at the optimum mark. Otherwise, their attempt is going to be nullified. So for the viewers who are watching this event for the first time, just watch out for how the players tackle this difficulty. So that's the lineup. We have Vishnu from Haryana, Vinod from Haryana, Odiboina Jagan from Andhra Pradesh, Ramanji from Delhi, Jagdish Bhai Shah Parmar from Gujarat, Bhimappa Pujari from Karnataka, and Krishna Shetty from Maharashtra. Really tough job. Running itself is difficult. Then to come and jump from behind the board and get the maximum advantage of being as close as possible before a foul jump, and then the height, and then the landing. So 4 areas of difficulty that these people face, but do overcome. They practice a lot. In fact, in practice, an escort is standing in the pit and clapping so that he knows which direction to come and jump at.
जी हाँ, ऑफिशियल्स लॉन्ग जंप के ये मुकाबले की तैयारी यहाँ पर बिब नंबर सेट की जाती है जिससे पता चले कि खिलाड़ी की आइडेंटिटी और नाम बिब नंबर। और ये T11 checking the essentials, the blindfold, the chest number, and getting them to stand in position for their long jump events. The first jumper, 337. That's Vinod from Haryana. There are 7 competitors: Raman, Jagan, Jagdish Bhai, Vinod, Vishnu, Bhimappa Pujari, and Krishna Shetty. Here comes the first one. He thought he was trying it, but it has been recorded as a foul jump. So 337, Vinod of Haryana gets fouled in his first jump. Keep watching, viewers. This is a very difficult event for the T11 athletes. Escorts explaining, the athletes trying to visualize. Now the escort coming towards the pit, and he's going to clap to try and see that he comes in a straight line to the board. There he goes. And he gets what seems to be a legal jump. We'll wait for the flag. It's a white flag. So the 116. That's Jagan from Andhra Pradesh, who's got the first jump registered in this very tough event for the T11 men's long jump. जी हाँ, 4.40 मीटर की दूरी इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में तय की है। लॉन्ग जंप, एक बढ़िया जंप, पहला ही अटेम्प्ट, और वाइट फ्लैग फेयर जंप है ये। ऑडी बोयान जगन। And what a feast to the eyes, looking at Women's long the jump tactic T63 and 64. and the strategy that these This is the athletes call for they player. deploy, dependent on the sound and their sensory ability to gauge the number of steps it would take, and they take the jump from right at the spot which has been assigned. Isn't Next this up is Ramanji of Delhi, boy who practices at the stadium here. Should be familiar. Look at him pointing with his hands and getting a reassurance from the escort. Yes, you're right. There's he clapping, showing him the way. But he couldn't get out in time, and he's been red flagged too. जी हाँ, थोड़ा सा भटके अपने मार्ग से और जंप कंप्लीट नहीं हुआ, इसको फाउल करार दिया गया है। और अब समझाते हुए गाइड कि आपने कहाँ चूक की है, ध्यान रखा जाएगा। लेकिन घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि 6 अटेम्प्ट हैं आपके पास। अगर एक भी सक्सेसफुल और आप बढ़िया जंप लेते हैं तो मेडल की रेस में आप बने रहते हैं। Exactly. And one of the boys from Andhra has already shown that, and he's jumped a very creditable 4.40 meters under the circumstances for a T11 athlete. and I think it's a very narrow. That's 214 Jagdish Bhai Shah Parmar from Gujarat.
they get a very narrow window to jump. They have to stay in the lane. They don't have to cross the white mark on the track. It's a difficult event. Absolutely. Unlike the running events where they get 2 lanes to themselves and they get an escort. Here they have to do it on their own. You look at the escort clapping, showing him the way. Will he get an attempt? I think he oversteps and is fouled. So till now, 4 jumpers have tried, 3 have fouled, and 1 Jagan has got a 4.40 meter mark. Long way to go, 5 more jumps for all these athletes. जी हाँ, ये फाउल करार दिया है, ये वैलिड जंप नहीं है। बड़ा टफ रहता है कि विदाउट गाइड के रन भी लेना और फिर जंप भी करना। बढ़िया, ये हिम्मत लाजवाब, सलाम इस जज्बे को, इस हिम्मत को। But compare this to the women who were jumping in the morning. One of them was bare feet, one of them had shoes, and the other one also had shoes. None of them had spikes. But these men T11 athletes seem to be very well equipped. The escorts are there. They are all with spikes, and they are trying their level best to perform. So I think somewhere the women are not being encouraged as much as they should be. And and I just observed that for one of them, for I think Jagdish Bhai Parmar from Gujarat, the guide is also one of the athletes who participated in this morning in I think T13 event. It was 100 meter. I'm not sure 100 meter or 200 meters, but that's okay. That's Krishna Shetty from Maharashtra. Tall boy. Look at the confidence with which he is running, but he overstepped. Just letting you know how difficult it is. Out of 6, only 1 got a correct attempt in that whole group of 6 in that first jumps. And now we are coming to the second jump for each of them. And we hope many of them will make some progress, get onto the board, get a mark, gain confidence, and then try and come close to 4.40 meters. जी हाँ, मुस्कुराहट बता रही है कि कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट फेल हुआ है तो क्या हुआ, 5 बाकी हैं। कृष्ण शेट्टी महाराष्ट्र के। And you see, we can see it from the commentary box here that on the tracks, you see that the players are practicing that on every clap there is a foot. So there is a sprint on every clap. That's what they are practicing. And it almost looks like, going through a maze blindfolded. You don't know where you are stepping. You don't know how many steps you need to take. You can't count, unlike, you do a run-up count in cricket while you bowl. The first edition of Khelo India Para Games 2023. It's time for the presentation. It's something which we really can't imagine. Try getting yourself blindfolded. Is Shri Pandurang Chate, Regional Director Sai, accompanied by Shri Shanchit Tyagi, Director Sai. I would now request our ushers to guide the medal winners and guests towards the ceremony area. खेलो इंडिया, साथ में हैं हम। Starting with the men's 400 meter run T20 category,
the winner of the bronze medal at Khelo India Para Games representing Kerala. Please put your hands together for Sijo Palos. I would now request Shri Pandurang sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Now, the winner of the silver medal at Khelo India Para Games representing Haryana, please put your hands together for Tarun Kumar. I would now request Mr. Sanchit sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games 2023 representing Haryana, please put your hands together for Bhushan. I would again request Pandurang sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Now requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for the official photograph. Many congratulations, achievers. We thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you so much. .400 meters men's run T20. The podium finishers gold, silver and bronze, while the T11 battle along at the long jump pit before the beginning of the second group of jumps. Remember, there are 6 jumpers in the fray. Only one got a legal jump, and he has jumped a very creditable 4.40 meters. सर 4 बोल दीजिएगा ये प्लग के लिए भी चाय खाना हम तो खा चुके शर्मा जी को खिलाओ शर्मा जी खा चुके पेट भरा हुआ खा के और नींद आएगी बैठे बैठे नींद आ रही है मेंस शॉटपुट F57 कैटेगरी में ये मुकाबला दिल्ली के अतुल कौशिक अपने पहले प्रयास के लिए जाएंगे 7 मीटर से बहुत आगे
थ्रो लीगल है। शॉर्टकट F57 अतुल कौशिक दिल्ली के बिब नंबर 168 के साथ फाइनल। बहुत, ये 7 मीटर से भी बहुत आगे देखना है, 8 या 7.5। बहुत बढ़िया ये थ्रो है। शॉर्ट पट F57 कैटेगरी में अतुल कौशिक दिल्ली के अपने पहले प्रयास के साथ अब ये दूसरे के लिए जाएंगे। दूसरा भी हो चुका है, जी हां, 10.71 मीटर। And look at the power being exerted. Atul anyway is strongly built, very good upper body, shoulder, traps, all well built. And he just needs to translate this strength into an excellent throw, which 11.24, that's a significant improvement. Going for his 4th attempt. Looks like almost the same. And that's an almost 3 kg, 2 to 3 kg metal ball. It's not an easy throw. And he's not even breathing. He's just going for it, attempt after attempt. And this looks like a better one. I somehow get the feeling that could not this be broken up into 3 throws each to give the athlete a better chance. But Atul Kaushik is doing a wonderful job. Still improving. 11.74 in his 5th attempt. What is he going to achieve in this last one? Seems to have gone away from his body while releasing. Overall, Atul Kaushik is happy with his performance. 11.74 meters seems to be a significant distance achieved by him. So that's 11.74, his best. And to your point, it's certainly a thought that rather than having 6 attempts in one go, why not break it down to 3, give them a break, and then again 3. I guess this also has to do with the time it takes to strap a player up, and we are back in the long jump. And that's going to be an invalid attempt again. He did that in the first attempt as well. That's Krishna Shetty from Maharashtra. In the first attempt also he crossed the line and had to be stopped by his guide. And now we see Vinod coming in for Haryana. And there are players who are practicing at the back. Looks like a valid attempt. No, it's not
it's an invalid attempt. Judging from the difficulty they are facing, I thought this was a good attempt. It was. And one hopes that some more of the jumpers get some valid attempts. The Maharashtra boy has got 2 invalids. Vinod now from Haryana also getting 2 invalids. Only one boy, Jagan, getting a 4.40 meter on record. I think it's been only one player who has been able to do a valid attempt out of all the attempts that we have seen, and that's been Jagan. And this is Jagan now on the run-up, 3rd attempt. So Jagan is very consistent. No invalid attempt thus far. His guide, look at the guide. And that there is an invalid attempt. Fair enough. He's got 1 mark on the board. So he was looking to go further and overstepped on the board and got a foul attempt. Ramanji now next up with his escort, trying to guide him, showing him the way, making him raise up his hands and point towards the place where he needs to go. And facing him, the escort will also raise his hands or clap in order to give him a proper coordination. But then he needs to move out at the right time. Ramanji, T11 long jump. I think he's got a legal attempt. Wait for the flag to go up. Yes, it's legal. Now a question of how much. And then the competition begins. Yes, so Ramanji is finally, and look at the change of tactic. Ramanji probably, and that's what he and his coach have been practicing for the last 5-10 minutes. That jump before, don't jump after, and that strategy I think was successful. He jumped way before the mark, but still he has got his foot in the door. And well in the door, 4.13 as opposed to 4.40 of Jagan. So the competition is getting there as we get to the next jumper, 214. जगदीश भाई शाह परमार गुजरात के अब तक के 2 अटेम्प्ट दोनों फाउल करार दिए गए हैं और अब ये तीसरे अटेम्प्ट के लिए तेजी से निकले हैं. ये इस बार भी इसे फाउल करार दिया गया है, अमान्य, रेड फ्लैग अप. तो अभी तक के तीनों प्रयास जगदीश भाई शाह परमार के, कोशिश अच्छी थी, एनर्जी से मिटी थी, लेकिन स्टार्ट लेने में चूके, फाउल ओवरस्टेप किया. ये देखिए वाइट जो एरिया है, इससे आपको बचना होता है, इससे पहले ही जंप लेनी होती है. Definitely the toughest event we have seen. And the Maharashtra boy now coming for his 3rd attempt. 2 invalid attempts. जहां कृष्ण शेट्टी अपने पहले 2 प्रयास गंवा चुके हैं, अब तीसरे प्रयास के लिए तैयार हैं. महाराष्ट्र के कृष्ण शेट्टी गाइड बता रहे हैं कि आपको डायरेक्शन क्या रखनी है. क्लैप के इशारे से ये देखिए बिल्कुल सेट किया जाता है. इस बार महाराष्ट्र के इस खिलाड़ी की कोशिश होगी कि कम से कम फेयर जंप तो ले. लॉन्ग जंप T11 कैटेगरी. शक्तिशाली, और इस बार देखना होगा क्या ये वैलिड है. जी हाँ, ये एक वैलिड जंप है. और अब इसकी देखिए बहुत बढ़िया बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट और बिल्कुल फेयर ये जंप.
3.83 मीटर की दूरी तय की है। So very encouraging results. From 1 we've come up to 3 who've got legal jumps, and all 3 creditable: 440, 413 and now 383. ये अभी तक की स्टैंडिंग ऑब्डियाना जगन 4.40 के साथ टॉप पर है। रमन जी 4.13 के साथ दूसरे स्थान पर और विनोद तीसरे स्थान पर है 4.05 सेकंड के साथ। So reasonably good competition it's turning out to be, despite the difficulty there. 3 of them have gone above 4 meters. One is 3.83. There are 3 jumps to go. Lots of hope abiding. The confidence must have been gained with all their attempts. जी हाँ, विनोद हैं हरियाणा के। पहला जो प्रयास था वो फ्लॉप रहा था। दूसरे प्रयास में 4.05 और बहुत बढ़िया तीसरा प्रयास इनका फ्लॉप रहा था। लेकिन अभी भी 3 प्रयास बाकी हैं और हमने देखा है आज कल दोनों ही दिन एथलेटिक्स के छठे प्रयास में बहुत से खिलाड़ी अपना बेस्ट देने में कामयाब रहे हैं, तो यहाँ भी बेस्ट आना अभी बाकी। Definitely, great progress has been made from that first jump where only one jumped. Now there are 4 in the fray and 4 all satisfactory jumps, and the competition is hotting up for the medals. और ये ऑफिशियल्स कोच गाइड बातचीत करते हुए मेंस लॉन्ग जंप T11 कैटेगरी में ये मुकाबला मेडल मैच है और टॉप पर बने हुए हैं ओडिबोयाना जगन आंध्र प्रदेश के। और अब जगदीश भाई शाह परमार अभी तक अपने तीनों अटेम्प्ट गंवा चुके हैं। अब चौथे अटेम्प्ट के लिए तैयार हैं। तेजी से निकले हैं, देखना होगा क्या ये अटेम्प्ट फेयर है। जी हाँ, ये अपना चौथा प्रयास बिल्कुल फेयर जंप लेने में कामयाब रहे हैं जगदीश भाई शाह परमार गुजरात के। बहुत बढ़िया बॉडी लैंग्वेज और सक्सेसफुल जंप चौथे प्रयास में। चार 0.05 So we have 2 jumpers on 405, 1 on 413 and the leader on 4.40. So imagine from that first jump up to the 4th jump now, they have made tremendous progress. This is worth viewing. और कृष्ण शेट्टी स्टार्टिंग में अपने जो प्रयास थे उनको गवा बैठे थे, लेकिन फिर तीसरे प्रयास में 3.83 और अब चौथे प्रयास के लिए तैयार कृष्ण शेट्टी। चौथा अटेम्प्ट इनका है ये। तेजी से निकले हैं, हाइट अच्छी है, लेकिन इस बार चूके जज करने में ये जंप फेयर है, लेकिन जो दूरी है वो बहुत कम। So I think one of the coaches or his coach specifically must have spotted the strategy of the other coach of jumping before the mark, and thus he was able to at least get his name on the board
and it's 2.63 is what looks like to me, which is almost half of okay, that's Vinod from Haryana, and it's a valid attempt. Good jump. And that's 4.37. That's a good score. That takes him into the second spot, just 3 centimeters behind Jagan of Andhra Pradesh, who's jumped 4.40. Ramanji has jumped 4.13. And remember, he did it conservatively, just trying to get a legal jump in, jumping from far behind. This time he will be hoping to come closer to the board and achieve close to 4.40. Tremendous battle developing. जी हाँ, रमन जी अब तैयार है। 4.13 इनका बेस्ट अब तक आया है, और विनोद का जो पहले बेस्ट था वो 4.05 था, और उसको फिर बराबरी कर ली थी जगदीश भाई शाह परमार ने 4.05 के साथ, लेकिन अब उनका हो गया है 4.37। और अब ये रमन जी जी हाँ, ये फेयर जंप है, बहुत बढ़िया तरीके से जज किया, और ये बिल्कुल फेयर जंप है। देखना होगा डिस्टेंस कितना इन्होंने तय किया है अपनी इस जंप में। देखते हुए जी हाँ, 4.10 जो पहला इनका बेस्ट था वो था 4.13। तो कोई फेरबदल अभी नहीं होगा जी। ये है टॉपर जो लिस्ट में बने हुए हैं, ओबियोयान जगन आंध्र प्रदेश के 4.40 मीटर के साथ टॉप पर ये जा रहे हैं अपने चौथे प्रयास के लिए। फोर्थ अटेम्प्ट में क्या कुछ खास करके दिखाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। ये फेयर जंप है, और अब दूरी तय कितनी की है लॉन्ग जंप में उसको मेजर किया जाएगा। वैसे बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो जो 4 का है वो तो इन्होंने पास किया है, 4 से तो निश्चित तौर पर ज्यादा है, लेकिन क्या 40 जो है 4.40 की दूरी जो है, जी हाँ इस बार 4.30 बिल्कुल 10 पीछे रह गए हैं। उससे बढ़िया स्कोर पहले ही हो चुका है 4.37 विनोद का, तो लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी पहले नंबर पर। Absolutely, and very good consistent jumping, and he's showing what a T11 athlete can do as opposed to the others who've been fouling their first 2-3 attempts. So Jagan showing the way, Ramanji, Krishna and others following in his path, and the competition hotting up. It's 440, 437 and 413. जगदीश सारा भाई अपने, ये बिल्कुल फेयर जंप है। स्टार्टिंग के जो उनके अटेम्प्ट थे वो फेल रहे थे, लेकिन उसके बाद 4.05 की दूरी इन्होंने तय की थी लॉन्ग जंप में, और अब देखना होगा बस 5वें अटेम्प्ट में क्या डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है, और जो करंट स्टैंडिंग है क्या उसमें दोबारा हलचल मचा पाएंगे। 5वां अटेम्प्ट है इनका ये। And that's जी हाँ,
4.59. So there we get an upset. Jaggan 4.40, sitting relaxed on top, has now been pushed down to the silver with a very, very good jump of 4.50. जी हाँ, स्टार्टिंग के 3 प्रयास कुछ खास नहीं कर पाए, फेल रहा। उसके बाद 4.05 और अब ये 4.59। यहाँ ये मेंस 400 मीटर रन T12 का मुकाबला लेन नंबर 1 में है। सुंकारी दिनेश आंध्र प्रदेश के लेन नंबर 3 में है, भोलाराम राजस्थान के लेन नंबर 5 में, मोहम्मद अनस दिल्ली के, और लेन नंबर 7 में है अर्जुन भात्रा ओडिशा के। We were expecting this to be a battle between Arif and Bholaram. Arif has gone out very fast in that first 200, setting the pace. Will Bholaram be able to catch him in the last point? Bholaram coming from the inside in lane 3, Arif in lane 5. This is going to be a battle. Arif has dominated it in the first half. Will Bholaram come back? Arif hanging on. Bholaram trying to get that in, but Arif seems to be able to hang on to that and win a gold and come back from that disastrous performance at Hangzhou with a creditable timing of 54.46, which may be corrected soon. So RF is taking the lead. He has definitely, overcome the jinx. And we saw that in the morning also the determination was absolutely showing on his face. RF 54.51 and Bholaram, what a show, 54.94. And that's the conclusion of 400 meter run T12 combined event of Heat 1 and Heat 2, and both of them are congratulating each other. Bholaram, Mohammad Arif, Delhi and Rajasthan, and Arjun Bhatra 57.05 with the bronze. What a show in the 400 meter T12. जी हाँ, ये देखिए बहुत बेहतरीन कोशिश भोलाराम की, लेकिन ये मोहम्मद आरिफ दिल्ली का लोकल लेड निश्चित तौर पर डोमिनेट किया है इस रेस को पूरे तरीके से लेन नंबर 5 में। और लेन नंबर 3 में भोलाराम की कोशिश थी कि उलटफेर करें, लेकिन कामयाबी नहीं। जी हाँ, मोहम्मद आरिफ बहुत बढ़िया तरीके से लेन नंबर 5 में फिनिश किया है 54.51 सेकंड के साथ 400 मीटर की इसको रेस को टॉप। And definitely Arif has taken off his boots like he did in Heat 1. He has certainly come a long way. The first heat and the second heat, they were in the earlier part of the day, and now back to the long jump, and we are seeing some competition in the long jump. T11, that's a valid attempt by Haryana boy Vinod. And Rupinder, we were seeing that when the T11 long jump competition it started, we were probably hoping that this is how it will go, that it will be just a match of invalid attempts. But we have seen that the players, they have learned through their experience. And now it's Ramanji from Delhi. Ramanji made his mark, first attempt invalid, and now in his fourth attempt. Going for his fifth. And that should be a valid attempt. Yes, that's a valid attempt. And after the valid attempt, we are going to see
the distance, and Ramanji stuck to his earlier strategy of jumping before the mark. Perhaps, he jumped way too ahead, but nevertheless, it's 3.74, still behind what the other peers have been able to clock on the score. So Jagan, the early leader with 4.40, now pushed down to silver position with a superior jump of 4.59 by his competitor. Will be looking to make amends. Fifth jump for Jagan. And that's Jagan. That's an invalid attempt. Jersey 214, Jagdish Bhai Shah Parmar from Gujarat. Current leader of this event with 4.59. When he went past Jagan, the Gujarat long jumpers have been very impressive. We've been seeing them over the course of 2 days, and all of them in their respective categories, whether they got a position or not, they have jumped very well. And we switch on to the track for the 400 meters men's run T36. Sachin Sahu, Himanshu, Rajesh Gurjar, Dinesh Kumar, Praveen Kumar and Anubhav from Uttar Pradesh. So that's T36 track event. And we see that currently there are about 4 players in the line, although we had 7 players. And this is for athletes, for track athletes who have movement and coordination affected in all 4 limbs. From low to a moderate level, we have Sachin Sahu, we have Himanshu, Rakesh Gurjar, Dinesh Kumar and Anubhav Chaudhary. And that's a 5 players lineup. There's a reduced coordination of muscle movements. All the 4 limbs are affected in one way or the other, from low to a moderate level. And track events, especially the racing events, 100 meter, 200, 400 meters, they have been quite exciting. We have seen that the onlookers, the viewers, sitting in the stands, they've been quite excited to see the racing events, and they've been cheering them throughout. So in this one, T36, 5 competitors. Lane 3, Lane 4, Lane 6, Lane 7 and Lane 8. Sachin Sahu, Lane 3, Lane 4, Himanshu, Lane 6, Dinesh Kumar of Haryana, Lane 7, Praveen Kumar of Punjab, Lane 8, Anubhav of Uttar Pradesh. No real star amongst this lineup, but that will make it all the more interesting. And we've got a lane 5 boy coming back, Rajesh Gurjar of Rajasthan. So we've got 6 competitors now ready to compete in the 400 run T36 category.
and the competition will happen in the same way it happens at an international level. And that's been a specialization, rather one of the important features of the Khelo India Para Games, that all the events, they are following the international norms. And I must say that the technical officers have been quite strict to ensure the sanctity, the decorum, the discipline, and the rigor, the equity that needs to be followed in an event at such a level. On your marks. One, two, six, Andhra Pradesh. 279 Haryana. 414. And that's a false start. So it's an impairment of the limbs. It's not a visual impairment, which is typically under T11, 12, 13. It is T36. There they go. One can see the reduced ability in the three that have stayed behind. The others slightly better adapted. Out there on the outside lane, it looks like Praveen Kumar in lane 7. And from the inside lane, it looks like Rajesh Gujar trying to catch up. We'll just, there you see, outside on lane 7. Praveen Kumar, lane 8, Anubhav. So lane 8, Anubhav seems to be in the lead right now. And looks like he's confident of maintaining this till the end. But lane 3 has other ideas. Sachin Sahu doing his level best. Catching up with Anubhav and going past him. And the brave Sachin Sahu from Madhya Pradesh prevails in this T36 category with a time of 1:12.74, which stands correction after the electronic interpretation. All the three players are exhausted. They have literally just, lied down, laid it all bare. And look at Sachin Sahu, lane 3. What a comeback in the last few minutes. 582, Anubhav Chaudhary, Uttar Pradesh. We're waiting for the final. And yes, that Sachin Sahu clinched the gold in this with 1 minute 12 seconds and 77. And Anubhav Chaudhary 1:13.49. Sachin Sahu, what a finish. 400-meter events today have been pulsating. There has been one chap going all out from the start, another trying to chase him. Most of the races we saw up till now, the one who went out fast managed to win, but Sachin Sahu
upset that rhythm today in the T36 category, came back strongly to oust the leader who looked like he was going to win, which was Anubhav Chaudhary of Uttar Pradesh. So Madhya Pradesh prevailing over Uttar Pradesh in the 400-meter final T36 men's category. And I think now we should be moving to 400 meters T37. So while the players they come up, we are back to the long jump arena. And we have Jagan back again. Long jump T11. Andhra Pradesh lad. Looks like a valid attempt. Yes, it is, as confirmed by the referee. Now they're going to measure the distance covered. But Jagan is playing on the edge. He's not been one of those who have jumped before the white mark. So he has been, he has had that advantage of that, taking that one step. And that's a big leap. 4.59. That's Jagdish Bhai Parmar. That's also a valid attempt. That's 4.17. Jagdish Bhai Parmar trailing behind Jagan. Jagdish Bhai Parmar 4.59. Great competition there. It looks like it will go to a count back, and they will look at the second best jump of both the jumpers and then decide the positions. तो सेकंड जंप में जिसने बेस्ट किया होगा तो सर इसके तो सेकंड जंप फाउल था जगदीश भाई का सेकंड जंप Second best jump. There you go, 4.59 Parmar given the first position. Vinod 4.59. Or is it 4.49? Sorry, we got that wrong. 4.59 first, clearly. Vinod second, 4.49. And Jagan remains third at 4.40. So what a brilliant competition this developed from us calling it a very difficult event where only one Jagan could get onto the mark in that first attempt. We got 4 or 5 of them jumping well and jumping really well. 459, 449 and 440. And sitting here, I'm getting inspired. Never lose hope. We thought it was a very tough event, but they convinced us that they could do it and do it well. Yeah, the first blush reaction was that, oh, we have seen so many invalid attempts. And in a while we are going to move to
the track arena again towards men's 400 meter T37. It's about time. We have a lineup of about 6 athletes. They're settling in. T37 slightly better than T36. T36 all the limbs have been affected, and T37 moderately affected down one side, and that's a major difference. All the 4 limbs in T36 and one side, a combination of leg and arm or the trunk, one side. So the movement gets a little better, and it started. We have Kuldeep Singh from Haryana, Brijendra Kumar from Rajasthan, Sharik Ali from UP, Rakesh Kumar from Chhattisgarh, Ayushman Pandey from Telangana, Mahesh Chaudhary, Himachal Pradesh, Dhawan from Delhi, and Raman Sharma from Haryana. All competing in, and we see that there are 2 players who are streaming ahead. Ayushman of Telangana in lane 5 and on his outside from lane 7, trying to catch him up, and in the inside lane Kuldeep Singh of Haryana bursting away. And Kuldeep is looking likely, but from lane 7 comes Dhawan of Delhi to clip him, and Ayushman finishes 3rd. Kuldeep Singh of Haryana, tremendous battles. 400 has been the most exciting races today. जी हाँ, धवन ने फिनिश किया है पहले नंबर पर 59.30 सेकंड के साथ, और कुलदीप सिंह हरियाणा, कोशिश अच्छी थी लेकिन यहाँ दूसरे ही स्थान से संतोष करना पड़ेगा 59.68 सेकंड के साथ, और आयुष्मान तेलंगाना के रहे हैं तीसरे स्थान पर 1 मिनट 3.88 सेकंड. And don't be satisfied yet, because we have another men's 400 meter event in T47. So looks like, that we haven't had enough of 400 events which have been quite pulsating in using your word, Rupinder. Yes, and the surprise here is Dhawan actually pipped Kuldeep at the end. 59.30, 59.68. So what was looking to us a victory for Kuldeep was in fact a victory for the 7th lane Dhawan from Delhi. Very close race, as we've seen in all the 400s today. So the blue-vested Dhawan beating Kuldeep in the black vest of Haryana. And the next one is going to be even more exhilarating, which is T47, because we saw in T46 it's a complete, all 4 limbs are affected. T47 we saw one side being affected, and in T47 it is one arm. So either one arm is moderately affected, or the absence of the arm below the elbow. So this one is going to be very, very exciting. It's going to be very fast paced. And let's see who pips whom.
So T47 lineup is there. Anoop from Haryana, Bhavik Kumar Bharwad from Gujarat, Siddharth Bellari from Karnataka, Terkani Dilip from Andhra Pradesh, Jasbir from Haryana, Dilip Mahadu Gavit from Maharashtra, Visam Pallu Bhaskar Rao from Andhra Pradesh, Mithan from Punjab, and Nicholas Pradhan from Odisha. लगता है वो पैरालिफ्टिंग में ड्यूटी पे है ना, अंदर घुसा हुआ। किसको बोलूं? और मेरा दोस्त बल्लू सिंह रावत कहाँ गया? दिल खुश कितना लौंडों ने सिद्धार्थ से एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। आपके नीचे जाने की बारी आ गई है। मेरे नीचे जाने की किसके लिए? हाँ? कौन कह रहा है? हाँ? कौन कह रहा है? अच्छा, जाऊं? वहाँ चर्चा गर्म है। वो तो नहीं है। And this is Delhi around the Jawaharlal Nehru Stadium, enshrouded in fog. It is around 4 p.m. चोटी वाला नीला वाला ना सर गोल्ड जीता था एशियन गेम्स में। अच्छा अच्छा गुजरात का भाविक कुमार। भावेश Bhavik Kumar Bharwad. अच्छा भाविक कुमार आप लोग एथलेटिक्स पे बहुत पैनी नजर रखती हैं। स्टार्टिंग ब्लॉक्स। हाँ जा भाविक कुमार बुरा गुजरात का। क्योंकि हाथ नहीं होता ना, हाँ तो हाथ को टिकाने के लिए उसका हाथ एक कटा हुआ ना, टिकाने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट वो साथ में लगाए ना, अच्छा 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 उसके अच्छा ऊपर हाथ रख के स्टार्ट करेगा। अच्छा तो बाकी जो अच्छा हर खिलाड़ी के लिए सेम हुआ ये तो सिस्टम। अलाउड है इफ दे वांट टू यूज। हाँ वो लौंडा थोड़ा एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल भाविक कुमार देख के सीख के आया है ना। गोल्ड जीता था अभी ग्वांगझो में एशियन गेम्स में। बहुत बढ़िया। तो इसका तो सर चर्चा बनता है। अभी फिर चेंज करना होगा ना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे लेन्स, इसको तो 2 में दिखाया हुआ है। नहीं वो नंबर है लेन, अच्छा लेन ही है। Lane में number है ना? अच्छा अच्छा नहीं इसमें अलग होता है और वहाँ पे अलग हो जाता है बाद में। So that's the lineup for men's 400 meter T47. तो यही है, दिलीप महादू गविट इसका नाम है। यही है जो जीता था वहाँ। भाविक नहीं नहीं नहीं, गैविट गैविट मुझे याद है। So Anoop from Haryana, Bhavik Kumar, Siddharth, Tirkani Dilip, Jasbir, Dilip, Visham Pallu, and Mithan. And the man to watch out for is lane number 6, Dilip Mahadu Gavit. He won the gold medal at Huanzhou Asian Games in the T47 400 meter run. And look at the special equipment he's using
from his international exposure, he's gained the knowledge, and along with his blocks, he's got a raised rod on which he will place his arm, which has half of which he has lost. So he can't put it down on the track, but he will put it on this equipment placed to his right. Watch this outstanding athlete, Dilip Mahadu Gavit. Very well trained, came as a surprise to all the Indian viewers at the Hangzhou Asian Games, the 400 meters T47. And while that happens, we have the wheelchair running also getting prepared. But in the meantime, that's Siddharth Bellari. And it is Dilip's medal, which was the 100th medal for India at Asian. And that's Tarkani Dilip. So there's Tarkani Dilip and Dilip Mahadu Gavit. That was Dilip Mahadu Gavit's 100th medal at Asian. And there they go. And the boy in the second lane is also running a great race, Bhavik Kumar of Gujarat. He probably trains with Mahadu or Gavit. And there you see on the outside, Mahadu Gavit with his trademark ponytail. Dilip Mahadu Gavit, who shocked everyone with his impressive running right up to the tape. Continuous speed and endurance. Mahadu Gavit. Everyone at Hangzhou thought somebody will catch him, but he hung on. And here again, it's lane number 2, Bhavik Kumar of Gujarat, who looks like catching him. But no, Dilip Mahadu has not given them a chance. And he's come home in 51.18, which has been corrected to 51.22, marginally slower than his 49.91 seconds that he achieved at Hangzhou. 49.48 seconds at Hangzhou. And with that win, it was 26 gold medals for India at Asian. And Dilip Gavit taking a breather, slightly marginally slower than his Asian performance, but yet good enough to secure him a gold medal here, coming in from Maharashtra. And what an exhilarating sprint. And you see, that's the difference. None of these players whom you see, they have, an impairment in one of their arms, either below elbow or towards the arm. And that's what T47 is all about. Finishing for a gold.
And now we are going to prepare for men's 400 meter T53 and T54. And now we have a significant event coming in, T53 and T54 with their signature wheelchair. ये देखिए तेजी से आगे निकले थे, बहुत बढ़िया तरीके से। जो खिलाड़ी होता है बड़ा, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट, कॉन्फिडेंस और सबको पीछे छोड़ते हुए यहां पर भी गोल्ड मेडल की जो अपनी दावेदारी है, शानदार सॉलिड परफॉर्मेंस। दिलीप महादू महाराष्ट्र के पहला स्थान और दूसरा भाविक कुमार Wheelchair freshly washed and recycled. Oh,
T54 with their signature wheelchair. ये देखिए तेजी से आगे निकले थे, बहुत बढ़िया तरीके से। जो खिलाड़ी होता है बड़ा, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट, कॉन्फिडेंस और सबको पीछे छोड़ते हुए यहां पर भी गोल्ड मेडल की जो अपनी दावेदारी है, शानदार सॉलिड परफॉर्मेंस। दिलीप महादू महाराष्ट्र के, पहला स्थान, और दूसरा भाविक कुमार गुजरात के। दिलीप मधाशु महाराष्ट्र 51.22 सेकंड के साथ पहले स्थान पर रहे। और Dilip Gavit secured his gold medal in men's T47 400 meter. And the lineup is getting ready for men's 400 meter T53 and T54. Where we see Manoj Kumar Sabapati, 3 players in fact from Tamil Nadu, 2 players from Bihar, and 1 each from Haryana, Delhi and Tamil Nadu. Manoj Kumar Sabapati from Tamil Nadu, Ramesh from Tamil Nadu, Rajiv Kumar from Bihar, Anil Kumar from Haryana, Ankur Delhi, Manikandan Tamil Nadu, Sailesh Kumar Bihar. हम हैं एक बार फिर से जवाहरलाल All right, हम हैं all right, तो हम हैं
You said it. बॉस और साथ में है एक्सपर्ट रुपिंदर सिंह। ऑलराइट, तो हम हैं एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे, जहां पर आज भी एक्साइटमेंट बरकरार है। सुबह से बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं और हम देख रहे हैं पैरा एथलीट्स कैसे एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहे हैं, गोल्ड मेडल्स लेके आते जा रहे हैं और क्या क्या नहीं हो रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द डे हैज़ प्रोसीडेड और आज क्या हुआ है अभी तक और आगे क्या क्या होने की उम्मीद है। वी आर जॉइंड बाय अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, आवर एक्सपर्ट मिस्टर रुपिंदर सिंह। सर, आज का दिन भी बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। हर दिन का एक दिन पहले से एक्साइटिंग लग रहा है। हम देख रहे हैं लगातार रेसेस हो रही हैं और पूरी तरह से इनग्रॉस्ड है कमेंटेटर्स भी, हम लोग भी, और नज़ारा जो है वो और भी एक्साइटिंग होते जा रहा है। क्या कहेंगे, आज का दिन कैसे गया? आज देखते ही बनता है। पहले इवेंट से ही सबकी निगाहें थी अंकुर धामा पे, जो T11 की 5000 मीटर की दौड़ में भाग ले रहे थे। उन्होंने एशियन गेम्स में डबल गोल्ड मेडल लिया था 1500 और 5000 में। कल पहले दिन फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स में उन्होंने 1500 मीटर का गोल्ड लिया था। आज उनका मुकाबला था 5000 मीटर में और एज एक्सपेक्टेड उन्होंने अपना डबल गोल्ड मेडल क्लेम किया। उसके बाद आए T13 में भावेश गुजरात के, उन्होंने भी कल 1500 में गोल्ड जीता था, वो भी रिपीट किया और वो डबल गोल्ड मेडलिस्ट बने। फिर एक लड़की जो दिल्ली में ट्रेन करती है, रिप्रेजेंट करती है उत्तर प्रदेश को, सिमरन वट्स, उन्होंने 2 सिल्वर मेडल हासिल किए थे ग्वांगझाओ एशियन गेम्स में। कल उन्होंने 100 मीटर यहाँ जीता था और आज उन्होंने 200 जीत के उन्होंने भी डबल हासिल किया। इसके अलावा एक गोल्ड मेडलिस्ट रिसेंट हैंगजाओ एशियन गेम्स में हाल ही 400 मीटर जीते हैं, गैविट, जो एक पोनी टेल के साथ पहचाने जाते हैं। एंड आपने जिस तरह से डिस्क्राइब हमें किया है कि पोनी टेल के साथ, तो वो उनकी एक अलग पहचान दिखाई देती है स्क्रीन पे, लेकिन जब वो भागते हैं रेस ट्रैक पे वो भी एक अलग ही माहौल है, इज़न्ट इट सर? एंड हमने भी देखा वो एक्साइटिंग रेस जो अभी अभी हुई है और अब आगे जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है और किस तरह की एक्साइटमेंट की उम्मीद है? बहुत, एक से बढ़ के एक। अभी आपने देखा T11 का लॉन्ग जंप था एंड T11 मींस विजुअल इम्पेयरमेंट, दिखाई नहीं दे रहा उनको। उस लॉन्ग जंप के स्मॉल लेन में भागना, फिर बोर्ड पे टेक ऑफ करना, उसके बाद जंप कंप्लीट करना। जी हाँ, ये मेंस 400 मीटर रन T53 एंड T54। लेन नंबर 2 में है मनोज कुमार तमिलनाडु के, लेन नंबर 3 में रमेश तमिलनाडु के, लेन नंबर 4 में राजीव कुमार बिहार के, लेन नंबर 5 में दिल कुमार हरियाणा के, लेन नंबर 6 में अंकुर दिल्ली के, लेन नंबर 7 में है माणिक अंदल तमिलनाडु के और लेन नंबर 8 में शैलेश कुमार बिहार के। और तेजी से निकलते हुए लेन नंबर 2 में, जी हाँ, मनोज कुमार तमिलनाडु के, बढ़िया बढ़त बनाई हुई है, बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश करने वाले हैं। जी हाँ, लेन नंबर 2 में तमिलनाडु के मनोज कुमार ने पहला स्थान हासिल किया है और लेन नंबर 4 में राजीव कुमार बिहार के, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। Men's 400 meter run T53 and T54। ये देखिए कितनी खूबसूरती से लेन नंबर 2 में मनोज कुमार तमिलनाडु के फिनिश करते हुए बहुत बढ़िया बढ़त बनाई थी। शानदार ये प्रदर्शन, जोश जज्बा
लेन नंबर 2 में पहले नंबर पर, और लेन नंबर 5 में अनिल कुमार हरियाणा के दूसरे स्थान पर फिनिश किया है। लेन नंबर 5 में, लेन नंबर 2 में मनोज कुमार तमिलनाडु के 58.68 सेकंड के समय के साथ मनोज कुमार तमिलनाडु के लेन नंबर 2 में पहला स्थान हासिल किया है। लेन नंबर 5 में अनिल कुमार हरियाणा के 1 मिनट 1.29 सेकंड के साथ, और तीसरा स्थान रमेश लेन नंबर 3 में तमिलनाडु 1 मिनट 3.83 सेकंड के साथ। शानदार प्रदर्शन। And that was an exhilarating event. 400 meter wheelchair, T53, T54. And it is the sheer power of the arm which is put to good use. And that's Manoj Kumar Sabapati that was on your screen a while back. There you go, the highlights of the event. 53, 54 wheelchair athletes. T53 एंड T54, ये देखिए कितनी शानदार रेस है ये। मनोज कुमार तमिलनाडु के लेन नंबर 2 में तेजी से आगे बढ़ते हुए, प्रयास करते हुए, और लेन नंबर 5 में अनिल कुमार हरियाणा के कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार। और रमेश तमिलनाडु के लेन नंबर 3, यह मुकाबला लेन नंबर 2, 5 और 3 में बहुत बढ़िया प्रदर्शन मनोज कुमार तमिलनाडु के इवेंट के लिए। और एक बहुत ही दिलचस्प, बेहद एक्साइटिंग व्हीलचेयर रेस अभी अभी हमारे सामने कंप्लीट हुई है। हम उसको देख ही रहे थे और विद इन सेकेंड्स जैसे कि मामला बदल जाता है रेस ट्रैक पे, वैसे ही हमने देखा कैसे किसी के हाथ गोल्ड आया तो किसी के हाथ सिल्वर और ब्रॉन्ज, लेकिन सारे ही पार्टिसिपेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एंड ऑब्वियसली जीता कोई भी हो, खुशी सबको होती है। एंड यही यहाँ पर हमें दिख रहा है, हमारे साथ विजेता मौजूद हैं, मनोज हैं तमिलनाडु से, हु इज़ वन the first position. Manoj, how do you feel? Vanakkam. Feel good and awesome. Right. How much preparation has gone into this? We have preparation. It's long. Really long. Really long. Right. 6 years. Oh my God. All right. तो 6 साल से प्रिपेयर कर रहे थे। यहाँ पे हमारे हरियाणा के भी पार्टिसिपेंट हैं। सेकंड पोजीशन बैक किए है। बहुत ही क्लोज रेस थी, हम देख रहे थे अनिल, बहुत क्लोज रेस होती है, मैटर ऑफ मिली सेकेंड्स हो जाता है। तो कैसा एक तो महसूस हो रहा है, इतने टाइम की मेहनत होती है और कुछ ही मिनटों में पता चल जाता है कि पहला नंबर कौन सा, दूसरा किसका। एग्जैक्टली, आई मीन काफ़ी टाइम से हम प्रिपेयर कर रहे थे और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है हमारी इंडिया की,
और लाइक क्लोज कॉल होती है हमेशा। आप पिछले 3-4 नेशनल्स का रिज़ल्ट उठा के देखेंगे तो हम 4-5 में ही कंटिन्यूसली बैक टू बैक सेम पोजीशन पे कई बार फ़ोटो फिनिश होती है, कई बार क्लोज फिनिश होती हैं। तो बहुत एफर्ट लगते हैं इसे चलाने में और उसकी बिहाइंड द सीन बहुत एनर्जी लगती है। बहुत बहुत प्रिपेयर किया हुआ था। कितने टाइम का आपके प्रिपरेशन, ऑब्वियसली प्रिपरेशन तो हमेशा ही चलती होगी, लेकिन एक ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट रेस से पहले क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है खास तौर पे? बहुत सारी चीज़ें आई मीन ध्यान में रखनी पड़ती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो आपका इक्विपमेंट होता है। आपको हर चीज़ सबसे पहले, आप जब चेयर किसी भी रेस में जाते हैं, रेस वाले दिन आप पूरी चेयर को एक बार एग्जामिन करते हैं कि कहीं पे कोई हवा कम ना हो, कोई नट बोल्ट ढीला ना हो, आपके ग्लव्स प्रिपेयर हों, आप अच्छे से। फिर बॉडी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप हाइड्रेटेड हो। ऐसा ना हो कि आप रेस के टाइम पे आपको प्यास लगे, आप थक जाएं। तो बहुत 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 माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, और बिगर चीज़ें तो हैं ही एज नॉर्मल एथलीट्स के लिए। सो एक्चुअली द स्मॉल थिंग्स दैट मेक वन बिग थिंग। एक जीत के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मायने रखती हैं। और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, गोल्ड सिल्वर ना जीता हो भले ही, लेकिन पार्टिसिपेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको भी देख रही थी टुवर्ड्स द एंड आप आए और आप बहुत थक चुके थे फाइनली, क्योंकि एकदम पुश पूरा का पूरा आपने लगा दिया। कैसे आपको लगा कि आपने अच्छे से पार्टिसिपेट करने में पूरी जान लगा दी? हाँ बिल्कुल, जान तो लगानी पड़ती है, लेकिन हाँ एंड पॉइंट पे आके फिर तो थक ही जाते हैं, वो तो होता ही है। लेकिन जैसा कि अनिल ने बताया था कि बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल होती हैं, जिसमें कि हल्का सा भी एक चक्का भी अगर इधर उधर हो गया तो लाइन से काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट भी हो सकते हैं, तो वो भी रीज़न होता है। ज़रा सी थोड़ी सी देर की बात होती है। तो ये हमारे साथ जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी भी और लोग हैं यहाँ जिनसे हम कुछ देर में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल और भी मैचेस चल रहे हैं और बहुत बहुत एक्साइटिंग ये दिन जा रहा है। जैसे कि हमने बताया, पार्टिसिपेंट्स अपनी सारी मेहनत जो है इस ट्रैक पे लगा देते हैं और हार जीत लगी रहती है, लेकिन एक्साइटमेंट ज़रूर सबके मन में बरकरार है। बैक टू द स्टूडियो। एथलेटिक्स तो 3 ही दिन में खत्म हो जाएगा सर, उसके बाद तो बाकी जो बच्चे अब बाहर हैं, फिर करनी शूटिंग रेंज वगैरह ये सब है। वही तो कल लास्ट डे है ना। सर फुटबॉल का भी यहाँ से फुटबॉल जब होगा तो बिब नंबर यहाँ से देख के और फुटबॉल के प्लेयर का नाम बोलना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फुटबॉल तो यार, फुटबॉल आईएसएल कवर करता है, स्पोर्ट्स 18 जियो 24 कैमरा लेके आता है, सब कुछ देखता है। नहीं ये क्या दिखेंगे यहाँ पे, मेन तो अपना है ना। हमारा तो सारा फील्ड में होगा ना, वो तो ये मॉनिटर पे आएगा ना। ये वो है ये भी एशियन में गया था। ये क्या बिम नंबर क्या भाई इसका? 307 डिस्कस थ्रो है। सूरमा है इसका नाम। देख तो लूँ क्या इवेंट है। जी हाँ, डिस्कस थ्रो का एक्शन एक बार फिर कंटिन्यू है आपकी स्क्रीन पर। And that's Pranav Surma, again an international level player. And in the same lineup you have Dharambir, Akshay, both from Haryana. Pranav Surma from Haryana, accompanied by his father. So Pranav Surma going for the attempt, and he actually bagged a gold medal for the country at the Asian Para Games 2023 with the record 30.01 meter throw in the men's club throw F51 event. But that was club throw. This is discus. And this is F51, 52
discus throw. He has already, won a gold medal at F51. And quite interestingly, at the Asian Games, India had a 1-2-3 at the podium with in the same event with Pranav Surma bagging a gold, and Amit Saroha settling for a bronze medal. So Pranav was actually 16 when he met with an accident which injured his spinal cord, leaving him paralyzed. But again, as is the trademark of all the para athletes, the never give up attitude. He started meditating, and while he was getting treated, got introduced to para sports, started training, and his first international medal came in 2019 when he bagged a silver medal in Beijing Grand Prix, and then of course a gold in Serbia Open in 2023. Tunisia, he's been just at it. ये जो फ्लो होना चाहिए था वो नजर नहीं आया इसमें, और इसी तरीके से जो निराश हुए हैं हल्का सा, और निराशा झलकी भी है चेहरे पर। प्रणव सूरमा अटेम्प्ट बेस्ट है इनका 11.74। तीसरे प्रयास में अपना बेस्ट इन्होंने दिया है, 5 अटेम्प्ट अभी तक ले चुके हैं, और ये छठा 11.97 सबसे बेस्ट अब तक का। इससे पहले भी हमने देखा है कि अपने छठे अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देते हैं एथलीट। लगातार प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस यहां देखने को मिली है। Yes. And I was saying earlier, for India at the Asian Para Games, at the club throw where Pranav participated, it was a tremendous success, with all the 3 podium finishes coming to India, number 1, number 2, number 3, out of which we are going to see Pranav and Dharamveer here in the F51-52 discus throw. And that's Dharamveer towards the end, if he participates. But so far it's the top 5, with Pranav obviously leading the chart with 11.97 meter throw. And at the Asian Games, the third spot, which is the silver, going to Amit Saroha. Thanks, sir. Thank you, bhai. मजा आ गया जी। You haven't introduced us to him. Radiant sportsman. Hi. Planning a big Pleasure meeting you. award ceremony for Oshim Khetrapal. आप देखते होंगे, अगर शिरडी साई बाबा को पूछते हो, he's the Shirdi Sai Baba on the screen in Z5. Oh yes, yes, yes. Hi, yeah. Nice to meet you. Thank you. Thanks, sir. Thank you, bhai. मजा आ गया जी।
से अगर शिरडी साई बाबा को पूछते हो, he is the शिरडी साई बाबा on the screen in Z5. Oh yes, yes, yes. Hi, yeah. Nice to meet you. Thank you. And now we head to the long jump. That's jersey number 113. Men's long jump T12. Balakrishna from Andhra Pradesh. अच्छा चलो बता देना कौन सी इवेंट का रैप कराना है। हाँ मतलब इंटरव्यू के लिए तो आई सेड कि जैसे आपके साथ करा ना रैप सो नेक्स्ट आई कैन डू विद हिम कर लूंगी मैं पर आई एम सेइंग अभी मेरे को पहली बार ही तो मौका मिला खुद ही नहीं चुकी अभी तो वो लगातार चल रहा है ना तो ये बहुत बढ़िया इवेंट हाँ बहुत अच्छा तभी आई क्विकली कॉट द पार्टिसिपेंट्स और मैंने एकदम से कर लिया उनके साथ इंटरव्यू भी अच्छा होगा बहुत अच्छा Sujit from Delhi. लॉन्ग जंप T12 और हैं सुजीत MS दिल्ली के। बेस्ट अब तक दिया है 5.61 और अब गए हैं सीधा, ये फाउल है, इसको अमान्य करार दिया गया है। 5वां प्रयास इनका था ये। सुजीत MS दिल्ली। So that's T12. It is again a visual impairment category, not as severe as T11, but the participants, they can see up to 25. My apologies, up to 10 meters. And and the player is getting up. Okay, so now we switch mode. We again are on the racetrack, 400 meter run T13. This is what I was talking about earlier. It's going to be again a visual impairment. We have Bharti, Jayalakshmi, Bhama Devi, Guddi, and that's lane number 6. Lane number 6, Guddi, racing ahead from Rajasthan. The player in white jersey, she's catching up. But Guddi is pacing ahead, darting forward, and looks like, the white jersey is slowing down with a third athlete. Jayalakshmi of Karnataka running in that inside lane with a stagger, looks likely to catch up with the girl on the outside, which is Guddi of Rajasthan, currently in the lead. Jayalakshmi looks poised to come in this and win in that final straight, overtaking Guddi. They are going to hit 300 meters, the last 100 meters left. Jayalakshmi of Karnataka, 4:45. No, that's Bharti of Rajasthan. Bharti of Rajasthan, 4:45, has taken the lead.
Goody is on the outside, and Bharti of Rajasthan is racing away past the finish line in 70.53, which stands to be corrected electronically. And it's 70.55. A great race by Bharti. जी हाँ, गुड्डी एक बार ऐसा लगा था कि विनर होंगी, लेकिन उसके बाद दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा है। भारती ने टॉप फिनिश किया है 1 मिनट 10.55 सेकंड के साथ। उसके बाद गुड्डी राजस्थान की 1 मिनट 15.68 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर हैं भामा देवी हिमाचल प्रदेश की 1 मिनट 24.99 सेकंड के साथ। While Goody of Rajasthan, Bharti of Rajasthan is celebrating her victory, the people in her wake are looking for some assistance, and there is immediate assistance there. There is a stretcher to take out the girl who suffered probably from dehydration after the race. Thank you so much, sir. Finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games 2023, representing Haryana. Please put your hands together for Madan. I would again request Vishnu sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Now requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for the official photograph. Many congratulations, achievers. We thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you so much. हाई जंप, लॉन्ग जंप का ये एक्शन एक बार फिर शुरू। वेस्ट बंगाल के लॉन्ग जंप एक बार फिर एक्शन में। जी हाँ, साहेब हुसैन वेस्ट बंगाल के अब आ रहे हैं सुजीत एमएस दिल्ली के। पहला प्रयास सफल, दूसरा विफल, तीसरे में 5.61, और अब ये छठे अटेम्प्ट के लिए तैयार हैं सुजीत एमएस। जी ये फेयर जंप है और अब ये मेजर किया जाएगा कि दूरी कितनी तय की है इस लॉन्ग जंप में। बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंट खिलाड़ी सुजीत एमएस दिल्ली। देखने वाली बात है, हाल ही में हमने T11 का भी देखा था और T12 का देख रहे हैं, तो कितना फर्क पड़ जाता है। 5.52 मीटर की दूरी तय की है सुजीत एमएस ने अपने छठे अटेम्प्ट में। और अब है चौहान प्रदीप सिंह चौहान, गुजरात के खिलाड़ी हैं।
Gujarat has been very impressive in the long jump. All the long jumps they have figured in the podium. And yesterday, the one who figured outside it, Mohammad Anas, looks a great potential to even reach para-Olympic levels. I hope the talents have scouted him, because he was a once-in-a-lifetime kind of talent that we saw yesterday. अपने छठे अटेम्प्ट के लिए ईयर वन अप पे बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंट ये फेयर जंप करार दिया गया है गुजरात के प्रदीप सिंह चौहान छठे अटेम्प्ट में। क्या इन्होंने अचीव किया है अभी पता लगेगा। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पूरी बॉडी वेट को ट्रांसफर किया। वेल जज, brilliant jump. All I can say is the long jump coach at Gujarat must be fabulous. He's produced a factory of jumpers, and Pradeep Singh is one of them. He's done 6 jumps and very consistently above 5.5, 5.6, 5.6, 5.64, and the last one just to be measured. 5.69 in a 6th attempt. Great. Pradeep Great Chauhan. long jumping by Pradeep Singh Chauhan of Gujarat. Thank you so much. Now, the winner of the silver medal at Khelo India Para Games representing Uttar Pradesh. Please put your hands together for Tripti Rajput. I would now request Shri Ashwini Kumar sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games 2023 representing Delhi. Please put your hands together for Kirti Chauhan. I would again request Shri Satyajit sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Now requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for the official photograph. Congratulations, achievers, and we thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you so much. मेंस लॉन्ग जंप T12 कैटेगरी में ये है स्टैंडिंग रावतो बालाकृष्णा 5.89 सेकंड के मीटर के साथ सबसे टॉप पर। चौहान प्रदीप सिंह गुजरात के 5.69 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर। विष्णुकांत उत्तर प्रदेश के 5.64 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर। दिल्ली के सुजीत एमएस चौथे स्थान पर हैं 5.61। And these are the highlights of the women's 400 meter T20.
Bharti from Rajasthan clinched in that. And as I was telling earlier, Bharti in her category hailing from Churu district, gateway to the Thar desert, she took up para sports somewhere around 2018, just a couple of years ago, before the lockdown. Bharti partially blind since birth. Bharti has so far undergone a total of 11 eye surgeries to regain her. $400 run T20. अथीरा टीके केरल लेन नंबर 3 में, लेन नंबर 4 में दीप्ति, 5 में रजनी, लेन नंबर 6 में पूजा, 7 में से नितिशा, निशिता और 8 में है खुशबू। 400 मीटर रन T20 कैटेगरी। फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स एथलेटिक्स का ये दूसरा दिन है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। जो लेन नंबर 4 में है दीप्ति जीवा तेलंगाना की, वो did not start. दीप्ति जीवा नहीं है अपनी पोजीशन पर, वो नहीं खेल रही हैं, भाग नहीं ले रही हैं। लेन नंबर 5 में भी अभी जया नजर आ रही है। और इसी के साथ ये एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हुआ था, लेकिन उसके बाद सभी खिलाड़ी अपने अपने लक्ष्य की ओर, और लक्ष्य एक ही, सबसे पहले फिनिश लाइन को Pooja from Haryana taking the lead. We saw earlier in the long jump this morning taking a strong lead, and we've seen that the people who have taken a strong lead in the first 200 somehow managed to keep that lead intact. Although in one race there was a boy who came from behind and pipped the other girl. But Pooja seems to be in a commanding lead, and the other 3 runners behind her, Atira, Rajan Bavri and Nisheta Ara, don't seem to be in any position to catch her. Pooja, with her tremendous strength, has run a wonderfully gallant race, going all out in the first 200 and then hanging in there and ousting her rivals with that brilliant first burst. जी हाँ, उसके बाद लेन नंबर 5 में रजनी बावरी राजस्थान की, ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश किया। और फिर लेन नंबर 3 में अथीरा टीके केरल की, पूजा ने हरियाणा की कंप्लीट किया इस रेस को 1 मिनट 11.46 सेकंड के साथ। उसके बाद रजनी अबावरी राजस्थान 1 मिनट 20.24 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं। और अथीरा टीके केरल की, जी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा यहां पर। पूजा हरियाणा की 1 मिनट 11.46 सेकंड के साथ पहला स्थान,
स्कोर में थोड़ी सी जल्दबाजी देखी गई. Nothing outstanding in achievements like this of Pooja, which is visible, but the determination with which she kept coming back event after event till she finally achieved a gold medal is something worthy of all our respects. And yes, that's right. Especially pointing out the fact that it's T20, intellectual impairment, which could be quite daunting. And we know that this sort of an impairment really impacts the ability to remember and recall the specific pointers, the specific rules and guidelines. And we saw Pooja competing in long jump previously in T20, and now finally she is able to make it with a score of 1.11 seconds and 46 ml. Rajni Bawari slightly slow, 1.2, followed by Athira of Kerala, 1.21, just a marginal difference. But well done, Pooja. Absolutely. A lot of these athletes have amazed us and inspired us in the course of the day. Once again, on the second day of athletics. Sorry for the interruption. Joining us today, guest of honor for the ceremony is Mr. Bharat Bhushan Singhal, CFO and Company Secretary, Surya Roshni Limited. I would now request our ushers to guide the medal winners and guests towards the ceremony area. Starting with the women's long jump T63 and T64 category, the only winner of the gold medal at Khelo India Para Games representing Andaman and Nicobar. Please put your hands together for MS Bhavani. I would request Mr. Bharat sir to kindly present the medal to the winner. Many congratulations, achiever, and we thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you so much. Limited. I would now request our ushers to guard.
Joining us today, guest of honor for the ceremony is Mr. Bharat Bhushan Singhal, CFO and Company Secretary, Surya Roshni Limited. I would now request our ushers to guide the medal winners and guests towards the ceremony area. Starting with the women's long jump T63 and T64 category, the only winner of the gold medal at Khelo India Para Games representing Andaman and Nicobar. Please put your hands together for MS Bhavani. I would request Mr. Bharat sir to kindly present the medal to the winner. Many congratulations, achiever, and we thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you so much. Yesterday, 100 meter T47 gold. Okay, now we are back on the field outside. विमेन डिस्कस थ्रो के ये मुकाबले यहाँ पर चल रहे हैं।
वुमेन 400 मीटर रन में एक और दिलचस्प मुकाबला, और जैसे ही इस मुकाबले का गोल्ड मेडल आया हमने हमारी इस पार्टिसिपेंट, इस विनर को अपने पास खींच लिया कि कैसी है इनकी भी एक्साइटमेंट इस मैच को जीतने के बाद, इस रेस को जीतने के बाद। जयंती, कंग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छी रेस ये थी और आप जीत गई हैं। पहले तो कैसा लग रहा है? थैंक यू, नमस्ते, आई लव यू। बहुत खुश लग रहा है क्योंकि ना मेरा 3 इवेंट पार्टिसिपेट था, 100, 200, 400, तीनों में गोल्ड आया, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद देती हूँ खेलो इंडिया सेंटर से, क्योंकि ना मेरा मन था खेलो इंडिया खेलने के लिए। मुझे सोचा था मैं जनरल में पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं पा रहा हूँ मैं जनरल में भी पार्टिसिपेट करती हूँ। खेलो इंडिया खेलने के लिए बहुत मन थी, आज से वो सक्सेस हो गई, इसीलिए थैंक यू सो मच। ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई, आप खेलो इंडिया खेलना चाहती थी। और खेलो इंडिया की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, पहली बार खेलो इंडिया हो रहा है, इस लेवल पे पार्टिसिपेशन हो रही है पैरा एथलीट्स की, क्या लग रहा है कि ये कितना अच्छा कदम है? क्योंकि इससे आप गेम्स तो खेलते ही आए हैं, पार्टिसिपेशन तो होता ही है, एक और बहुत बड़ा मंच मिल गया, ऐसा लग रहा है? बहुत खुश लग रही है क्योंकि ना जनरल बच्चे का हुआ था खेलो इंडिया, पारा का नहीं हुआ था, उस पर स्टार्टिंग पारा का चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, खुश भी लग रहा है कि ना हम लोग भी खेलो इंडिया हुआ, इसीलिए बहुत धन्यवाद मैं खेलो इंडिया जो मेंबर्स को देती हूँ। थैंक यू सो मच खेलो इंडिया सेंटर। आखिरी सवाल, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप बहुत हाँफ रही हैं, थक गई होंगी ऑब्वियसली। इतनी तेज़ आपने 400 मीटर रेस ना सिर्फ कंप्लीट की बल्कि आप जीती हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन अगेन। लेकिन एक बार आपसे जानना चाहेंगे अपने ऑडियंस के लिए कि किस तरह की आपने तैयारी की, और आपको लगता है कि वो जो तैयारी आपने की होगी, जो बहुत टाइम चली होगी, उसका फल आज आपको मिल गया है? बहुत मिला क्योंकि ना मेरा टिकट थोड़ा इंजरी था एशियन में, मेरा स्टार्टिंग से इवेंट में इंजर्ड हो गई थी लिगामेंट, अभी थोड़ा रिकवर करके मैं खेलो इंडिया खेलने के लिए आया। 1 महीना के बाद मैं रिकवर लिया, उधर खेलो इंडिया खेला है, वो तीनों में गोल आ गई, 100, 200, 400 मीटर T47 कैटेगरी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको हमारी तरफ से और हमारे सारे दर्शकों की तरफ से। थैंक यू सो मच एंड उम्मीद करते हैं आप आगे भी इसी तरह जीतते रहें और बहुत सारे गोल्ड ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी लाते रहे। वी आर ऑल प्राउड ऑफ जयंती बेहरा, उड़ीसा से हैं। 400 मीटर की जो रेस है विमेंस की, वो अभी अभी जीती हैं और हमने बहुत ज़्यादा बातचीत उनसे इसलिए नहीं की क्योंकि वो अभी अभी रेस जीत के आई, लेकिन ऐसे ही हम आपके पास लगातार और प्लेयर्स लाते रहेंगे, ना सिर्फ जो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीत रहे हैं बल्कि जो पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो बहुत सारी तैयारी करके आज यहाँ पर देश का नाम और अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं। बैक टू द स्टूडियो। Going for a third event along with Sakshi and Sidra Muskan from Goa and Delhi respectively. And that's Sakshi from Goa, T12, visual impairment till a meter. That's a valid jump. Sakshi had a 3.90 in her first. This is her second attempt. Just waiting for the result on the electronic board. That's Sidra from Delhi. And she got a 4.03. That was Sakshi Kale in her last attempt, and this time now it's Sidra Muskan from Delhi. जी हाँ, फाउल करार दिया गया है। दूसरा प्रयास था ये सिद्रा मुस्कान का। दिल्ली की कोशिश अच्छी थी, एनर्जी नजर आई, कॉन्फिडेंस नजर आया, लेकिन थोड़ा सा चूकी वहां पर, और ये जो अटेम्प्ट है ये फेल, फाउल करार दिया गया है। दूसरा प्रयास था इनका। इस इवेंट में लॉन्ग जंप T12 में
ये देखिए पहला जो अटेम्प्ट था वो 3.39, लेकिन दूसरा फ्लॉप। और ये अब आई है सिमरन वत्स उत्तर प्रदेश की, पहले प्रयास में 3.80 मीटर के साथ। ये इनका तीसरा इवेंट है। ये वैलिड जंप है। अनुभवी खिलाड़ी के पास ये एक एडवांटेज रहती है कि खेल कोई भी हो, लेकिन उसका जो अनुभव होता है, ये देखिए एकदम विजेता की तरह रन अप लेते हुए, और बहुत बढ़िया इसको फिनिश भी किया है। देखना होगा डिस्टेंस अपने दूसरे प्रयास में, जी हाँ 4.22। And she comes into a gold medal winning position, and it's her third gold if she gets this. Sakshi Kale from Goa had the best jump of 4.03 meters, but Simran has the advantage of much higher quality speed, and she took it to advantage in that leap where she got 4.22 meters. And I think for Simran, that's been a very, very easy and seamless transition to a long jumper. And not a bad jump from athlete from Goa, Sakshi. But let's see if it is good enough. It's a valid jump, but we need to see if it's good enough for Simran. Look at that quality of run, pace, and the jump executed. All the limbs flung up in the air. The attempt is to throw the body as high up. Looks like, she's got some dust in her eye, and I think the kind of care that the para athletes have received from the volunteers has been exemplary. I've seen, personally, the volunteers taking care of the belongings of the athletes. That was 4.15. That's marginally lesser than Simran's attempt, and that's Sidra Muskan from Delhi trying to get a legal jump, and this one also is a foul. So straight contest between Simran and Sakshi. Simran of Delhi aiming for a third gold, currently leading with 4.22, closely followed by Sakshi Gale with an attempt of 4.15, a distance only of 7 centimeters between the two. 3 jumps left for both of them. And what a magnificent event for Simran. She's been just picking goals like anything. There you go. Let's see if it's better than 4.22. That's a legal attempt. The officials are measuring. Very confident. Oh, that's a 4.55. Amazing. That's a sure shot score, warranting a gold for Simran, which would be her third. And now she can sit. I think it's out of reach, and Simran will like to sit because she'd been pushed in the 100 and the 200, and she would not like to expose herself too much. It's her husband behind her who pushes her into the long jump. I remember in Bangalore she did one jump, pulled her hamstring, ran away and cried, blaming her husband for that. But today she has to give credit to him. She's done a wonderful effort in long jump. So 4.55 is really creditable. I think she should take a break now. And yes, she has complained about that quite often.
of Gajendra, but Gajendra being an army personnel, being a coach, and he does not show any mercy, and that's a very fine balance that he needs to maintain as a husband and a coach. But nevertheless, it's all about the result, and I think both of them have been a superb pair, producing gold for India at international events and national. It's been and that's Sidra from Delhi, not giving in. That's a valid attempt. Her first one was 3.39, and this is better, 3.63, but I would say not good enough to push Simran back. And Simran is again, she's going to, I think, give it another go, because she has stood up. और साक्षी ये काले का ये चौथा जो अटेम्प्ट है ये फाउल करार दिया गया है। थोड़ी सी चूक हुई है टेक्निकलिटी के तौर पर। रनअप अच्छा था। प्रेशर भी हो जाता है जब देखते हैं कि सामने जो सिमरन वत्स हैं वो स्कोर कर चुकी हैं 4.55 और आप अभी स्ट्रगल कर रही हैं 4.15 पर। तो मानसिक जो दबाव होता है वो निश्चित तौर पर दीपक बहुत बड़ा रोल निभाता है यहाँ पर। Yes, and you can see that Simran is not giving in, although she is in a very solid position, has been bettering her attempt, 3.80, 4.22 and 9, 4.55. And now she's going to, go in again, trying to better herself. And that's the mark of an elite athlete, right? You will never see the graph going up and down. It will always, keep going up. And that's a valid attempt again. No surprise coming in from Sakshi, from Simran. Apologies. And let's see if she has really battered this time. That's 4.62, even better. Is she going to go for that 5-meter mark? I think she would. She's complaining. Gajinder is smiling. We have smiles all over. Improvement worth watching as she comes up all the way from 4.22 to 4.62. And it started with 3.80 and now it's 4.62. And that's Kanchan Lakhani. We spoke this morning, Kanchan and I. I wished her best for her event. That's discus throw F51, 52, 53. Kanchan Lakhani from Haryana. And watching 2 days of action, we definitely have to appreciate the state of Haryana for coming up with a policy which has inspired all their athletes to perform exceptionally well in the para sports events in all disciplines. And very sorted athlete.
and she has been an advocate of persons with disabilities and the kind of infrastructure which is friendly to them. So Kanchan started with 10.45. And slightly going down. Didn't score. Taking her time. Bib number 234. Slightly coming down in her throws. Doesn't look happy. And she has come off. And now I believe it will be so that's Ekta Bhyan waiting for her turn. The volunteers are unwrapping the chair.
the chair on which the para-athletes they sit in the F50, 152, 53 and other sitting categories, they obviously they carry their own chair on which they are strapped, because that's an equipment that you need to bring in as an athlete. And I remember during the Paralympics, one of the athletes, his chair was misplaced, which caused a lot of stir. But there was a delay. Obviously, no, you would not want that last minute disturbance. So you see Kanchan Lakhani is at 10.45. Kirtika from Tamil Nadu, 11.05. I think that's the mark that Kanchan Lakhani was trying to breach. She marginally missed it. Jaspreet Kaur way behind. So it's now, clearly. Can the next player do it? Women's discus throw F51, 52 and F53 का ये मुकाबला कशिश लाखड़ा, एकता भायान, कंचन लखानी, जसप्रीत कौर, विनीता शेरीवल जैन और कृतिका जैन। कृतिका जे लीड कर रही हैं, टॉप पर हैं, और कंचन लखानी दूसरे नंबर पर। दो खिलाड़ी अभी भी चुनौती दे सकते हैं इस स्टैंडिंग को। दोनों खिलाड़ियों के 6 प्रयास अटेम्प्ट देखने को मिलेंगे और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि फाइनल रिजल्ट क्या है, और उसके आधार पर तय होगा मेडल का रंग। कशिश लाकड़ा है दिल्ली की, एकता भायान हरियाणा, कंचन लखानी हरियाणा, जसप्रीत कौर पंजाब, विनीता श्रीमल जैन राजस्थान और कृतिका जे तमिलनाडु। मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये अच्छा सीईओ, ये पीसीआई का सीईओ है। एडमिनिस्ट्रेशन। यही तो होता है ना।
चला वरना इन जनरल पता क्या वो एक ही ईयरफोन वाला देते हैं ना डबल दे रखा है एक ईयरफोन वाले को और कान में दर्द होता है मतलब इसमें आपके नहीं लेकिन उसमें एक कान आपका सेफ रहता है उसमें आप अपनी आवाज़ सुन सकते हो आराम से बोलो इट्स अ मैराथन आप स्प्रिंट की तरह बोलते हो आराम से बोलो ये अपना गला थोड़ी ना बैठवाना है इनके चक्कर में नहीं सर लोगों की वोकल कॉर्ड पता है जो लॉन्ग टाइम तक इस चीज़ में रहते हैं दे लूज देयर वोकल कॉर्ड्स या डेफिनेटली लेकिन मैं अब कल से बहुत सावधान हो जाऊंगा आप चिंता ना करें चश्मे लगा हाँ वो इतना कशिश लगता है क्या नोटिस है सर गई है ना एशियन गेम्स वगैरह ये लगती है नखरे वाली लड़की है अच्छा लग तो रहा है देख तो सही कितने नखरे से वो कोच आया था 2000 चीज़ें उसने चेक की उसकी मदर आई पहले चेक कर है ना एटीट्यूड भी कुछ कुछ ऐसे लग रहा है तो रॉयल फैमिली से होगी लाकड़ा वैसे पैसे वाले लोग होते हैं सर क्या देखने में सुंदर फेस है चौधरी साहब है हरियाणा के So that's Kashish Lakra, and we are back on the track for women's 400 meter T11 and T12. Runners in lane 1, 3, 5 and 7. 3 of them are with escorts. The girl in lane 3, Tejal Damor of Gujarat, who we saw in the other event also running without an escort. So she's got the confidence. Let's see how it reflects in the results. लेन नंबर 1 में है ईश्वरी निशा छत्तीसगढ़ की, लेन नंबर 3 में है तेजल दामोर गुजरात की, और लेन नंबर 5 में है कालिका आंध्र प्रदेश की, लेन नंबर 7 में ज्योति होशरा कर्नाटका की। और ये लीड सबसे पहले मिली है लेन नंबर 5 से। And coming up now is Tejal Damor of Gujarat. The girl, the only girl running without an escort runner. Confident young girl. Went through the first 230 seconds looking to get a good timing. On her outside, an escort runner from lane 5, 7 also looking good. And the runners are sprinting ahead. The one without the guide, darting forward, wading her through. The stadium is lit with floodlight, and she is not sparing any effort. और इसी के साथ ये तेजल दामोर गुजरात की फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल पास, जी हां, पहला स्थान हासिल कर लिया है। और लेन नंबर 5 में है कालिका लेथ आंध्र प्रदेश की। देखिए 1 मिनट 7.27 सेकंड के साथ गुजरात की तेजल दैमोर ने पहला स्थान हासिल किया है। कालिका आंध्र प्रदेश की दूसरे स्थान पर 1 मिनट 8.23 सेकंड के साथ, और ज्योति होशरा कर्नाटका की तीसरे स्थान पर रही हैं 1 मिनट 16.37 सेकंड के साथ। Very good effort by Tejal Damor. 67.27. This is a very creditable effort. And I'm just thinking, what will happen if Simran also
decides to run the 400. So, so Simran ran in the 200-meter version this morning in exactly the same event, same category, but now it is 400 meter, and Tejal, she did not get, so she got a silver yesterday in 100 meter. Today she did not get any medal, and Simran, on the other hand, she won a gold. But here we have Tejal Damor in 400 meter getting a medal, today's medal in fact. And look at the turn of events. And I'm going to fill the ears of Gajinder. It's 400 meters now for Simran. Watch out for her. She's clocked 26 seconds in 200. Technically, a 26-second runner can be able to run in 56 seconds for a 400, which will give her a better chance to win a gold medal at the Paralympics as opposed to 100 and 200. And that's Kashish Lakra from Delhi, F51, 52, 53 event, discus throw. Kashish Lakra, first attempt nullified. So born in Delhi, Kashish Lakra, she loved sports even as a child. Her family encouraged activity among kids. And she has been good at multiple sports like badminton. I mean, she has tried badminton, shot put, wrestling, speedball, skating. And even, freestyle wrestling as well. And quite interestingly, in 2017, while training as usual in an academy in Najafgarh, Kashish slipped and fell on her neck, damaging her spinal cord. Hospitalized for a week. It was an irreversible vertebral injury, and she would remain wheelchair bound. Quite unfortunate. Obviously, went through treatment, got treatment for more than 4 months, had to drop out of school, physiotherapy. But that's about sports. The passion, you just can't leave it. And she got introduced to the coach, and who told her about the Paralympics. Started training for club throw, and then that's how the entire journey into Paralympics started for Kashish. And she has played at Dubai, quite a few other events as well, and all this wading her way through all of these hurdles and events. There we have her. In fact, during the Paralympics, she was one of the youngest, in fact, the youngest athlete ever to qualify for the Paralympics. जी हाँ, इसी के साथ अपने प्रदर्शन भी सुधार किया है। 5.24 से 5.27 पर आ गई हैं कशिश लाकड़ा। डिस्कस थ्रो का ये F51, 52 एंड 53 कैटेगरी का मुकाबला। कशिश लाकड़ा F51 कैटेगरी से compete कर रही हैं। अपना समय ले रही हैं। कोशिश यही कि अच्छा प्रदर्शन करें, रिजल्ट जो भी रहे। रोका हाथ को और लगा कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो अटेम्प्ट फेल करने के बजाय संभाला, क्योंकि 2 अटेम्प्ट, पहला और चौथा, इनका फाउल हो चुका है।
She's finding it difficult to loosen the grip once having taken the grip. Great effort by this young girl. The control on the grip really very difficult for her with her kind of reduced ability. Her mother very lovingly encouraging her, giving her confidence, hoping she will improve. She's done well. 5-2-4, 5-2-7, 2 legal attempts. और ये एक बार फिर कोशिश थी, लेकिन क्या ये मान्य है? अभी फ्लैग अप का इंतजार। और इसी के साथ ये 6 अटेम्प्ट हैं, ये कंप्लीट किए हैं कशिश ने। तो टॉप पर अभी भी कृतिका और नंबर 2 पर कंचन लखानी। ये मात्र 2 और तीसरा प्रयास जो है वो इनका सफल रहा। 5.24 और 5.27 मीटर। नाजुक चल रही है ना? नहीं पर सिंपैथी है, मेरा कोई वो नहीं सर, इसमें क्या बेचारी दुख तो झेले रही है, पर इनको बेचारी नहीं कहना चाहिए। नहीं Once again and welcome you all to the first edition of Khelo India Para Games 2023. It's time for the presentation ceremony for athletics. Joining us today, guest of honor for the ceremony is Mr. Dinesh Jaiswal, referee track para athletics and ex-SAI coach. Mr. Gaurav, technical official. I would now request our ushers to guide the medal winners and guests towards the ceremony area. Starting with the women long jump T20, T37 and T38 category, the winner of the bronze medal at Khelo India Para Games representing Haryana, please put your hands together for Pooja. I would now request Mr. Dinesh sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Now, the winner of the silver medal at Khelo India Para Games representing Gujarat, please put your hands together for Beena Mordia. I would now request Mr. Gaurav sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games 2023 representing Assam, please put your hands together for Anismita Kowar. I would request Mr. Dinesh again to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Now requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for the official photograph.
Many congratulations, achievers. We thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you so much. खेलो इंडिया, साथ में हैं हम। सीएम के पद के उम्मीदवार दर्शना को हरियाणा क्यों नहीं चाहिए? Punjab. हाँ, एक हरियाणा पंजाब है। So that's Darshana Devi from Punjab, and she's currently under discus throw F56 event happening outside the Jawaharlal Nehru Stadium periphery. So Virender, it is almost the end of the day. We have a few more events to go, but what's been your perspective so far? दीपक, अभी तक जितने भी मुकाबले हमने देखे हैं, संघर्ष की जीती जागती मिसाल वो कहे जाएं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। बहुत बढ़िया प्रदर्शन, चाहे वो ट्रैक का हो, चाहे फील्ड का हो, जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पट, डिस्कस थ्रो। ये दर्शना देवी देखिए आप,
15.89 मीटर की दूरी तय कर चुकी हैं। बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहां देखने को मिला है। कुछ खिलाड़ी रनिंग में, हाई जंप में 3-3 मेडल जीतने में कामयाब रहे। बहुत ही बढ़िया, मतलब अच्छा लगता है देख के कि जो जीत का जज्बा है, ज्यादा से ज्यादा इस इवेंट में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उज्जवल भविष्य है पैरा खिलाड़ियों का, खासकर भारत में। So Fatima Khatun 17.87 topping the chart, followed by Kusum 17.61 marginally behind Fatima Khatun, followed by Darshana Devi whom we just saw 15.89, and that it seems concludes this event. And there you see Darshana Devi just crossing the arena. And I think the chair is getting prepared for another athlete. So the game is still on. खेलो इंडिया, साथ में हैं हम। Check. That's the highlight of the day. Sprinting events. I think this day can be attributed to the sprinters, and we have seen quite a few sprinting events. There's not been any high jump, there's not been any other event. It's been just long jump and sprinting, if my memory serves me right. Check. 5 out of 6 with invalid jumps, ending up with 4 crossing above 4 meters, and a tantalizing battle for the podium finish amongst the top 3. That was definitely the star highlight. Of course, on the experience side, we had Yogesh Khatunia in the discus, impressing with his 40.09 effort. And of course, we had on the track the gold medalist 400 meters from Maharashtra, Gavit. Guest of honor for the ceremony is Mr. Devendra Jhanjaria, Padma Bhushan, Padma Shri, Khel Ratna, Arjun Awardee, and 3 times Para-Olympic medal winner. I would now request our ushers to guide the medal winners and guests towards the ceremony area. Starting with the men's 400-meter run T36 category,
the winner of the bronze medal at Khelo India Para Games representing Punjab. Please put your hands together for Praveen Kumar. I would now request Devendra sir to kindly present the medal to the winner. The winner of the silver medal at Khelo India Para Games representing Uttar Pradesh. Please put your hands together for Anubhav Chaudhary. I would again request Devendra sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games representing Madhya Pradesh. Please put your hands together for Sachin Sahu. I would again request Devendra sir to kindly present the medal to the winner. I would now request the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for the official photograph. Many congratulations, achievers, and we thank our guest, Mr. Devendra Jhanjaria, for joining us today. Thank you so much, sir. राजस्थान में या नोएडा में वो पैरा बैडमिंटन वाला लड़का था सुहास यतीराज वो बन गया योगी का राइट हैंड मैन तो अब वो लखनऊ शिफ्ट हो गया सेक्रेटरी स्पोर्ट्स. And that's Meenakshi Jadhav from Maharashtra. F56 में Earlier, Meenakshi, in the morning, she participated in the javelin throw F56 event. So did Fatima Khatun. And both of them are repeating their performances here in the discus throw event. थैंक यू जीतू भाई तूने बहुत हेल्प करी है बहुत ज्यादा जीतू ना होता तो जान बचाई है तुमने वो वाली कहानी है ना जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं वो जमिया ही नहीं जिन्हें जीतू नहीं वेख्या उन्हें चाय मिली नहीं रमेश 6:25 पे आएगा शायद असगर वजाहत. And you see that the quality of the throws, you see that fluctuation, and that's what actually stops a discus from going to where it can actually go. So this is in fact the third event that Meenakshi is trying her hands on. She has earlier participated in javelin, now this is discus, and I guess, if my memory serves me right, even in shot put as well.
So she does what they call a triathlon of throwing events: shot, javelin, and discus, leaving nothing to chance. And I think from a preparation, from a time spent, energy spent perspective, you have to have the maximum return. So it's like not putting your all the eggs in one basket. Fatima Khatun winning the golden egg in this one. Yes. And it's about distribution of effort. So from an athlete perspective, it is certainly tiring. But if you look at they banking on the ability to harness their expertise in the throwing event. So javelin is a throw, a game of the grip and the shoulder, and so is shot put, and so is discus. So I wouldn't call it a bad strategy. It's if you, I mean, we have seen Simran do this, and she has been able to win back to back. The only event where she did not compete was the 400 T11 and T12. If she had sprinted in that, probably that would have been another medal. सुबह शाम करता हूँ आधा घंटा पास में रहते हैं हाँ पास में रहते हैं नहीं सर कोचिंग के लिए आते हैं ना साकेत रहता हूँ दिल तो यहीं रहता जहाँ घर जाती है कभी कभी Each other finishing her attempts, and now we see another player getting prepared. जी हाँ, टोटल 8 हैं। मोहिनी दिल्ली से, कुसुम हरियाणा से, पूनम शर्मा हरियाणा से, मीनाक्षी जाधव महाराष्ट्र से, दर्शना देवी पंजाब से, अरुण मोली तमिलनाडु से और फातिमा खातून उत्तर प्रदेश से। विमेंस डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी में ये मुकाबला स्टैंडिंग प्रेजेंट फातिमा खातून टॉप कर रही हैं 17.87 मीटर से। कुसुम हैं दूसरे स्थान पर 17.61 मीटर। दर्शना देवी तीसरे स्थान पर है 15.89 मीटर के साथ और एक पार्टिसिपेंट अभी भी पूनम शर्मा हरियाणा की। और उसके बाद डिसाइड होगा क्या ये जो करंट सिचुएशन है यही मेडल टैली में भी परिवर्तित होगी या इसमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हरियाणा पंजाब ओलंपिक पैरालंपिक एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स कोई भी इवेंट हो बहुत कुछ निर्भर करता है इन स्टेट्स के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। 247 बिग नंबर के साथ पूनम शर्मा हरियाणा की विमेंस डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी में अपने पहले प्रयास के लिए कमर कसते हुए।
लिटरली कमर कसते हुए, और उन्होंने वॉलंटियर्स को कहा आप रहने दीजिए, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ और मैं खुद ही कर लूँगी। जी हाँ रुपिंदर, ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है खिलाड़ी के अंदर कितना जज्बा है अपने आप को संभालने का, और कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं दीपक। So Poonam Sharma is competing again. Earlier she participated in shot put, won gold with 6.99 in F56, 57 category, same category that she is currently playing in. And now she is going to repeat her performance in this captivating event. Taking a few practice throws, and even from that it's evident she's crossed 15 meters easily, and the winner is in the region of 17.51, if I'm not mistaken, Fatima Khatun. So this is definitely going to be a challenge facing Poonam Sharma. And she's traditionally not a discus thrower. Her main event has always been shot put, and that makes all the difference. It's like Virat Kohli coming to bowl. Deepak, it has been said that jack of all trades and master of none. Is that principle? No, I think she's equally good. We just need to see if she can actually make her mark in this event as well. She is traditionally won a lot of accolades in shot put. Let's see if she can replicate that performance. And that's 16.18. That's a decent throw. It's not a bad throw. And look at the torso, the grip, and she literally flung the discus across the field. And look at the quality of the throw. सिर्फ पैरा गेम्स की अगर हम बात छोड़ दें, अगर अंतर्राष्ट्रीय जो मंच हैं, एशियन गेम्स, पैरालंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, जब वहाँ आप compete करते हैं तो क्या एक फोकस अगर एक गेम पर आप करेंगे तो क्या कुछ ज़्यादा बेटर होगा? दीपक जरा जानना चाहेंगे। I think that's a common understanding, because when you are competing at an international event, it's like you have to have a needle piercing focus. You cannot really have your mind and your energy and your muscles getting diverted into different events. I mean, that's fine for national events, but athletes I've seen, typically they are very, very conscious of where they are participating, and they are very clear about that category. Yes, it happens that they are assigned a particular category when they go for trials, and when they go internationally, the categories sometimes change based on the IPC assessment. And that's the kind of flexibility which the athletes, they are expected to absorb. So Poonam Sharma, a celebrated player, Commonwealth athlete, and now she is trying for discus throw. जी हाँ, लगातार जो परफॉर्मेंस है पहले और दूसरे अटेम्प्ट में अगर हम देखें तो 16.18 से 17.17 मीटर, तीसरा जो अटेम्प्ट है ये फाउल है, लेकिन उसके बाद भी कॉन्फिडेंस देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, और ऐसा लगता है कि खाली हाथ तो जाने का मन बिल्कुल नहीं है पूनम शर्मा का। निश्चित तौर पर मेडल की जो सर्च है, जो हंट है, उसको पूरा करने का जज्बा दिखाते हुए पूनम शर्मा हरियाणा की। Can she get that one throw to upset Fatima? She's throwing consistently above 15.
She's got a 17-17, but my memory tells me Khatun is leading with 17.41, if I'm not mistaken. So let's see. She's got 2 more throws to come up with. She's done a 17.01 again in her 4th attempt. So Poonam Sharma on the heels of Fatima Khatun. As they say, it's not over till it's over. जी हाँ, ये 6th अटेम्प्ट कंप्लीट और यहाँ से डिसाइड होगा मेडल टैली का ज्योग्राफी। कौन सी खिलाड़ी रहेगी किस नंबर पर? This was a foul throw out of the sector, and the 2 volunteers, measurers, gave their nod to the referee, put a red flag, and Poonam has to be satisfied with a best effort of 17.17. And just like Poonam Sharma is a traditional shot putter, Fatima is a traditional discus thrower. जी हाँ, तीसरा स्थान हासिल किया है पूनम शर्मा ने 17.17 के साथ दर्शना देवी को चौथे स्थान पर जाने के लिए मजबूर किया है। पहला और दूसरा स्थान बरकरार है। कुसुम 17.61 के साथ दूसरे स्थान पर और फातिमा खातून लीडर 17.87. And once again, Haryana bagging 2 medals in one event, as it has been doing throughout these para games. It will be interesting to watch the final medals tally. नीचे 0-0 में कोई नहीं था, नहीं मेरे ख्याल से नहीं। अब देखिए जरा, I would now request our ushers to guide the medal winners and guests towards the ceremony area. The men's long jump T12 category, the winner of the bronze medal at Khelo India Para Games representing Uttar Pradesh, please put your hands together for Vishnu Khan. I would request Dr. Vivek sir to kindly present the medal to the winner. Now, the winner of the silver medal at Khelo India Para Games representing Gujarat, please put your hands together for Pradeep Singh Chauhan. I would again request Dr. Vivek sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games 2023 representing Andhra Pradesh, please put your hands together for Nalla Bodula Balakrishna. I would again request Dr. Vivek sir to kindly present the medal to the winner.
Now requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for official photograph. Many congratulations, achievers. We thank our guest, Dr. Vivek Pawar, for the medal ceremony. Thank you so much, sir. Joining us today, the guest of honor for the ceremony is Dr. Vivek Pawar, Assistant Director Sports, Government of Goa. I would now request our ushers to guide the medal winners and guests towards the ceremony area. The women's 400-meter T20 category, the winner of the bronze medal at Khelo India Para Games representing Kerala. Please put your hands together for Athira TK. I would now request Dr. Vivek sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Now, the winner of the silver medal at Khelo India Para Games representing Rajasthan, please put your hands together for Rajni Bavaria. I would again request Dr. Vivek sir to kindly present the medal to the winner. Sir. Finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games 2023 representing Haryana, please put your hands together for Pooja. I would again request Dr. Vivek sir to kindly present the gold medal to the winner. Thank you so much, sir. Requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for the official photograph. Many congratulations, achievers. We thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you so much. Starting with the women 200-meter run, T11 and T12 category. The winner of the bronze medal at Khelo India Para Games representing Karnataka. Please put your hands together for Jyoti Hazura. I would now request Vajnath sir to kindly present the medal to the winner.
much, sir. Now, the winner of the silver medal at Khelo India Para Games, representing Andhra Pradesh, please put your hands together for K. Lalitha. I would again request Vajnath sir to kindly present the medals to the winners. Finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games 2023, representing Uttar Pradesh, please put your hands together for Simran Vats. I would again request Mr. Vajnath sir to kindly present the medal to the winner. Now requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for official photograph. Thank you so much. Many congratulations to the achievers, and we thank our guests for joining us today. A very good evening once again. I welcome you all to the first edition of Khelo India Para Games 2023. It's time for the presentation ceremony for athletics. Joining us today, the guest of honor for the ceremony is Vajnath Kale, technical official and international coach. I would now request our ushers to guide the medal winners and guests towards the ceremony area. Starting with the women's long jump T12 category, the winner of the bronze medal at Khelo India Para Games, representing Delhi, please put your hands together for Sidra Musician. Thank you so much, sir. Now, the winner of the silver medal at Khelo India Para Games, representing Goa, please put your hands together for Sakshi E. Kale. I would again request Vajnath sir to kindly present the medal to the winner. Finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games 2023, representing Uttar Pradesh, please put your hands together for Simran Vats. I would again request Mr. Vajnath sir to kindly present the medal to the winners. Thank you so much, sir. Now requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for the official photograph. Many congratulations, and we thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you so much. A very good evening and welcome you all to the first edition of Khelo India Para Games 2023. It's time for the presentation ceremony for athletics. Joining us today, the guest of honor for the ceremony is Mr. Devendra Jhanjaria,
Padma Bhushan, Padma Shri, Khel Ratna, Arjun Awardee and 3 times Para-Olympic medal winner. I would now request our ushers to guide the medal winners and guests towards the ceremony area. Starting with the men's 400-meter run T47 category, the winner of the bronze medal at Khelo India Para Games representing Andhra Pradesh. Please put your hands together for Terakani Dilip. I would request Mr. Devendra sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Now, the winner of the silver medal at Khelo India Para Games representing Gujarat. Please put your hands together for Bhavik Kumar Barwad. I would again request Mr. Devendra sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games 2023 representing Maharashtra. Please put your hands together for Dilip Madhu Kavit. I would again request Devendra sir to kindly present the medal to the winner. खेलो इंडिया साथ में हैं हम। Thank you so much, sir. Now requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for official photograph. Many congratulations, achievers, and we thank our guest, Mr. Devendra sir, to joining us for the medal ceremony. Thank you so much.
check. Khelo India Para Games 2023. It's time for the presentation ceremony for athletics. Joining us today, the guest of honor for the ceremony is Shri Omkar Kaure, Assistant Director Sai, Sports Authority of India. I would now request our ushers to guide the medal winners and guests towards the ceremony area. Starting with the women 400-meter run T13 category, the winner of the bronze medal at Khelo India Para Games representing Himachal Pradesh, please put your hands together for Bhama Devi. I would now request Shri Omkar sir to kindly present the medal to the winner. खेलो इंडिया साथ में हैं हम। Thank you so much, sir. Now, the winner of the silver medal at Khelo India Para Games representing Rajasthan, please put your hands together for Goody. I would again request Mr. Omkar sir to kindly present the medal to the winner. Finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games 2023 representing Rajasthan, please put your hands together for Bharti. I would again request Mr. Omkar sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for the official photograph. Many congratulations, achievers. We thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you so much. खेलो इंडिया साथ में हैं हम।
in the women 400 meter wheelchair run T53 and 54 category. I would now request our ushers to guide the medal winners. The winner of the bronze medal at Khelo India Para Games representing Tamil Nadu. Please put your hands together for Kalai Selvi E. I would request Mr. Omkar sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Now, the winner of the silver medal at Khelo India Para Games representing Tamil Nadu. Please put your hands together for Kiran Shriram Medkar. I would again request Omkar sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games 2023 representing Maharashtra. Please put your hands together for Geeta Chauhan. I would again request Mr. Omkar sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Now requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for the official photograph. Many congratulations, achievers. We thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you so much. खेलो इंडिया साथ में है
good evening and welcome you all to the first starting with the men's long jump T11 category, the winner of the bronze medal at Khelo India Para Games representing Andhra Pradesh. Please put your hands together for Jagan. I would now request Dr. Vivek sir to kindly present the medal to the winner. Starting with the men's long jump T11 category, the winner of the bronze medal at Khelo India Para Games representing Andhra Pradesh. Please put your hands together for Jagan. I would now request Dr. Vivek sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Now, the winner of the silver medal at Khelo India Para Games representing Haryana. Please put your hands together for Vinod. I would again request Badri sir to kindly present the medal to the winner. So much, sir. Finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games 2023 representing Gujarat. Please put your hands together for Jagdish Bhai. I would again request Vivek sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Now requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for the official photograph. Many congratulations, achievers, and we thank our guests, Dr. Vivek Pawar and Badri Narayanan, for joining us today for the medal ceremony. Thank you so much.
category, women's 400 meter run, T38 and T47. We would like to call Jayanti Behra, Mafi, and Rutuja Kishore Kawatle. I would repeat the names again. It's Jayanti Behra, Mafi, and Rutuja Kishore Kawatle. I would request you guys to be here at the presentation area as soon as possible. Thank you so much. Category men's 400 meter run T47. We would like to call Dilip Mahadu Gavit, Bhavik Kumar Bharwad, and Terakani Dilip. I would repeat the names again. It's Dilip Mahadu Gavit, Bhavik Kumar Bharwad, and Terakani Dilip. I request you people to be here at the presentation area as soon as possible. Check, check. Check, check. Ceremony for athletics. Joining us today, guest of honor for the ceremony is Mr. Nitin Chaudhary, Athletics Coach, Sai, Sports Authority of India. I would now request our ushers to guide the medal winners and guests towards the ceremony area. Starting with the women's 400 meter run T11 and T12 category, the winner of the bronze medal at Khelo India Para Games representing Karnataka, please. I would now request our ushers to guide the medal winners and guests towards the ceremony area. Starting with the women's 400 meter run T11 and T12 category, the winner of the bronze medal at Khelo India Para Games representing Karnataka, please put your hands together for Jyoti Hausara.
I would request Nitin sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Now, the winner of the silver medal at Khelo India Para Games representing Andhra Pradesh, please put your hands together for K. Lalitha. I would again request Nitin sir to kindly present the medal to the winner. खेलो इंडिया साथ में हैं हम। Thank you so much, sir. Now, finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games 2023 representing Gujarat. Please put your hands together for Tejal Damor. I would again request Nitin sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for official photograph. Many congratulations, achievers. We thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you so much.